हेलो हेलो गाइस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रैम। गाइस आज फिर थोड़ा लेट हो गए हैं हम। समझा करो यार, थोड़ा लेट हो जाते हैं, समझा करो यार, थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं, समझा करो। तो ओ ओ ओ ओ ओ ओके। मैं आवाज सुन लूँ यार, जाएगा अपनी तरह। ओके गाइस, वॉइस क्लियर, साउंड इज क्लियर आई थिंक। तो वॉइस का मैंने गेन भी किया हुआ है यार। अब थोड़ा सा माइक्रोफोन इस तरह का मैनेज कर लो, इंशाल्लाह हम भी ले लेंगे हाइपर एक्स। हमारी भी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी गाइस, टेंशन नहीं लेनी। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी व्लॉग, कल का हम थोड़ा सा दिन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो बेसिकली हुआ ये है कि कल का दिन मैं शाम को तीसरे मैच के दौरान मेरी जो है ना लाइट चली गई। तीसरे मैच से मुराद अ, 2 मिरामार के हुए थे, एक रोंडो को हुआ था, उसके बाद एरेंगल का, सॉरी चौथा मैच। चौथा मैच एरेंगल के बीच में मेरी लाइट चली गई, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रीम बंद हो गई, जो कि सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे की स्ट्रीम हुई है अफसोस के साथ। बट उसका मसला कोई नहीं। मेन चीज़ ये है कि हमारी टीम 7th स्पॉट पे है। अनफॉर्चुनेटली 8 मैचेस में हमारी टीम ने आई थिंक अराउंड 50 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि विच इज नॉट अ बैड इटसेल्फ पॉइंट्स, बट अकॉर्डिंग टू द लॉबी, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग हम नहीं कर पाए बेसिकली। अब मेन कंसर्न हमारा ये है कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स हम देख लेते हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग्स आई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, लेट मी चेक। पी एम पबजी मोबाइल को इन्होंने पोस्ट की होगी मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, होपफुली की हो। ओवरऑल रैंकिंग, ओके गाइस, ये आ गई हमारे पास ओवरऑल रैंकिंग। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारी टीम 7th स्पॉट पे है। जो नंबर 1 वाली टीम है ई एरिना, उसके उसके पास है 112 पॉइंट। ओके। अब 112 पॉइंट्स हमारी ई एरिना के पास हैं। उससे ऊपर आज आखिरी दिन है, तो आज स्मैश पॉइंट का उन्होंने बता दिया। 122 पॉइंट पे स्मैश लग गया, ठीक है, स्मैश पॉइंट 122 का है। अब बेसिकली होता स्मैश पॉइंट का ये है कि आपने जो है ना 122 पॉइंट्स पहले आपने अचीव करने होते हैं। आपने जिस मैच में अचीव कर लिए 122 पॉइंट, उसके बाद आपका मेन गोल होता है कि अगले मैच में, अगले जितने भी मैचेस रहेंगे उसमें आपने डिनर निकाल बेसिकली करना है ये आपने। जिस टीम ने भी डिनर निकाल दिया, नो मैटर ये रीना ऊपर है, एनएस ऊपर है, अरोरा ऊपर है, कोई नीचे वाली टीम भी आके ऊपर से स्मैश पॉइंट्स क्रॉस करके डिनर ले गई। स्मैश पॉइंट वाला स्मैश पॉइंट जिस मैच में क्रॉस किए उस मैच में डिनर नहीं चाहिए, अगले मैच में। ओके, बेसिकली यही करना है, अगले मैच में डिनर चाहिए आपको। तो वो टीम जीतेगी। अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ फोर्थ थ्रेड्स की। तो फोर्थ थ्रेड्स हमारी है 7th पोजीशन पे। उनको अगर टॉप 1 पे आना है तो उनको चाहिए है 35 पॉइंट। यस, उनको चाहिए 35 पॉइंट्स टू रीच टॉप नंबर 1। ओके। और 45 पॉइंट चाहिए उनको स्मैश रूल हिट करने के लिए। एंड 45 पॉइंट्स के बाद उनको डिनर लेना है ट्रॉफी के लिए। बट इट इज नॉट दैट इजी, 35 पॉइंट आप लोग कह रहे होंगे इजी तो है, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी। बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। करना बेसिकली ये फोर्थ है के, अगर 40 ने इस इवेंट को जीतना है, ईडब्ल्यूसी को जीतना है, तो उनका मेन गोल जो होगा, मेन चीज जो उन्होंने टारगेट करनी होगी, वो करनी होगी अपना रोंडो के मैच को, जो कि है पहला मैच। रोंडो मैप में मैक्सिमम किल्स निकाल के डिनर निकालेंगे। लेट्स से रोंडो में आपके 15 अबव किल्स निकल ही आते हैं, और अगर आपकी टीम 4 थ्राइव जैसी है तो आपके 20 किल्स या 20 अबव किल्स भी निकल आते हैं। अब करना ये है कि लेट्स से
हमारी उम्मीदें यही हैं कि अगर 40 फर्स्ट मैच रोनाल्डो के मैच में डिनर निकालती है ना, तो डिनर कम से कम 15 से 20 किल्स का निकलेगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब 15 से 20 किल्स का डिनर निकलता है 40, मोस्ट प्रोबेबली नंबर 2 पे या नंबर 3 पे आ जाएगी। अब दो चीजें, एक और चीज भी है कि जो है ना, हमारी जो टीम ई एरिना है और टीम एनएस है, उन पे टारगेट भी हो सकता है। अ, वो टीम कौन सी टारगेट कर सकती है? वो टीम अरोरा कर सकती है, टीम एस2जी कर सकती है, टीम एनएस, इवन टीम ई एरिना पे कर सकती है टारगेट। बिकॉज यू हैव टू डू इट। अगर आपने टीम को बाहर करना है, लेट्स अगर स्मैश पॉइंट से पहले पहले तो टीम को टारगेट नहीं करेगी, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता स्मैश पॉइंट से पहले पहले करेगी। अगर स्मैश पॉइंट बाद की बात है, स्मैश पॉइंट क्रॉस कर लिए टीम ई एरिना ने, उसके बाद मुश्किल हो जाना सबके लिए, सीधी बात है। और नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, ई एरिना को डिनर लेने नहीं देना किसी ने, अकॉर्डिंग टू मेरी सोच ऐसी है। तो वो चीजें बात की हैं, ठीक है ना? मुझे लगता है ई एरिना और टीम एनएस दो टीम्स हैं जो कि एनएस के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टीम ई एरिना के लिए बहुत आसान है 10 पॉइंट्स निकालना और जो है स्मैश पॉइंट हिट कर लेना पहले मैच में। इट्स इट्स सो इजी टास्क। अनलेस अनलेस टीम ई एरिना को ई एरिना अनफॉर्चुनेट हो जाए या उन पर टारगेट कर लिया जाए किसी का। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह ई एरिना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है गाइस, मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह होने वाला है। तो मुझे लगता है पहले पहले मैच में ही स्मैश पॉइंट हिट हो जाएगा। लेकिन स्मैश पॉइंट के अलावा हमें 40 की परफॉर्मेंस चाहिए गाइस। 40 की परफॉर्मेंस हमें, 40 के डिनर मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम भी आज 2 डिनर हमें 40 की चाहिए मिनिमम। एक डिनर जो हमारे हमें टॉप पोजीशन तक लेके आएगा और दूसरा डिनर जो हमारे स्मैश पॉइंट के बाद डिनर निकाला जाएगा। आई एम टेलिंग अबाउट यू मिनिमम। हम 3 भी निकाल सकते हैं, हमारी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है। हमारी टीम ने वीकली परफॉर्म किया, बट हमारी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जो है ना डिनर निकाल सकती है। सो what I'm saying, what I'm trying to explain, that Rondo is an important match. Team forces have to perform it, have to win dinner, have to take chicken dinner, have to make kills 15 or 20 in order to be in top position, top three. But let's see what happens, what goes. जो भी होगा, even if they don't win, we will always support our champs. They are our champions. They changed the future of Pakistan. They changed the future of Pakistan in PUBG Mobile. They changed the future of our youngsters. They motivate ourselves. They motivate our youth to go for the, you know, इस तरह की गेम प्ले खेलने के लिए बेसिकली। तो गाइस समझो, जो नो मैटर व्हाट, बहुत लोग हैं, मैंने कल हेट कमेंट्स देखे हैं, 40 ने ये किया, आईक्यू वो नहीं कर रहा, आईक्यू ने इस तरह की है, आईक्यू आईक्यू पोजीशन नहीं। भाई शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। किसी के डाउनफॉल, तुम लोग किस तरह की कौम हो भाई? किसी के डाउनफॉल पे सपोर्ट नहीं करते यार, तुम लोग किस तरह की लानती कौम हो यार। भाई सपोर्ट करना सीखो, शुक्र अदा करना सीखो। तुम लोग की एक वाहिद टीम पूरे पाकिस्तान में कितनी वाम है, इतनी वाम है, इतनी वाम पबजी खेलती है पाकिस्तान में। किधर है भाई टीम है आप लोग की? ये सारे जो अपने आप को प्रोफेशनल समझ रहे होते हैं, रिवेंज किंग, ये किंग, वो किंग, किधर हो भाई आप लोग? नजर नहीं आते। आप लोग अपने लोकल्स में क्वालिफाई कर नहीं पा रहे। हमारे पाकिस्तान में जो इवेंट हुआ है, टॉप फाइव में आपकी टीम्स नहीं आ पाई। बातें आप लोग सोचते हो। टॉप 3 टीम्स में भी हम, हमारे पाकिस्तान में जो टीमें आ रही हैं, नेपाल में याद है वो जो नेपाली टीम जो हमारी क्वालिफाई की है, T2K और हो रहा, उसमें भी आप लोग नहीं आ सके भाई। थोड़ी शर्म कर लो भाई। और तुम लोग बातें करते हो 40 को। थोड़ी शर्म कर लो गाइस, थोड़ी शर्म कर लो थोड़ी। मैं क्या ही कहूँ और भाई, और कहने का फायदा नहीं है। हमारी पाकिस्तानी आवाम ही ऐसी है भाई। डूबते हुए को ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो उरूज है, जिस बंदे का उरूज आ रहा है, जिस टीम का उरूज आ रहा है, उसके साथ साथ वाह वाह करने लग जाते हैं भाई। शर्म आनी चाहिए। खैर, बहुत जल्द हमारी जो है ना मैचेस भी स्टार्ट होने लगे हैं, 3-4 तो हो गए हैं। तो हमारे मैचेस स्टार्ट होने लगे होंगे। लेट मी चेक। लाइव स्टार्ट हुआ ही नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ गाइस, तो अभी है टाइम। 3:10 पे होगा, अभी 3-4 हुए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम एनोनिमस भाई की स्ट्रीम देखते हैं। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो।
सब दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात कुछ भी कर सकती है। अल्लाह का साथ है, इंशाल्लाह हमारी टीम कर लेगी। इंशाल्लाह हमारी टीम कर लेगी गाइस। टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हमारी टीम करेगी। हमारी टीम वो करेगी जो किसी ने नहीं देखा। नो मैटर व्हाट हम जीते ना, लेकिन एक इम्पैक्ट देके जाना ज़रूरी है, जो कि हमारी टीम ज़रूर देगी। मुझे बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह का साथ भी है, हमारी दुआएं भी अपनी टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी सो गुड। इंशाल्लाह। मुझे हॉटस्पॉट देख के आता है, एंड्रॉइड जो मेरा फ़ोन था ना मेरे पास भी हुआ था। मैच कब स्टार्ट होगा? बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है चैट, मैच स्टार्ट होने वाला है यार। 10K लाइक्स करने हम लोगों ने मैच से पहले पहले। चैट प्लीज़ एवरीवन लाइक बटन दबा दो यार, सारे लाइक बटन दबा दो। किधर है फाइट ये? सारे लाइक बटन दबा दो यार। गाइस इवन आज स्ट्रीम बंद भी होगी तो जैसे लाइट आएगी मैं वापस स्टार्ट कर लूंगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? रुको एक मिनट। नौकी का व्लॉग ही देखना तब तक। नौकी का व्लॉग था, किधर गया? नौकी का व्लॉग। हाँ। ओके, ये देखते हैं यहाँ से। से बोला ओके। नई मूवी आई है यार। अबे हट गई। म्यूटनी। यार इसका चार्ज नहीं हो रहा जेसन ट्राइपॉड, स्टेथम का। थोड़ा काम खराब हो गया है। जेसन स्टेथम। रात से चार्ज रखा है, बिल्कुल रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मतलब रात से चार्ज नहीं रखा आपने? रखा है, रात में भी यही ब्लिंक हो रखा है। तो मसला कहाँ पे आया फिर? पता नहीं रखा है, स्विम भी करनी है अभी, थोड़ा चार्ज हो जाए बस। ये अपने पावर बैंक लगाया हुआ है। चार्ज भरोसा रखो चार्ज हो। चलो गाइस वेन्यू चलते हैं, वेन्यू में थोड़ी सी बकचोदी करते हैं, उसके बाद फिर से लाते हैं, खाना खाते हैं और बंदे शंदे पहनते हैं। क्या सीन है गाइस, कैसे हो? यार भाई क्या सीन है? बीप वेरी बैड ब्रो। गाली नहीं देनी चाहिए। गाली दे ये क्या पी रहे हो आप? ओह माय गॉड। स्पेशल ड्रिंक है डब्ल्यूसी का। अच्छा क्या बात है। गाइस पिज्जा लाया जा चुका है, पेमेंट कर दिया मैंने। भाई कितना खाना है इनसे? वेन्यू खाना खाते हैं, फिर इनसे कितना खाना है लोगों ने? मैचेस में बंदे शंदे खाएंगे। गाइस खाना पीना जा चुका है, रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं असल में। आई एम रियली सॉरी, ब्लॉगिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है, ठीक है? ब्लेड की स्ट्रीम भी लोगों ने बंद करा दी। अब जो है ना स्ट्रिक्टनेस हो गया यार जरा। वक्त भी हमारी जगह चोरी हो गई है। हाँ ले तो सकते हैं लेकिन नहीं ये प्लेट ले चले जाएंगे। हाँ जब भी चले जाए तब पकड़ लेंगे। अभी भी वो लोग लंबा कर लो, अभी भी लंबा कर। चलिए दुआ करते हैं, दुआ के बाद ज़रा कुछ करते हैं। चलिए दुआ करना है। इज्तिमाई दुआ होती है आओ, फाइनल से पहले, इज्तिमाई दुआ किधर? वो बाहर लड़कों के साथ। आजा ब्लेक इज्तिमाई दुआ। गाइस सारे प्लेयर बैक स्टेज बैठे हुए हैं, सारे के सारे प्लेयर बैक स्टेज बैठे हुए हैं, हमारे लड़के बैठे हुए हैं। मैच स्कोर के बाद पता नहीं आज क्या क्या मसला था यार आज जो प्लेयर्स ने इधर का खाना खाया है की तरफ से था सब यहाँ बैठ के जो हम बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे ना, बच्चे थे ये मान खाने में कुछ था, पेट में सब तो फूड पॉइजनिंग हो रहा है। ऑल थैंक्स टू यार थैंक्स तुम्हें यार, मैं बाग के लिए पिज़्ज़ा लेके आया था यार। मैं किसी ने किसी तरह हेल्प तो कर रहा हूँ 100% यार। नौकी तो जान है। यार सीरियस नोट, खाने में पता नहीं क्या था, किसी ने कहा नोफियर भी बीमार हो गया, हॉस्पिटल चला गया। नोफियर ने कहा था, स्काई ने थोड़ा बहुत कहा था, लेकिन वो ठीक है। बाकी होरा वालों ने हमारे साथ पिज़्ज़ा शेयर किया था। बाकी सुनने में आ रहा है, नॉट कंफर्म अभी तक, कि 20 प्लेयर्स जो है ना, 20 प्लेयर्स अभी तक हॉस्पिटल। तो देखो वो सेंसिस करे, सेंसिस होता है क्या होता है, सेंसिस करे कि कितने प्लेयर अवेलेबल है। काफ़ी नाजुक सूरत वाले गाइस, काफ़ी नाजुक सूरत वाले। मैनेजमेंट की क्या होगी है जो फलक बोलते हैं, मैनेजमेंट की ढुई होगी। वकास भाई गुस्से में क्यों? मैं बताऊं
पानी पिला रहे हो काश भाई को। मैं एक बात बताऊं, बताए। ये चीज़ सोशल मीडिया पे गई ना, ये चीज़ सोशल मीडिया पे गई तो इनके बहुत बुरा इनके वो है। टाइम पे सोशल मीडिया पे गई क्या, अभी सारे न्यूज़ चैनल वाले डाल दो। अरे वो लोग गुत्ती हो रही है, इनकी 3x गिरती है 3x गुत्ती होगी। मैंने अगर ब्लॉग में डाल दिया ना और भी गुत्ती हो जाए। उधर बड़ा लोग मसला करते हैं, उधर केलू लोग ड्रामा हिट हो जाता है। हाँ शोर बड़ा आ रहा है। कटे आमिर भाई को बाहर वेट कर रहे हैं। गाइस ये तुझे इसको ब्लैकमेल करूंगा। यार हो रहा ना, बड़ी पैड़ी की है हमारे साथ यार, जो हमें मारा ना इन्होंने बड़ा पैड़ा किया है। उसका कंफर्म नहीं है लेकिन नेपाल मोस्ट प्रोबेबली तो ही है, लेकिन काफी नाजुक सूरत हाल है। बैठे बैठे बोर हो गए, जाने भी नहीं दे रहे। इधर शाइन भी अकेले अकेला आइसक्रीम पील रहे हैं। आए हाय केड़ा वो जो हुज़ैफा ने भेजी थी। मैं देख रहा हूँ वो रिफिल करे, आप ले लाऊंगा आखिरी चीज़ मैंने खाई। नहीं शाइन पे बस छोड़ दे, होगी। क्या सीन ब्लेड भाई, क्या सीन है? पता नहीं यार कब से बैठाया हुआ है, कुछ फर्दर नोटिस कब तक आएगा अपडेट कुछ नहीं पता। आप भी जा सकते हो, वकाश से भी जा सकते हैं, बिठाया तो हमने तो यार ये बड़ा मुश्किल सीन हो गया यार, बड़ा मुश्किल सीन हो गया गाइस। क्या करेंगे शाइन भाई बताएंगे यार, लेट तुम बोलो वही ना शाइन भाई, हम आपको हम सपोर्ट देने आए हैं, सहारा दे रहे हैं। अब मैं इसको अकेला छोड़ूंगा ये बढ़ जाएगा। या तीन मैंने बताया मैं रह ही नहीं सकता ये लोग की। गो वेंट कौन? आपको पता है बड़ा मुश्किल सीन है गाइस। इजाजत होती है, हम तो गए होते हैं। हम दोनों को कहीं इजाजत होती है, हम तो गए लौट हम भाई सफर करेंगे तो साथ में करेंगे। इसमें क्या है, नहीं शेख भाई आज बैठे रहेंगे कोई मसला नहीं। हो जाएगा ना। इंडियन मूवी क्या प्यार है टी4 के बाद लोग आएगा। क्या बोल रहा है भाई, ब्लॉग एक है बड़ा खतरनाक नाजुक से होता है। कास्टिंग टेबल भी सामने ही है, क्या बात है। गेम कौन सा ये मुझे नहीं पता। भाई बोलना। खाना खा चुके, बाहर से ऑर्डर किया था। बाकी प्लेयर्स जो बीमार हुए थे, हॉस्पिटल गए थे, एक दो वापस आए थे। उनकी हालत देख जो है ना, मैं शुक्र मनाया कि भाई हमने सुबह जो है ना बाहर से खाया। वो भाई गिर रहे थे, एक दो बंदे तो गिर रहे थे आने के बाद भी, हॉस्पिटल से आने के बाद भी। बड़े खतरनाक सूरत हाल थे, लेकिन शुक्र है हमने नहीं खाया। और अभी भी हमने बाहर से ऑर्डर किया था। अभी ज़रा होटल आया था मैं थोड़ा सा फ्रेश होने, मैसेज के बाद। टाइम हो रहा है 9 बजे। फलक लोग अपने होटल निकल चुके हैं, नहीं बल्कि फलक और टी4 है यहीं पे। बाकी वकास भाई, हुज़ैफा और आईक्यू जो है ना निकल चुके हैं। हम भी जो है ना थोड़ा सा चलते हैं प्लेयर लाउंज में, थोड़ी सी गेम शेम खेलते हैं। उसके बाद रात को देखते अगर कोई प्लान बना तो मैं और ब्लेड जो है ना बाहर वॉक पे निकलेंगे, तब आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल जो है ना मैं प्लेयर लाउंज जा रहा हूँ। ये फ़ोन जो है ना नहीं ले जा रहा। करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो जल्दी जल्दी। खत्म हो गया। ये नहीं है, कल वाले व्लॉग आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे हो? इंट्रो कर रहा और आउटरो भाई इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज कर रहा है। बस कर लिया यार, बस कर लिया, तुम लोग हंसा ही जा रहे हो ब्रश करते हुए भाई। Guys, this was tutorial on how to brush your teeth. You're welcome.
गो टू द लड़को यार, जा रहे हैं, सबर करो, निकलते हैं अभी। यार ये ट्रांसलेशन मोड लगा हुआ है कसम से, रुको एक सेकंड में बंद करवाता हूँ। गाइस लाइक कर दो स्ट्रीम को। क्या कर रहा है बर्थडे? यार मैं जो लगा रहा हूँ ना, मैं लगा रहा हूँ सन क्रीम लगा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो तो अबे अबे हाय ब्रो, भाई मैं इनको ट्रेडिंग दे रहा वेट था, करना गाइस सूट थोड़ा वूट सा, पे। मैं डिस्कॉर्ड की सेटिंग कर रहा हूँ guys। थोड़ा सा इंतजार फरमाइएगा। किसी से अब थोड़ा सा इंतजार क्या फरमाइएगा। कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे हर खुशी दे दी, ओह ये नौकी है। आवाज तो नौकी की लग रही है। लबों की हंसी दे दी। भाई कॉपीराइट लगवा दिया तूने इस गाने से तो। बस एक मिनट प्रोफेशनल आवाज। गाइस, एक मिनट गाइस। मैं हूँ जान वाला गाना गाया, तेरे पे ज्यादा सूट करेगा। हेलो हेलो। जुल्फों की घटा लहराई, पैगाम वफा ले आई। एक मिनट गाइस। हेलो 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 हेलो। भाई आवाज आ रही है भाई? गाइस एक मिनट, वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। हेलो भाई आवाज आ रही है? हाँ, तेरी आवाज कितनी सही आ रही है। ओए होए होए। सही है सही है। हेडफोन ला रहा है ना तू? हाँ अच्छा, बस सही है। मैं ऑन कर लूँ स्क्रीन पे तेरा माइक? सही है, कर रहा हूँ ऑन। ओके, एक मिनट आवाज थोड़ी कम कर लूँ, ज्यादा आ रही है। चलो चलो जी, स्क्रीन देखिए। ब्लेड भाई दी। की घटा, क्या लर्निंग? या तो लर्निंग होगी या तो विनिंग होगी। स्क्रीन पे चेक करनी, आवाज आ रही है तेरी या नहीं सही गाइस ये से, गे मुझे भी बता कुछ दे। टाइम हो रहा है, मुझे पता है नोकी गे है, बट इट्स ओके। उसको थोड़ा सपोर्ट दे के, लाइक थोड़ा सा ना वो ये नहीं कह, तुझे कह रहे सॉफ्ट। हैं, मुझे क्यों कहेंगे? वो तू वो कर रहा था ना, तो बस सन क्रीम लगाई मैंने। सनस्क्रीन सन, लगाई ना, बस वही। एक मैंने सिर्फ सन क्रीम लगाई है ब्रो। बस ऐसे भी नहीं कि मैं क्या बस वही गे बना दिया तुझे। इससे मैं गे बन गया हूँ गाइस, व्हाट द हेल यार, वाइब्रेट। ये कोई नई बात तो नहीं थी। हाउ डेयर यू यूज, क्या कहते हैं उसको, फेस केयर को क्या कहते हैं, क्या? स्किन केयर। हाउ स्किन केयर डेयर तो यू भाई यूज ये तो स्किन ये केयर। कॉमन चीज है, बाहर धूप में जाओगे लगाना तो है लगे। ये लबों की हंसी दे दी। गाइस तो निकलने ये के लिए आयरल हम कर रहा है, ये लोग निकले, अच्छा वो लोग निकल गए हैं। ये निकला नहीं अभी तक। लड़के क्या फील कर रहे हैं नोकी, लड़के क्या फील कर रहे हैं, कब से चल रहा है? हाँ लड़के, हाँ ओए शर्म कर नौकी। चलो गाइस निकलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही आजा है? भाई, हाँ आजा हाँ, आ रही अभी से आजा, परफ्यूम ही नहीं लगाया रुक। क्या जी? किसी ने पूछा है कमेंट में, लड़के क्या फील कर रहे हैं, कहता हॉर्न नहीं फील कर रहे बस ए, वाह। हेलो। भाई मैं हाँ हाँ आ मैं रही है मैं आवाज। पता है मैं स्ट्रीम अपने स्ट्रीम पे शायद नहीं आ रही। अंडरवेयर के अंदर बैठ के नहीं आ परफ्यूम रही। नहीं लगाता, बस जहाँ जरूरत एक है वहाँ मिनट। लगाता एक हूँ। यार एक परफ्यूम मिनट गाइस में। लोगों का पता है ये नोकी कैसे लीगो वाला, लगाता है?
यहाँ से स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर शर्ट को उल्टी करके, फिर अंडरवेयर ऐसा नहीं में। लग रहा है मैं कोई बैठा हूँ अंडरवेयर कब देखिए तेरे में? इन्नट लेक आ में रही हूँ है, आवाज आ रही है। इन्नट अंडरवेयर लेक के में अंदर हूँ में परफ्यूम मारता है। हैं? अब पता नहीं और क्या क्या इन्नट होता है, लेक जो क्यों है मुझे नजर आया वो उसको बताता कह हूँ रहे तुम लोगों को। 0.2x पे कर, मैं शायद बताऊँ तेरी मैं पीछे बताऊँ। चल रही है उसकी। आओ गाइस ये देखो ये क्या कर दिखा नहीं ना बिल्कुल कर रहे है हो नहीं ऑप्शन होगा डिले, में चेक नहीं है डिले कितना डाला है मैंने। चेक करना मुझे लगता है 15 सेकंड का डिले है इसके अंदर नहीं 15 का नहीं है भाई। तुम। ये देखो गाइस यहाँ 15 से का लग स्टार्ट रहा हुआ है है। कहाँ से चेक होता है? शुरू किधर से? उन्हें ऑन किए तू चेक कर ये देखो गाइस चेक करो जरा इसको। ये तक हम माउदी बचो। ये देख अब तूने 2.2x बस बात की थी अब भाई ये आवाज देखो ये शुरुआत है गाइस, मैं आती होगी अब देखिए अब। 15 भाई सेकंड समा और की सकते हैं स्ट्रीम है तो तू नीचे नहीं वो जाएगा। तेरी पीछे चल रही होगी ना। आज नीचे नहीं जा रहा गाइस, ओ बल्कि चेंज करके हाँ जा रहा तूने है। की रखी है तो आ रही है चेंज पीछे करके। इसलिए परफ्यूम की मार ले। वो खैर। अच्छा चल अभी चल। अब यार नीचे वो जाएगा। एफएस लॉर्ड भाई कहाँ पे गए हैं यार ऑल द वे फ्रॉम अरे पारी। यार ऐसा सॉर्ट होएगी जाने दो यार। यार ये देख, ये इधर परफ्यूम लगा रहा है, उधर वो बैठे हैं मैचेस खेलने के लिए, ये निकल नहीं रही। चेक कर जरा इसको। चल ना नीचे भी तो जा, जो तू है काम शर्मा रहा है। खराब कुछ लग रहा है मन्नू आज समझ लो बाहर हो या पे थोड़ा कुछ यार परफॉर्म। मामला नाजुक है, सच कहूँ ना मैं। यार एक बहन काम की बड़े कर मुझे नाजुक। ना अपने डिस्कॉर्ड की अपनी ये स्क्रीन देखो शेयर कर डिस्कॉर्ड की मुझे स्ट्रीम पे डिले आ रहा है मेरे तो ऐसे फिर आवाज ही आ रही है यहाँ पे वो रुक जा। अबे यार हाँ। ये देखा एफएस लॉर्ड वाली बात अब आई है बस इतना ही। अरे यू हैव बीन वही है डिस्कनेक्टेड शो। बाकी चल स्लो एक से कर मिनट हाँ दिया। हो रही है हो रही है हो रही है पता ही होगा हाँ सबको। तो सब सही है। स्ट्रीम हाँ अब सही है। स्ट्रीम बंद करूँगा मैं हाँ स्ट्रीम बंद कर दी ना मैंने वो तेरा देखा बस सही है, बस सही है, सही है, सही। चलें गुड है, गुड है। निकलें। आवाज ब्लैक फॉर हिम। आर यू हवासी? यार बात परफ्यूम लगाई जा रहा है भाई। मुंह पे भी तेरा यार ये हो गया पागल हो गया जा अभी असल में शर्मा रहा है वरना यार अच्छा वो उधर प्लेयर के मुंह मतलब नर्वस हुए पड़े हैं, नर्वस तो नहीं हुए पड़े, टेंशन है, ये तो परफ्यूम लगाई जा लुई रहा विटॉन, लुई विटॉन। पता कैसे लगा पाकिस्तान में चला निकले। है यार। के साथ आ गया वो। यार आज यार Get ब्रो out. वो नाश्ता करोगे नाश्ता नहीं नहीं ब्रो, आप करो, आप करो। कार्ड उठा लिया। गाइस तुम लोग एक यार होटल चेक कर यार, कितने मजे के हैं यार। यार हमें भी कोई बुला ले ऐसे यार। नहीं कार्ड यार ये कार्ड क्यों चिकन निकालेगा? मिला है ना बहुत मजा कार्ड मिला रीडर लेके जाएंगे ना साथ में। ये देख कार्ड क्यों निकालना है? और चस्सा आ रही है अति खाते ही फिर ये मैगी खाता है? आजा। आहो वही जो तू खाता है मैं भी वही खा लिया। ये बहुत बर्गर वैक्यूम क्लीनर चल रहा है पे। इसको निकालना पड़ेगा अंदर से। तो मेरे हाथ पूरे बंधे में यार, फोन भी नहीं निकाल सकता। वह रूम नंबर लग गया पता, चलिए ना पेरिस। ब्रो कम फास्ट। ओके इट्स 12 कौन है कितने हैं देख भी नहीं सकता। मैं बैग पैक करना निकलते हैं। क्या टाइम हो रहा है? है कौन ही है ब्लेड है जेड़ा व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग कह रहे हैं स्ट्रीम कर रहे हैं, नौकी उठ के बैठा है। ये ये नहीं देखो आ रहा था गाइस ना उसका ये सेट ओला लगा हुआ है। गिम्बल Oh my ब्रो God. वाओ सर मजाक नहीं है, प्रोफेशनल व्लॉगिंग कर रहे हैं। माइक आईफोन माइक चल जाता गुड है। वन बाहर जाएंगे कहीं तो हम यूज करेंगे। भाई आप बाहर आओगे ना? बाहर आएंगे ना? तेरी साउंड क्वालिटी में जरा आवाज थोड़ी बढ़ा दो तेरी, बस सही है। दिखा दो चार सारी ने सब सालन दी किधर? केड़ा चिकन करके सालन? हो ज्यादा है कोई तीन। कौन सा सालन है? या चिकन और चने की दाल ओए होए होए लेवल नहीं हो गया लेवल नहीं हो गया लेवल लेवल हो गया, मैं कहता हूँ लेवल। लेवल लेवल बस चल। लेवल चल हो गया छोड़। लेवल क्या चाह रहा है? स्ट्रीम शुरू होगी है, 5 मिनट है अभी। 5 मिनट है अभी, तब 5 मिनट तक लगे क्या करें? इसके बाद फिर मैं ना घंटे बाद जाकर बनाऊंगा मैंगो शेक ओए वो होए फलक भी स्ट्रीम कर रहा है, हाँ लेकिन वो फलक वही कर रहा है जो पबजी मोबाइल पाकिस्तान की ना, वही वही स्ट्रीम मतलब बेसिकली उसकी। यार वैसे हालात थोड़े से नाजुक हुए पड़े हैं यार। तूने देखी है स्टैंडिंग, देखी स्टैंडिंग टेबल देखा तूने? हम्म, नाजुक हुए हैं हालात यार। मेन मनी मैच वाले भी हमारा मेन मैच मैच है कर लेगा हमारा रोंडो वाला।
ये देखना, आज ओवरऑल रैंकिंग आज देख। आज फलक कर लेगा। मेन मैच हमारा राउंड हुआ है, उसमें हमने अगर निकाल लिया ना 15 से 20 किल वाला डिनर, तो हमारा काम सेट हो जाएगा। तो आज फुल रेडी है, आज निज़ाम चलेगा। वैसे भी आज मैं स्ट्रीम पे आ गया हूँ, चेक कर यार बेटा, सब जीतेंगे, टेंशन ना ले तू आज। मेरी पनौती ना लग। और चल, एफएस लॉर्ड को बुला लो फिर शायद लग जाए। मैं तो थोड़ा स्ट्रीम पे कहना नहीं फायदा नहीं। यार मेरे को डर लग रहा है लाइट भी टूट जानी है, लेकिन लाइट गई भी ना स्ट्रीम बंद भी होगी, मैं नई स्ट्रीम चला लूंगी जैसी लाइट आई। लेकिन आज एंड तक स्ट्रीम करनी है। भाई वो आपने अपने हम्म। गेमिंग पीसी के साथ यार वो लगाया नहीं आपने, वो इन्वर्टर ब्रो? ब्रो यार ब्रो मैं सोच रहा हूँ लगवा लूँ यार। कितने का कोई सोचो आएगा, फिर। यानी बैकअप बैकअप कितने का, 5-6 घंटे का बैकअप हो जाए ना एक साथ वाला, कितने का कोई हाँ आएगा? ओके ओके ओके, हाँ फिर ओके, हाँ जितने का आपने सेटअप रखा हुआ है ना उतने का आ जाएगा। नहीं नहीं, पागल हो आप। हम्म एक बंदा बड़ी बैटरी ले ले ना, बड़ी बैटरी बंदा ले हम्म ले, हम्म। उसके साथ वो एक्सटेंशन लीड कनेक्ट कर ले, कैसा? लेकिन बैटरी भी तो डिस्चार्ज होनी है ना। नहीं व्हाट नहीं द यार, हेक गल ब्रो, नहीं रही, गल व्हाट नहीं द रही। हेक ब्रो। यार करना पैना कुछ यार, बैकअप होना चाहिए। अच्छा, 122 पे स्मैश पॉइंट लग रहा है, ई एरीना 112 पे। ई एरीना को, टीम एनएस को, टीम अरोरा को, टीम एस टू जी को, ये 4 टीमें, इनको रोकना पड़ना है। फिर जाके बचत होनी है यार। हाय। यार वो एफएस लॉर्ड को भी बुला लो यार स्ट्रीम पे यार कुछ। अच्छा यार भाई वो हो वो जाएगा कहीं हमारा। और बिजी होगा, कहीं और ओ बिजी होगा। ओके ओके, अंडर कवर प्लीज ब्रो, अंडर कवर। हाँ हाँ, समझ रहा ना। ओके ओके। आज लाइक कर दो यार, तो देख रहे भाई, लाइक कर दो यार। भीख मंगिया, ओके भाई का, लाइक कर। ये लो भाई कर दिया, पुराना पाऊँ। तो मेन चीज ये है कि जैन भाई, रोंडो इम्पोर्टेंट है। यार मुझे तो रोंडो का इंट्रोड्यूस नहीं मैच। कराया आपने यार, स्ट्रीम पे ओ बुला इंट्रोड्यूस नहीं कराया यार। गाइस, ये है एक मेरा खास दोस्त, जैनुल जैन बट। ओके ओके यार, ओके यार। ये आए हैं आज हमारे साथ स्ट्रीम में हम्म पनौती डालने दूसरी टीमों पे। आज आपने सपोर्ट, पता है इसको करना है, आज आपने सपोर्ट करना है ओजी को, इंडिया की जो टीम है ना ओजी और गॉडल, इन दो टीम को आपने सपोर्ट करना है, ताकि इन पे पनौती लगे, सही है ना? हम्म। हाँ, तो इन पे जब पनौती लगेगी, या इनको पे या ई एरीना या एनएस पे पनौती लगाओ, ताकि जो है ना हमारी देखो टीम आगे जा देखो, सके। नौती फिलहाल ना अपनी टीम पर लगी हुई है, उसकी वजह पता क्या है? हाँ, क्या है? गॉडल ने गॉडल ने भी चिकन कर दिया ब्रो। ब्रो गॉडल वॉडल का मैटर ही नहीं करता, चिकन वो वैसे ही आउट ऑफ लीग, उनका मैटर अच्छा नहीं करता। उनको छोड़ो, वो उनके ओके। पॉइंट टेबल देखो ना। ओजी 15वें नंबर पे 45 पॉइंट्स लेके, गॉडल किधर है, 57 है, पास ही है। तो वो मैटर ही मेन नहीं मेरे करता टाइम guys। पे ये अपने पास नहीं ये, आते, टेंशन ले। हाँ ये नहीं आने वाले पास, ही पास पास नहीं है, इन्होंने पास कहाँ से आना है, इनको छोड़ दे। मेन चीज जो हमारी ये मैटर करती है, हमने अपने से ऊपर वाली टीमों देखना, नीचे वालों को नहीं देख, क्योंकि हमारा गोल नंबर 1 पे आना है, समझ रहे हो ना? ये लेकिन स्मैश पॉइंट का एक और बेनिफिट भी है कि, यानी कि मैटर नहीं करती नंबर 1 टीम है, नंबर 2 टीम है, नंबर 3 टीम है, आपको बस स्मैश पॉइंट क्रॉस करके आपको डिनर निकालना है, समझ रहे हो ना? अगली टीम ई एरिना बेशक 200 पे चले जाए, अगर उन्होंने डिनर नहीं निकाला, हमारी टीम ने डिनर निकाल दिया, तो हम भाई जीत जाएंगे। यार मुझे समझ भेजो, मैं जो आ गया हूँ। समझ रहे हो ना? क्या? मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना? तूने फोन पे ऑन की है स्क्रीन अपने? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, ऑन की हुई है, म्यूट है वो चैट के लिए। कोई ना, तेरे पीछे से ठीक आवाज आ रही, तूने ऑन की हुई है, आवाज कम कर दे। कर दी है। अच्छा। अब तो नहीं आ रही? नहीं, अब नहीं आ रहा। यार वो लॉर्ड भाई को भी बुलाओ यार, शुगर लगाए थोड़ा सा यार, क्या कर रहे हो या यार? मैं तलहा भाई को मैंने कहा है शायद आज। तलहा को बुला यार, तलहा को बुला यार, उसको वो मैंने सही कहा है। असल मोती तो उसने डालनी है इंडिया की टीम पे। ओए, आवाज आ रही है पीछे से। अभी भी आ रही है? हाँ। रुक जा।
पहले अब तो नहीं आ रही, नहीं बोलेंगे तो आएगी ना। चल यार कोई दूसरी नहीं, को लगाते हैं, कोई वीडियो एनोनिमस की वगैरह लगा लगाते तो हैं। देखते हैं क्या करते हैं। ये तो नहीं मैं देख ली एनोनिमस ना, नौकी का व्लॉग। नौकी का व्लॉग तो मैं देख लिया। नहीं स्ट्रीम में लगाओ, कोई और वीडियो वगैरह लगा लो इनके। फलक का लगाओ, किसने वन लेट वन की है इसके साथ, फलक के साथ। मी चेक। फलक तक चल साथ मेरे। फलक भी लगा हुआ है इसके ऊपर। फलक ने, नहीं यार, फलक ने लास्ट टाइम अपलोड ही नहीं किया कोई। क्या वो बिजी है, वो ग्राइड ही लगे हुए थे कि उन्होंने क्या करना है। हम्म, उसका किसी के साथ 1v1 है तो वो लगाओ यहाँ पे। फलक 1v1 पीडीएम। पीडीएम ही देख लेते हैं। 9 महीने किसके साथ पुराना किया है ये तो फायदा है। क्रिप्टो के साथ 2 साल पुराना है। है? 3 वीक्स ये पहले देखते किसके हैं, साथ, जियोस रजा के साथ लगा रजा इसके। जीएस के साथ होता है ये वाला। अच्छा। अबे One more. No, no. You मीनू champion window. You champion जॉम्बियन global. You top franger. You top franger global. You champion global. One v बोलो one with बात। me. Chalo. ये रोस्ट कर रहा है यार, ये रोस्ट चलो One v रोस्ट one with me. चलो Chalo. Chalo, Palak. Okay, baby. ओए ओए, Okay, ये तो आपस baby. में। ओ, Yo, chalo. Binju, okay? Uh, 20. You want make? And for you make room, I think bing me is okay. Okay, भाई क्या बोल रहा है full भाई। map, full map. Yeah, play बड़ा full वंडा map. मांग रहा है। Yeah, yeah, okay. Chalo, chalo. ओ चलो चलो चलो। चलो। अच्छा, अब जीएस का पीओवी भी मिल रहा है, चलो देखते हैं। जी हर्ष लिखा हुआ है इसमें। ओए ओ, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। ओए 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 अभी उसने ये भी बोलना ओए है, ओए ओए मतलब ओए। अभी ये भी बोलेगा, रेफरी नॉट फेयर, रेफरी नॉट फेयर, नॉट फेयर, नो फेयर, नो फेयर, वल्ला वल्ला नो फेयर, अभी बोले। ये गया, अब गया, अब गया, अब गया, अब वो ऊपर गया। देख भाई, ऊपर देख येलो किल मैसेज। देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। 98 कलेक्शन लेवल भाई, देख लिया मैंने। इटोल ओए 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 ओए। फलक भी लो है, फलक भी लो है। बैटरी भी एंड हुई पड़ी है इसकी, मोबाइल की। नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, नाइस नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। अच्छा, इसकी सेटिंग चेक कर जरा। इसने फायर अपने थंब पे रखा हुआ है ऊपर भी सीरीज है, में। ऊपर भी है। ऊपर नहीं है, लेकिन नीचे वाला, मेरा नीचे वाला यूज कर रहा है। मुझे नहीं नहीं लग रहा नीचे वाला, ज्यादा। नीचे वाला जब वो देते हैं ना क्लोज फाइट, तब यूज करते हैं ये। नोटिस कर ली। तो ये पी के लिए फिर थंब यूज कर रहा है। हाँ उसकी पी की तरह, पी की तरह उसकी है। पी के एफपी के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल एफपी के एफी, ऊपर है, बिल्कुल साथ ही। एफपी का जिधर बटन नहीं है, उसके बिल्कुल ऊपर है। Crazy. हाँ नजर आ रही है। ओए ओए ओए, यार कैसे हेड कनेक्ट होते हैं। भाई ग्राइंड पे देखो ना कितना पुराना है। ओए 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 ओए। यार तलहा भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। आ जाओ डिस्कॉर्ड पे। तलहा भाई, वेलकम टू स्ट्रीम, डिस्कॉर्ड पे आओ। My God, you hacker! तलहा अंजुम आया। तलहा अमजद है अच्छा मैं कहा तलहा अंजुम आ गया स्ट्रीम पे। भाई। कराची चल, कराची चल। देख कर किसके नाम पे कराची पे, कराची चल। ओए ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल।
तलहा भाई आज हमें पेप्सी पिलाएंगे, ठंडी वाली पेप्सी। ओए होए, वो देखिए चढ़ा हुआ है। ओए 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 ओए। तलहा भाई डिस्कॉर्ड पे आ जाए प्लीज। लोग आपको पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं वी वांट तलहा, वी वांट तलहा। बीच में कुछ लोगों ने कौन तलहा बोला है, तो आप उसके जवाब भी दें आके। फड़ी एनु फड़ी फड़ी एनु फड़ी फड़ी एनु। ओए 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 यार, गंदा मार रहा है यार, गंदा मार, गंदा मार रहा है यार। Crazy. कर रही थी, गंदा मार रहा है। देख गंदी पीक करता है यार। तलहा ब्रो प्लीज आ जाओ स्ट्रीम पर। अब जब मैं से मैसेज करता हूँ। बैठा हुआ स्ट्रीम पे ही है। स्क्रीन पे सिर्फ मार है ना, समझा करो। अल्लाह नहीं यार, दोनों कनेक्ट हुई। ये पार्कोर सही जा रहा है, इधर डब्बों पे डब्बे चढ़ चढ़ के मार रहे हैं। उए, टिंग 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 टिंग। तलहा भाई प्लीज आ जाओ, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। What the hell? What the अंग्रेजी में hell? बात What the करता है। hell, baby? What the hell? एंड तक कहते हैकर हैकर, शायद मैं देखी है पहले। उए, गंदी मारी है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा अब। उए, पोल नाइस वन यार, बहुत अच्छा। पोल उए, कवर भूल पे गया लग कि गई, ये कवर भूल पे लग गई। ये भूल गया कि कौन है। ओए, ओए, ओए। यार ये हमारा 18+ शो नहीं हो रहा होता, ये जो स्कोर कार्ड के लेफ्ट साइड पे। तो ये पबजी वियतनाम है। सब्जी वियतनाम में डिफरेंट आईडीज होती हैं, सेम ही है। नहीं नहीं, आईडीज आईडीज का पता नहीं है, लेकिन वियतनाम में ये टीम प्लस आता है कुछ। ये एफएल इधर कौन से 18+ वाला का कौन सी टीम है यार? एफएल कौन सी टीम, कौन सी टीम उधर वाले फ्लैश हैं? है, टीम फ्लैश है। ओह फ्लैश कौन सी कंट्री की है? ये वियतनाम की है। Oh my डेढ़ god. फिर को पूछने दे हमें। नहीं, मैं ऐसे से पूछ रहे हैं क्योंकि इनके दूसरी अकाउंट्स आईडी वियतनाम के ग्लोबल होते हैं है। ना, ग्लोबल ना। दूसरी आईडी ग्लोबल है। और अकाउंट्स इनके ग्लोबल ही होते हैं, लेकिन जो इनकी गेम इंस्टॉल है ना वियतनाम वाली, पबजी वियतनाम सर्वर में जो इनके पड़ी है, उसके अंदर टीम प्लस आता है। अच्छा, सही है, सही है। लैंग्वेज डिफरेंट है ना इनकी गेम की, इसलिए। उए। क्या बात है, अरे निकाल यू रहा हैक, यू हैकर। उए। वो हैकर। मैं कहना भूल गया कि कौन है। नहीं यार, आज परफॉर्मेंस चाहिए फल को। ओ, ये अच्छा था यार, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। So funny. टीम फ्लैश वाले भी आज तक कोई खास नहीं खेल रहे, जल्दी मार रहे हैं। औरोरा ने खोल के रखी है भाई, औरोरा जिस तरह मार। Yeah. शुरू के टूर्नामेंट में चौक कर रहे थे, अब वो देख उठ रहे हैं नंबर 1 पे, नंबर 2, यार ये नंबर 3 पे, नंबर पे। डिस्कॉर्ड की क्वालिटी हाई कर यार, ये मेरे पास लो है। टीम की क्वालिटी लो है। फिर वो उसको देखो, लग गया होगा मैच, 5 मिनट का टाइमर था। Falak. मैं देखता हूँ।
if they don't win within the first 6 games via Smash चलो Roll, then after 6 games we देखते will हैं go इनको। to the team with the most points in the आज leaderboard. But let's चाबियां take a look at the टूटी हैं, order so आज we can 15 actually चाबियां get an टूटी idea हैं। of where the teams are at, because E-Arena finished off the day great yesterday and they're currently यार the कम team ऑन that's in the 40, smash zone. लेट्स They're at गो। 112 points. Arena. I think they could definitely do it in this first game, right? Because we have seen before हाँ प्लीज आ that जाओ some स्ट्रीम पे teams who यार। are right उसका there डिस्कॉर्ड डाउनलोड नहीं है। struggle really badly to actually make that threshold at all. That pressure just gets to them. But for me, E-Arena is definitely one of those teams that I don't think will have a problem with that. They just need to smash it out of the park in this next ओए game, in the next ओए 2 games, and I think we could definitely have a smash point or smash point, yeah, smash threshold by game 2 with them. Could be happening. Really could be happening, especially with that stadium. यार इमेजिन करो 3 मैचेस हो जाए, कोई स्मैश रोड में ना पहुंच जाए। I'm looking at nonstop Red Force. We keep saying, we used to keep saying, right, going into a global event, we never got an कितने पॉइंट international चाहिए उसके smash. लिए? It never happened. 10 पॉइंट चाहिए E-Arena को, 122 पे हो रहा है। Nonstop Red Force able to snatch it यार away. इसकी आवाज को थोड़ी कम करो जरा, 122 पे लग रहा है स्मैश पॉइंट। जो टॉप टीम होती है, टॉप टीम में जितना पॉइंट्स होते हैं उससे 10 ऊपर होते हैं। और ठीक है, खैर है, बैकग्राउंड में चल रही है, चलने दे। टीम E-Arena से 10 पॉइंट ऊपर 122 है। E-Arena के लिए तो बड़ा था, लेकिन बाकी टीमों के लिए मुश्किल है। देख फ्लैश भी स्ट्रगल कर रही है, जो जितना मैच लगा हुआ था। फ्लैश भी 63 पॉइंट्स है बस। हाँ स्ट्रीम लाइक मार दो, लाइक मार दो, स्ट्रीम लाइक मार दो साथ साथ। I think that could definitely be something that we're going to be seeing, specifically in the first rondo, because they have been known Like, to put up like. massive elims in that first game. I just want to say, can we stop getting a global MVP and just actually win a tournament? 40 रेस टू स्मैश, 45 पॉइंट। देख 45 पॉइंट चाहिए 40 को। यार की लाइटर की मजाक खेल रहे मेरे नाल यार। यार तो चाहती है यार। नेट बंद हो गया, वापस आ गए फिर की ये यार, नेट बंद हो गया मेरा। वो देख 45 पॉइंट चाहिए। वो चिकन चाहिए इनको बस। चिकन चाहिए, एक जो हॉट ड्रॉप इन्होंने करना है, उस हॉट ड्रॉप में किल निकालने पड़ने हैं। यार 2 मैचेस में चिकन इन्होंने करना है ना, तो उसके अंदर इनकी किल्स भी ऑटोमेटिक निकाली जाने हैं। हाँ चिकन चाहिए, एक चिकन नहीं अभी तक इन्होंने किया, एक चिकन जो इनकी अपनी भी बीच में गलती है, इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। इन्होंने जो है ना अपनी गलतियों से भी कुछ चिकन कन्वर्ट नहीं किया। तू एक चीज नोट करी, तू एक चीज नोट करी, एक चीज नोट करी, E-Arena इस दफा वो नहीं करेगी, ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। देखिए ब्रॉन्डो के मैच में E-Arena ज्यादा नजर नहीं आना रोंडो के मैच में। इन्होंने सरवाइव करना है, दैट्स, इन्होंने स्मैश पॉइंट को टच करना है बस। इनका मेन गोल ये है। लेकिन अगर इन्होंने ज्यादा सेफ खेला, एंड पे इनको जोन जब नहीं ना मिलना, इन्होंने पकड़ा जाना है इन्होंने। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। ये कल की हाईलाइट्स है। बाबा तूने वो सीन देखा था इंडियन टीम्स वाला? They were not feeling as confident, not feeling as strong, but I tell you what, Mormon's still stepping up to the plate even in day 1. So I think also a lot of teams like guys E-Arena highlights दिखाने हैं also a day 3 team. There's a lot of teams E-Arena highlights do have that sort of up and down just how it works यार। out, right? जो बात है ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, 8 मैचेस में नहीं, 8 नहीं 12 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 2 डिनर निकाले, लेकिन ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, जो बात है। हाँ आ रही है, आ रही है। ओके Don't use 20 billion smokes to hide yourself. Just hold on to your utility. I'm telling you, they're quite useful. रह गया अंदर पे कमेंट्री जो है। क्या कह रहा है? अच्छा आपको छुपने के लिए 20,000 स्मोक से जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर यूटिलिटी लाइक स्मोक। वही ना। But yeah, for E-Arena, there is that one. But we got to talk about Aurora, especially because of the consistency, especially because what we've been talking about as well. मैं तलहा भाई भी ऑनलाइन शायद आ गए हैं। Players in that squad. आ गया ऑनलाइन, तलहा को ऐड करता हूँ मैं। Which they have 3 chicken dinners in total here in the final. ऐड कैसे करना है? Really interesting because both of these teams play very similarly actually, हैं? right? Both of them are quite compact. ऐड कैसे करना है कॉल पे?
able to spread out a little bit more, able to take those fights, able तूने to push other teams away. यार Very other कॉल पे दो ही team होते हैं focused, right? But for सर्वर me, में ऐड तो उस होते पे हैं बुलाना, Aurora सर्वर just पे have a बुलाना little bit पड़ना है। more of that हाँ expertise in this. They've been doing तो this रुको, for एक a सर्वर while. बना They देता हूँ मैं, एक understand the मिनट। strategy, and so सर्वर, they don't have that win. Well, they have ऐड one सर्वर। of the three that S2G have. I think there still could be something. S2G have 3 wins, but over the course of the हाँ past ही 2 गया था वे days, मसले they've been मसले very पाने hot शुरू हो and गए cold. शिट They यार have शिट a यार एक win मिनट, as you ऐड can see ऐड here. करना है ना बंदों को। It's हाँ for कर me, I'm on the fence because I think Aurora हाँ has that better consistency, but S2G have proven to us more that they can win. And when एक it comes to मिनट, that Smash roll, it's one एक of the तुझे ऐड biggest करना है और एक किधर है Okay, which is no, दुल्हा भाई को तेरा दुल्हा भाई को but I have 2 players that I'm looking at for वॉर PMG. फ्रीक। MCG maybe getting अच्छा, their second ऐड किया है। international trophy, right? Won PMGC a few years ago back in Jakarta. तलहा आ गया, तू नहीं आया अभी तक। S2G, right? He's still in that lineup. And then you have Top, that's gotten so many global MVPs in the past, same as Doc, right? I would love to see them get an MVP award. It would be cool. But I feel like the trophy and $500,000 ओके, मैं यहाँ से कॉल एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सही है, ऐसे ही करना है ना? हाँ कर हाँ ओके and of his career, this would be the perfect time for him to be Okay. in a global championship, especially with the way that he was able to perform last year. He'll be able to pick it up. कॉल कैसे करनी I है? just want to see Aurora pop off. I want to see what would happen when all those teams pop off. Other teams that are going to be popping off and that are going to be looking to actually perform here are going to be Ulf and Furia. Furia, they need to start seeing that aggressiveness again because that was the best time and stay away from एक मिनट, driving around. Drive-bys, no. They love using the cars in these finishes, especially Ayala. Gonna calm it down, especially when pushing. कॉल कैसे करनी है? हाँ शैम्पी कॉल कैसे करनी है? यार ये थैड इधर में करना है ऐड खो जाता है करने का कर कर ऐड, बस सही है। इसमें हाँ ठीक है, हो गया कनेक्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। थे तलहा दो ऐड अब आया वो नहीं आया नहीं है यार उसको बोल तेरी प्रोफाइल मैं आ गया हूँ, मैं तो आ गया हूँ। उसको बोल अपनी तेरे तो प्रोफाइल लिखी है ना गेमिंग वाली पे, उस पे क्लिक करके जॉइन वॉइस करे वहां पे। I mean, we have the docketing, we have the sickening. Yeah, I like it. Okay, wait, that can go. Wait, we'll do that, Max, just for you. Why? Used to be the Alpha 7, but then that's not आ गया ना? because they ended up winning. हाँ And now they just हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? I do. I'm very intrigued to see both of these teams here. Just to add to your point, Max, is बढ़िया हो स्क्रीन गया शेयर की है both मैंने। of these teams play. सही है? Furia is हाँ very तला आवाज आ रही है? very calculated, so that kind of feels like they're a little bit हाँ माइक stealthy, खोले but very proactive. They will make हैंड्री लगानी और मेरे उससे देखें डिस्कॉर्ड से। सही है, ताकि साथ साथ रहें। strategies. It's kind of going Oh. to be really interesting to see, you know, as the smash comes in, as that pressure comes in, who's actually going to benefit from that. अच्छा आ गया बाबा one person that it's हाँ कर वाकई but I know that they बड़ा मजा आया want to खाने talk का about बस Furia, especially with their driver license. गुड हो गया, Is none other than Lace. गुड हो गया, गुड हो गया। The driver license back. तलहा अपनी आईफोन के हैंड फ्री के साथ यो हेलो आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। Obviously, we have our teams that are leading the pack, the arenas, Aurora, Nongshim. But चल we अपना माइक are थोड़ा सा going to दूर talk रखिए। सही है, about आवाज Rondo ज्यादा ऊंची आ रही है। specifically coming up, along with our मेरी? middle pack हाँ अब teams. ठीक And है, one अब of ठीक these है। teams, Colaris, for Thrives. Our यार क्या PMWC करें अब? champions at 77 points. What are their बस सही है, सही है। expectations today, especially going into स्क्रीन शेयर हो रही है ना, देख सकते हो ना? आहो आ रही है बड़ी कर दे स्क्रीन यार स्क्रीन बड़ी करना। आहो स्क्रीन ओके बड़ी कर दे रोला कट पा चलो। यार मुझे चला भाई, वापस आ रही है मेरी। मेरी बात से पहले वापस आ रही है, वो क्यों? इन्फ्यू तो अड़के लगा और अगर फिर भी आ तो और 2 से 3 सेकंड बाद जाके ना मुझे अपनी आवाज आ रही है दोबारा ओए वापस। स्ट्रीम बंद करना क्या हो नीचे रहा है? से अपनी स्ट्रीम बंद कर साईं, स्ट्रीम वो बंद किधर कर से और होने मेरे वाला? डिस्कॉर्ड और यूट्यूब से स्ट्रीम बंद कर, मेरे डिस्कॉर्ड से देख। नहीं हो गया तलहा यूट्यूब से स्ट्रीम बंद कर, डिस्कॉर्ड पे देख। वो डिस्कॉर्ड पे क्वालिटी सही है आ रही स्ट्रीम की? हाँ सही है बस सही है। मैं क्वालिटी एक दफा देखूं। ये मैं समेट के आया ओके आ रहा हूँ मैं ओके ओके ओके, हेलो हाँ आ रही बात। सही है। हाँ, सही हो गया।
That's the kind of safety net. Anything above that's a blessing, James. But you've got to target teams above you as well. गुड हो गया, गुड हो गया। Break their legs on the way if you have to. यार To इसको stop जूम them के साथ getting करूँ into a अब safe position in Smash. 3 में नहीं आ रही फोन ये। अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं मोबाइल पे लैपटॉप पे जूम का ऑप्शन आ तो जाता है, चेक कर ले और नहीं डिजाइन आता बता दे तू। तला भाई क्या लगता है आपको क्या होगा आज? वेट अ मिनट, क्या लगता है तला भाई? 45 पॉइंट चाहिए स्मैश पॉइंट के लिए 40 को, और 35 पॉइंट चाहिए इंशाल्लाह आ नंबर जाऊंगा 1 पे मैं आने 40 के। का। 40 को निकालना पड़ना है डिनर रोंडो का 20 से 22 किल्स के साथ, मतलब इतना निकालना पड़ेगा कि जो है ना डोमिनेंस आ जाए 40 की, समझ रहे हो? ये देख इस तरह आ रहा। वो एक मिनट, ये उसको जैन को बता, जैन तुझे बताता है। जैन है वो गया हुआ है कुछ समेटने आ जाए। आ गया जी, आ गया। जैन तो ये सेंड किया है, देख मेरा ने इस तरह आ रहा स्क्रीन पे, मतलब फोन क्या नहीं आ रहे यार, कोई तलहा एक नंबर रख लिया यार, हर बार तेरा नंबर बदलिया होता है कि ये तू एजेंसी चलाई है तू कोई? यार जो वही नंबर ने यार ये नीचे तेरा वो जाएगा ना यहाँ मानस पे। फिर जीत गया है, वो मानस फिर जीत गया है। वो चुप वो कर चेस यार, एक मिनट रुक जा यार, उन 10 लेने दे। दसो ये जो जहाँ पे एरो बना हुआ है नीचे छोटा ना, इसकी स्क्रीन के सेंटर में बिल्कुल इसको क्लिक कर, यहाँ पे लिखा होगा हाइड मेंबर्स, बिल्कुल राइट लाइन के नीचे एरो बना हुआ है छोटा सा, उसको वहाँ पे क्लिक करके आएगा हाइड मेंबर्स, बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। हाँ भाई हाइड मेंबर, आहो हाइड मेंबर क्लिक कर दूं? ओके हो गया, हाँ ठीक है। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। इत्थे फसो उत्थे दसो राजा रिकवरी। बात लो इसकी इसकी यार इसने खुद की हुई मैंने है। उसकी भी है, शोर बहुत रोला वो था बात में काफी। अच्छा Keeping us updated with what's going on within that club championship सही है ranking. But right now, I want to get some predictions out of you guys because we've been getting the predictions out of the viewers. Max, which is the team that's going to be eliminated first in Rondo? अच्छा जी, We wanted like a pick of who's going to win. मैक्स को बता लगे Aurora. It seems like something they would do. ना कर, अरोरा पे ले जाएगी बाहर। No. For you, I'm going to switch it up. Hold on a second. Slow down. All right. Which team is going to be winning Rondo? Which team is ओए winning Rondo for Thrive? शादी लगी है, शादी लगी है। Sorry guys. आया आया Hold on. That might be a good thing because they might be able पहली to बार just चौक reverse के that curse. And it could be a ओए blessing मैं here. शादी बोल दिए, फंस में जाऊंगा बाद में। शिट अल्लाह पता तू खत्म है, तू खत्म है। बढ़ गए मैं। अब ये ये रिकॉर्डिंग कट कर, ये पार्ट कट कर दूंगा। अब ये पार्ट रिकॉर्डिंग कट कर। होगी। हाँ जी हाँ जी। एडिटर बॉयज नहीं अभी तक आए, बॉयज आने लगे। ओके काउंटर स्टार्ट हो गया गाइस। एडिटर ये काटना हो। राइटर भी आई हूँ। मैं रिकॉर्ड कर लिया बेटा, चल हाँ। तो कभी मैं सेंड करता हूँ। भाई ना करो बगैर तो। 3, 2, 1, let's go. Let's go, yeah. आराम से, ओ पड़ी आराम से। चाची बस, हेलो, ओ पीछे, ओ। नाइस। ये तलहा बचपन में करता था, इस वजह इसको स्कूल से निकाला गया था एक बार, पता है?
वो ये तो WWE हो रहा है, ये तो आईफो स्पीड है। ये आइशो स्लो है भाई। वाह एटीट्यूड भी दिखा रहा है साथ साथ। ओ ओ ओ ए सासुके सासु ओ ओ ओ ओ 1v3 ओ 1v3 कर गया यार। ओ थोड़ी वन हो गया। नहीं समझ आया मुक्के क्यों मार रहे हो एक दूसरे को। गेम में गन करने डाली सारी है कि चक्कर आ रहे हैं। लाइटनिंग ड्रम है भाई, लाइटनिंग वाले लाइट वाला ड्रम है गाइस। यार टेबल चेक कर यार, उनके टेबल चेक कर जरा गेमिंग वाले, कमाल के लाइट वाले भाई। ये यार अच्छे हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं, टेंशन लो। नाइस तानिया, क्या बात है। ओए अच्छा Just 6 maps sit between your team and the PWC title. But Barney, the smash pool is here, so anyone who hits let's go 2 points can snatch the victory with one last chicken dinners and become our champion. There's something brutally honest about the final day. Don't give me excuses, just give me results. My name is Barney Banks and I'm your host alongside the awesome Luti. And welcome. I am Safi and our name is Salha and Zen, and we are streaming in the YouTube channel. 1 मिलियन हिट होने लगा हमारा इंशाल्लाह अगले साल। यो तालियां, लूना आ गई, लूना आ गई गाइस। बॉटम पे है लेकिन तालियां तालियां। ओ ओके नहीं यार अप्रिशिएशन यार इनके साथ तो ना यार अप्रिशिएशन 15 स्पॉट के लिए अप्रिशिएशन नहीं ये 16 स्पॉट के लिए अप्रिशिएशन। कल डायनामो की वीडियो एक आई है, देखी तुमने वो वाली? नहीं मैंने देखी। ये कौन सी है? हाँ बीटीआर ओके नाइस वन। गेमिंग की वीडियो आई है, बाद में बताइए। गॉड लाइक अच्छा खेल रही है, गॉड लाइक का जो एस पावर से बहुत अच्छा क्लच मारा था विटैलिटी पे भाई, जो बात है। देखा था मैंने, वो देखा था भाई, मैंने वो देखा था। जो बात हो रहा, लेट्स गो यार। हो रहा फाइनल में चोक कर जाती है यार हर दफा ये बात है। यो फ्लैश, वो दोनों भाई हैं, जुड़वे लगते हैं वे यार। चीनी सारे कोड ओके। याम्बा भी बहुत अच्छा खेल रही है। 14 एंड पे आना है, 14 एंड पे आना है। फ्यूरिया ओए पहले आ गई है। जियो चेता दो, जियो आज करके वो खा रहा है। जियो क्या फलक फुल एटीट्यूड दे विच हाथ अंदर ये ओए आउल फले बड़े रामी ने यार, बड़ा तो नहीं आ रहा अभी यार। क्या तुर्किश है, तुर्किश गार्दिशम। ए राऊ एक और तुर्किया ब्रदर यार। ये बड़े राबी हुए हैं यार, इनको रोको कोई, ये पकड़े नहीं जा रहे भाई। कोई बात नहीं, कहते जब कुत्ते की मौत आती है तब कोई मौसम नहीं। ये उससे ज्यादा हुए हैं, ये सेकंड स्पॉट में है फिलहाल। इसके बाद जो आने लगी टीम वो फर्स्ट स्पॉट पे है। नहीं छड़ना, बहुत एटीट्यूड आ गया, नहीं छड़ना, सीधी गल है। हूं नहीं बचते है। 16 टीम्स 1 ट्रॉफी। चुक लो जिदा हथ वजदा चुक लो। ए बोना जेड़ा है ना एंड वाला, ए जेड़ा बोना लेफ्ट साइड ते एनु छड़ना नहीं है। चोखा हो रही है, चोखा ਹੁੰਦਾ ਹੀ चोखा हो रहा है वे का तो बाहर हो रहा है। Only one key will remain intact after Alpha 7 and Yangon Galacticos. The throne sits empty and Paris demands a champions. The dawn of the final is here. This is BMWC 2026. BWC. Commentary यार अच्छी, documentary commentary अच्छी कर। Guys support our team, let's go. Months of preparation
preparation, thousands of hours played, and sacrifices have led to this point. Life-changing money sits on the horizon, and a legacy that dreams are made of. आवाज नहीं आ रही जैन, तेरी कम आवाज आ रही है। सेकंड वाले जब सेकंड प्लेस पे जो है ना फुल सिस्टम सीरियस है। अरे नहीं, इनकी आवाज तेज रख, स्ट्रीम पे आवाज नहीं आती इनकी। अच्छा, तेरी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने माइक थोड़ा दूर किया था, ठीक है? हाँ अब सही है। यार ये अरीना को पकड़ना पड़ना है यार। रोंडो पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सारा काम गाइस, रोंडो पे फुल डिपेंडेंट है सारा। ऐ शो है या कीड़ा। हाँ इन्हों भी बहुत शौक है मेरे। into the finals, and now they're looking on top of the leaderboards. If they could just continue to be a little bit consistent, we should be able to see them win the whole thing. मैटर करता है आज के दिन ये लोग कंसिस्टेंट होते हैं या नहीं, आज के दिन सबसे ज्यादा मैटर करेगा। अगर इन्होंने ये है मोरमन, ओ यार हुज़ैफा हुज़ी, इंशाल्लाह गाइस, इंशाल्लाह बॉय, जो बात है। पता नहीं सुन ला थोड़ी को। अपने हैंड पे थोड़ी दूर कर रहे हो, थोड़ी माइक थोड़ा दूर कर अपने मुंह से। जो बात है गाइस, जो बात है गाइस। ये तो थोड़ा क्लोज कर। सही है। आप सही है। कहानी बोल रहे तलक क्या है? पता नहीं। लाके जो बोन में पढ़ने। हाँ आ रही है अब आ रही है ब्रो। आ रही है वाह। ओके आवाज तो नहीं डिले आ रही कहीं? नहीं हमें क्यों डिले आना है? यार जो बात है, जो एटीट्यूड दिखा रहा है ना ये का प्लेयर, उसके अंदर गेम सेंस भी बहुत है, गेम प्ले बहुत है उसका, मोरमन का। ये आरामी टीम है भाई, आरामी टीम है। एनएस भी अच्छी है। इंशाल्लाह सारे चौक करेंगे। जो ऊपर भाई 40 को ही चौक करना, बस ऊपर वाले हाथ करने चाहिए चौक, ऊपर वालों को चौक करना बहुत जरूरी है। भाई अपने हैशटैग अपडेट कर। क्या अपडेट करूं? हैशटैग जो यूज किया स्ट्रीम को अपडेट कर। डिस्क्रिप्शन वाला करता हूँ, मोबाइल पे करता हूँ। मुझे मैं व्हाट्सएप पे बता गया ना। एक मिनट दे। The stage is set. Our teams in position. ना टाइम और लगा दो। तला तो जाना तो नहीं है किधर? नहीं यार कार कर लेंगे हम। ऐसा से आ गए हैं डिस्कॉर्ड पे, नहीं तो मैं कितने आना सी। सही हो गया। And there could be quite a few contenders for that throne right now. A lot of princes. यार गूगल लेंस भी ना। Looking to dethrone. निगमा निगा ओए शर्म कर ओए। यार निगमा बोल रहा ब्रो। ब्रो सबको पता है क्या बोला है। आपको किस को जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखनी है बाद में। उसे टाइटल में भेजी। ये भेज दिया मैंने। यार मुझे लैपटॉप से करना पड़ेगा। कर लेना, वो जो ऊपर टाइटल लिखा है ना उसके अंदर 40 पे रुक जा अंदर कर देना इसको, पीछे स्ट्रीम उसकी बैकग्राउंड पे चलने दे। Let your voices echo throughout रुक the जा। history books. Light this all up. Let's give these teams some energy. Let me hear you roar! टाइटल पे जर्मन में और एक टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में? टाइटल में भी डिस्क्रिप्शन में भी करते हैं।
सही है। as we head into the first match of the final day 40 ऐड कर दे, बाकी ऐड कर देना जो तुझे भेजे सारे कर दे। from हाँ Savannah City up to Nanshuan. We're getting it kicked off here for PUBG. जो ज्यादा हैशटैग वाला है ना उसको कर। हाँ वही कर रहा हूँ। रैंकिंग में देखना। मैं सही है, मिल गया। नीचे सारे ऐड कर दे जो चाहिए ना, मैंने वो सारे ऐड कर दिए। 1 मिनट टेक्स्ट पे भेजना था ना भाई, टेक्स्ट पे भेज। देखिए यार हैशटैग पबजी मोबाइल। हाँ हैशटैग बड़ा है सब। PUBG नहीं छोटा, PUBG मोबाइल। ये पहले ये फर्स्ट वाला ही है 4.5 मिलियन। अच्छा जी अगला कर सेलेक्ट 1 मिनट। अच्छा आगे PUBG नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम छोटा ही है जी नेक्स्ट ये पहले ही है। बस अभी बड़ा में लिखना है, बड़ा लिखना है PUBG MS31 मैम आगे S31। 1 मिनट यार, मैच स्टार्ट हो गया। मैच तो मैच वो स्टार्ट हो गया भाई, वो स्टार्ट हो गया। पागल हो तो तुम अपडेट लोग। करते फटाफट अपडेट करते जाके फटाफट कर। बस सही है, 2 ऐड करनी पबजी मोबाइल को तूने यार छोड़ बस। ठीक है ठीक है कर दे अपलोड कर दे। Catch trying to catch back up close and personal. Ooh, Kamikaze with the quick drop down. Subverts expectations. नॉक किया, लेट्स गो। आईक्यू ने नॉक किया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। आईक्यू ने कौन नॉक किया है? तीसरा क्या हम भाई 3 प्लेयर नॉक है, कंफर्म हो गए किल हमारे। गई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कंफर्म हो गया। Kamikaze though looking on fire as per usual. Okay. Picture we got Aurora coming against God. कम ऑन 40 एक बंदा लूज नहीं करना, किल निकालने हैं। लेट्स गो। नाइस एसजी का बंदा नॉक, दोनों गए हैं खत्म। नाइस, ऊपर वाले बंदों को उड़ाओ। एसजी के 4 किल्स हो गए गाइस। हाँ बस अब नहीं रश करेंगे, एसजी वाले रश करेंगे। टीएन का एक रह गया, एसजी वाले भी नहीं रश करते। ओके और ओरा और गॉड लाइक फाइट होगी स्टार्ट। इनके रिकॉल भी पड़े हुए हैं ना कोई नहीं लेट्स सी। आईक्यू जियो यार, जियो आईक्यू। ओह 4 किल्स हो गए, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। ओए ये भी फ्लैश। ओए मार दिया। स्मोक करो यार। ओए जियो यार, नहीं यार स्टेट यार। किल मिल गए हैं बैच के, 3 किल मिल गए हैं यार इनको। फ्लैश वालों कंफर्म तो करो यार, क्या कर रहे हो? ठीक है अपनी टीम में फोकस मत छोड़। ओए फाइट होगी, रीफर्स नॉक, थोड़ा एडमिनो 1 HP। ओ ले गए अरोरा को ले गए। T24 नॉक है, T24 M24 से नॉक। बच जाएगा। IQ वर्सेस ह्यूमन। ओह माय गॉड, पीछे से पड़ी। जियो किल उड़ा लिया। जियो आईक्यू ले गया एक को। जियो T24 नॉक है, देख के IQ देख के TZ आगे देख के। दोनों को पता है एक दूसरे के लिए, दोनों को पता है। फलक किधर है? फलक आ गया। ओए आराम से, इजी आराम से लेके जाओ इजी। ओ नहीं बच गया। ओ यार पूरा कर गई यार। ले जा यार फलक। Playing like he has got all the armor in the world. ओए नाइस वन जियो आईक्यू। बचा T2 को बचा। 6 किल्स हो गए, लेट्स गो। 7 हो गए T2 बचा। ओए बैठ की हो रहा है। कम ऑन लेट्स गो। अभी वो कॉल हो गया, अपना भी कॉल हो गया। फलक रिकॉल हो गया, गुड हो गया। ओके T2 बच गया हमारा। T2 लोंडा बच गया हमारा।
जियो जियो गाइस जियो। दुबई पे ये नाइस, भाई गुड स्टार्ट हो गया, गुड स्टार्ट हो गया। सिर्फ एक प्लेयर लूज किया हमने अभी तक गाइस, सिर्फ एक प्लेयर लूज किया है। गुड स्टार्ट है हमारा। ओजी वाले भी अच्छा खेल रहे हैं, ऊपर से खबर दे रहे हैं। 6 किल्स उनकी भी हो गई हैं ओजी वालों के। ओजी से गॉडलैक हो गई स्टार्ट फाइट। हाँ T24 पे स्प्रे मार रहा है वो। ऊपर बंदे आ गए, ऊपर बंदे आ गए इनके। रिकॉल पे है, रिकॉल पे है अपना वो है हुजैफा है, रिकॉल पे हुजैफा रिकॉल पे है। अब हुजैफा आएगा, फलक रिकॉल पे रहेगा मेरे ख्याल। फलक जाएगा, हाँ फलक जाएगा रिकॉल। जाना भी उस पे चाहिए क्योंकि उसका हो गया वाला। यार ये रीना के पास 3 किल हो गए यार, ये नहीं था जाना चाहिए हमें। इस तरह चलता रहा ये रीना स्पैश पॉइंट हिट कर लेना यार। अभी बड़ा मैच पड़ा भाई इसी। इनके 10 पॉइंट्स नहीं करवाने बस यार, 10 पॉइंट्स नहीं करवाने इनके। कुछ करो गाइस। पूरी वाले इधर ही है। ये लोग फाइट लेने लगे, ये लोग फाइट लेने लगे, फाइट शुरू लगी है। मार 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 अयाला अकेला है यार, अयाला अकेला है। अयाला पे चढ़ गए, अयाला पे चढ़ गए। ओ व्हाट द हेक ब्रो, अयाला पे चढ़ गए। मार मार जियो जियो जियो। आओ आओ चढ़ो चढ़ो, ऐसी तुम चढ़ो तुम लोग। थोड़ी ऐसी नहीं ऐसी। आ रहा टेरी आ रहा है, नीचे चला गया, नीचे चला। गुड है गुड है गुड है। कवर ले अपने 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 प्लेयर से कवर। नेड आ जाना है अयाला, नेड आ जाना है बस। सही है सही है सही है। गुड 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 गुड। ओ आ गया, कवर आ गया। टीममेट्स आ गए, टीममेट्स आ गए, तीनों टीममेट्स आ गए। पकड़ो इनकी पैस की तुम पकड़ो, फड़ो है ना। नेड पकड़ा हुआ फड़ 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 फड़। नेड मारा। ओए लो हुआ है, कौन लो हुआ है? हल्का बहुत स्लाइड डैमेज हुआ है, बहुत स्लाइड डैमेज हुआ है। ओके ये फाइट थोड़ी लंबी होने लगी है, थोड़ी फाइट लंबी होगी। नहीं 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 वो उस साइड पे, उस साइड पे। ओए वो किधर से नेड आता है? अच्छा नेड एक कोट में मार। हाँ मार मार मार। नेड आएगा अब आएगा अब आएगा, अब सही नेड है। मार यार चीफ, चीफ नेड मार यार। मारेगा मारेगा मारेगा। बहुत बहुत जो है ना अंडरकुक नेड मार रहा है यार ये रीना वाला। हुजैफा है, हुजैफा है, हुजैफा है। लेकिन हुजैफा उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा। इधर आने का फायदा भी नहीं है, किल देने का, किल देने वाली बात नहीं। हुजैफा गॉडेल को पकड़ना चाह रहा है, वहां से एंगल बना रहा है हुजैफा ऊपर से। क्या ओए लकी मौली लगी, मौली लगी, मौली लगी। ओ हुजैफा पकड़ा गया है यार। चलो कोई नहीं, रिकॉल हो जाएगा। ओ नेड आ रहा है, नेड आ रहा है, नेड आ रहा है, बच के रहे, नेड आ रहा है। बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा। नेड आ रहा है, 2 बंदे जाओगे देख के। ओ जाए पीछे गॉडल आ गया, गॉडल आ गया बस। ठीक है खत्म, ये रीना वाले के। ओए मार दे आईक्यू, ओए आईक्यू ने 1 HP कर दिया यार इस पावर को। शिट यार आगे गन रीलोड कर दी। ओए नेडे आ गए। ओए की हो रहा है? 40 कम ऑन कोई बात नहीं कोई बात नहीं। डिनर चाहिए, डिनर चाहिए। अर्ली किल्स हमारे निकल आए, हम सेफ भी कह सकते हैं, मसला कोई नहीं। ओ दे ओनू वेक ओ दे ओए दोनों टीम यार। एस्टूरी भाई बड़ा गंदा खेली है। ओए गॉडलैक ने फ्यूरिया मार दिया, दोनों कर दी उन्होंने। वो गॉडलैक अच्छा खेल रही है गाइस, गॉडलैक अच्छा खेल रही है। ओ नाइस ओए, गॉडलैक अच्छा खेल रही है। एलन ने ठग गया, हम ये ठग गए। अच्छा खेल रही है गॉडलैक यार, गॉडलैक अच्छा खेल रही है नो डाउट। 8 केस हो गए गॉडलैक की। पीछे से 40 ने आना है, लेकिन 40 की लोकेशन पता चल गई है गॉडलैक वगैरह।
यार किसी ऊपर वाली टीम को मारो यार, कोई दूसरी छोड़, नीचे वाली टीम ऊपर वाली टीम को मारे, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। फ्यूरिया गई। नॉक और फ्यूरिया गई। ओए हो, फ्यूरिया को उड़ा दिया गॉड लाइक ने भाई, मजाक नहीं है। 10 किल कर ली गॉड लाइक ने। सर गॉड लाइक भी पीछे पीछे ही है हमारे। ये कौन है? अरोड़ा। ओए अरोड़ा ने भी फड़ोए, अरोड़ा ने भी फड़ोए। इरीना के रिकॉल नहीं है, अब इरीना ने खेलना है सेफ। मैं पता है कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है इरीना प्रेशर में आ गई है। इरीना के जिस तरह बंदे उड़े हैं ना, किल्स भी नहीं निकले उनके। मैं पता है करता हूँ क्या क्या यार, तला स्पाइडरमैन बन के जाना था। आप देख कितना सेफ खेल रहे हैं, आप देख कितना सेफ खेल रहे हैं, देखा है अभी जोन के बाहर हैं। 3000 मीटर दूर है भाई जोन से, 3000 मीटर। इन्होंने लेट रोटेशन करनी है, अल्लाह करे लोग पकड़े जाए लेट रोटेशन, इनको जगह ही ना मिले, अल्लाह करे इनको जगह ही ना मिले। ओ यार ये दोनों भी उड़े यार, एसपीजी उल्फ दोनों ही उड़े हैं यार, कोई थर्ड पार्टी करे। माइक पीछे कर अपना मुंह थोड़ा। टीम यार एक मिनट मैं उसकी आवाज कम करता हूँ। ओ देखो ओए चले गए बाहर जोन से, ये कर रहे हैं 40 वाले आ गए जोन में। 40 छोड़ वो जो है ये वाले देख, वो रिकॉल हुए हैं ना, सारे रिकॉल हुए हैं। आप ठीक है बात? नहीं तेरी बात ज्यादा आ रही है, मेरी ज्यादा आ रही है। माइक थोड़ा पीछे कर देना मुंह से। एक मिनट, throughout the majority अब of सही games, है। some very good rotates. I mean, Solke has been in the game such a long time at this point. And that veteran mindset is really coming into play here, where he's seen a lot of these circles before, he's seen a lot of these rotates, and he can really lead the team to victory. Yeah, some of the gun skill maybe isn't there for this guy, but he's still giving it gas when needs be. I think Solke's had a great step up, considering the amount of time he's been in this esport. You've got a lot of talent on that roster. You can pass the baton too if you need to rely on someone for a sick play mechanically as well. So certainly armed for some good fights. Talking of which, Aurora getting line of sight over onto the Vitality migration as they wanted to make a move straight past. Few shots on target, resulting in them going down to a 3-man squadron. And Aurora that also have a similar flight path back over towards the zone. I'm curious as well, bro, the push down from Nonshin Red Force, Thunderfooted their way into the zone early. I was saying the consistency of this team looked good, but it's the fact they've turned on this aggression. They're willing to fight for a good position now, Blank. I mean, playing over towards the northeast side of Mehran, I mean, it's a bold maneuver, right? You don't try and play to hold out teams on the outer edge, but they don't get themselves too stuck into Mehran either. So they have accessibility to the rest of the zone. But this is a livable position in what is a bit of a dastardly circle. E-Arena, we saw them coming in very late. They played over towards Stadium for a long, long time. Got to recuperate after 2 players in Tony K. As well as Joker went down to the Fury a lot. Just on the heels, though, of OG. Mormon's going to jump out. He loves a scrap. In the meantime, the Elam feed's lighting up and the crowd's getting excited because Godlike, it looked like it was a struggle of a fight versus Ida, but they turned it right around. They lose 1 player and are able to clean out the entire squad. So goodbye, good night, Ida. The second team to exit stage left in our opening game of Rondo. Whilst E-Arena continue to chase OG. Keeping it pretty cool here inside of E-Arena. Smash ruling always changes how these teams play. So crazy as well. Godlike's just hit the 14th elimination on this game. They are cracking it open at the moment. Looks great to see. But for E-Arena, I do think you're getting ahead sometimes, where for this game, for them,
doesn't matter so much about getting ginormous points, but what does matter is just getting enough so you open up the capability throughout the rest of the day to hit that smash. But you can get in your head about it. You absolutely can. Soka moves over towards the western side. Nongshim is extremely pleased with this shift, as they were already in Meiran, as we stated earlier. E-Arena was a little bit slow to the punch. Oh, nice. Vitality finds the first here in top, but Axel will go down once again. Aurora has been hounding Vitality the entire game. 14 knocks. No punches pulled there. Clean uppercuts. Oh. With Vitality out, they'll be able to save their mate. Get Top back on his feet, Got it. recover from this. They saw the rotation from Hora, hard committing to get past them now, trying to get into the zone themselves. Meanwhile, Nonshin, Red Force actually getting vision of their entry point. And they've instantly dispatched 2 of the players. They're pincered as well, Velula on the other side. So this is a ton of info for Nonshin and some extra points. Look at this shot from Doc. Really, really good stuff. Double spray down on the roll-up is crazy, even before they get anywhere close to the compound itself. And not a single dash of damage sent back his way. Very, very nice initial game here from Aurora, but they have a long way to go. Nick the Galaxy currently holding the backside on that southern edge. S2G blasting bullets in as Alula holds back Flash over towards the water side. Aaron out in the open, waits for the reload to come through and then makes the cross. Good timing on that one. These two sides hounding each other the entire time on Rondo. Feels like they're mirroring each other. Ooh, Orangutan from the side getting a look in as well. Soke feels that one. Gotta drop off. Meanwhile, the team with a whole load of elims and Godlike wrapping down potentially to get a bit of a scout over towards the setup from E-Arena, Blank. E-Arena would be really bad to go out right now, and I can actually tell that E-Arena is playing fairly passive because they didn't take the opportunity, despite being ahead of OG, to hit Meiran hard. OG's actually been able to take up that position. But E-Arena, they want to live this game out. They are really giving a lot of teams liberties right now just to survive. One knock goes back over towards Godlike's way. They will reassess, but it's not carnage just yet. No, it's not, but it is a little bit of a crowbar that's been dashed at them, slowing them down on their potential aggressive play. That was from 4Fribes as well, by the way. Yeah, we're hyping up the Godlike maneuvers, but they're currently sat on 11 elims themselves. And if they can vie for control of a decent position off the back of this skirmish inside, hey, maybe 4Fribes are coming alive early. What's great for 4Fribes, right? In PMGO Season 1, they were caught with the back seat because they came in with Smash Point very early on the first day. And I think that pressure got to them a little bit. It went all the way to match 6. They weren't able to put a lot of points, but they managed to make it through. E-Arena, though, sending over. Joker does need to reinforce those backlines. Good shots from Schweppes, but immediately gets taken down by Hazaifa at distance. Manya obviously realizes he's got to push back off this one. Tony K, full broadside here. Manya should be able to pick up this flush. Good nade again, though. Now just S-Power. A lot to do, but this is the man to do it. He's the clutch factor. Whoa, saved by the bell on the nade. So low. Able to keep his head above water for a few more seconds. Good box by Squad. Box is over. Shuts down S-Power. Salme out. Adamino, the only one left now. That deployable cover barely keeping him alive. 3 players up still for E-Arena, looking to get further into this game. Admino might be able to go for the res if he goes for it now. I think they're going to sweep round in the vehicle, try and figure out what's going on back there. S-Power still down, knocked. Schweppes moves up, goes for the drive-by, has the information, and that is Godlike out. So a good refresh on the gear, at least for E-Arena. Some more nades available, more ammo. They could swing back down towards that compound on the south side they held earlier on, because this is a hard south shift away from Meiran. E-Arena getting thrown a bone here, but still they have 3 players. They are not at full force. Let's see how they play this out. In the midst of this, that elongated battle that's gone on the whole map here between S2G and Ulf continues, edge guarding them coming out of the blue and keeping shots on target. It's worked out slightly worse for Ulf, down to a duo, but we do say goodbye to Solke on S2G, so a triple threat remains there.
There was some fighting over from nonstop to OG inside Miran as well. They were taking pot shots at them, so a 3-man squad living on amongst that. And 4-5's consistently keeping their head on a swivel as well. They were peppering bullets over to the E Arena encounter with Godlike. Yes, they got some knocks, but none of those converted into points. S2G desperately trying to make the cross right now. A couple of shots, but the vehicle, it is very low HP, smoking now and on fire. They have to get out. They're just about in the zone. Same can't be said for Ulf there, but Alula's going to continue to put the hurt on. I think Enigma Galaxy wanted to move around on that eastern side, see what they could pick up, but all those points have been dashed away. Still a 5-pointer on the game with the 3 players that Enigma Galaxy hold. They're on the other side to E Arena. I like this though, actually. They've got Joker as well as Schweppes playing the northwest edge whilst Morgan holds down the compound. They're looking for exit fronts here, Jackie. You see the conversations there between S2G. It's an intense day. Gotta clear the bag instantly off the back of the game one like that. Mormon did set himself up just as you suspected early, and then have played a little bit more of a scouting play to keep themselves at least aware of what's occurring up between the setup of 4-5s and OG. There's been a lot of noise, a lot of free info from that. Don't mind this too much. Just trying to create a little bit of a dip to play around as players will attempt to leave from Mayran. That's OG on the north side. Likely first to leave. It's a gamble play, but they know they're close now. They know they're close. As soon as they start getting into those placement points, they get a couple more eliminations. They're set. Their goal in this game was far easier than most. Not looking for that chicken dinner, man. Back up into Mayran. Goodness me, we went back down south, back up north, and now Schweppes has got to go pick up Mormon. Plays up by the roadside. Not definite this ends in the urban area. Enigma Galaxy might want to make a send soon. OG loses one on a knock. Not flushed though. 4-5 is looking fantastic right now this game. 11 eliminations. Holding a strong 2-2 split. Inside of Mayran, controlling both the run out from OG and scouting towards Nongshim. With Enigma turning their attention onto Flash, you can see Schweppes had already identified their setup far over. He was waiting for an opportunity to actually shoot some bullets their way. That was the call for it. No raw connection from this. Those spots to town on the rotate with the vehicle as well. Still debating if he can actually get some pot shots here, trusting in his source from distance. And this is also amongst the Lula that are pushing up onto 4-5s. They knew they were fighting OG. They took a few pot shots, but now Quick's trying to take at least a little bit more aggressive space off them. I think we're going to in a struggle position, and E Arena can play this very slow here. They don't have to peek too much. Ralph already down there. Should go down to the play zone. Enigma Galaxy is going to try and go for that southern push on this one. Like you said, Schweppes identified their position very early. The shots are coming through. They don't want these points to be stolen from the players inside of Mayran. Schweppes opens up, but looks like those points might be going another way. Nongshim getting some great damage, just playing into that engagement between Alula as well as Flash there. Gonna be long grenades on this one though, Jackie. Decent shot. That one might be good. Bounces into the back. It's chip damage, but no conversion. Ooh, bursting just in front of Satan. They've got one smoke to try and pop. Mate, this is dastardly. You are trapped in a hellish position whilst the other squads are scrapping through each other, so the lobby's starting to thin here. It's tempting for E Arenas just to push this. Getting in towards 6th place, right? Very close at that point with 2 eliminations. You could just sack your game here to go for it. Joker's going to try and get a different angle on this one, move up over towards Mormon. Some more emphasis over towards Mayran. We go a little bit further south here. The game actually does open up for E Arena mainly. 4-5s also have a good capability of leaving from this area. I wonder how many vehicles they've still got left with the tires in play. Yasser will take down Bozy, and that's the end of Flash. I mean, Nongshim Red Force has been consistently peppering that engagement, but it is Alula who's got away with the majority of the points on that one with 11.
There's been a lot of harassment of all of these squads from Nonshin and 4-5s, consistently taking pot shots out, making the fights more uncomfortable for either team involved. For E-Arena, if Nonshin actually keep this up in terms of a safe placement in the zone, some big plays, you might need to shut them down. Going to pull slightly away from their setup, though, centering up around the 4-5s crew of E-Arena, knowing they can advance a little bit on this. Yeah, it's a big opportunity now for 4-5s going forward. Get a chicken dinner here. You set yourselves up to get potentially into Smash ruling by match 2, by the end of match 2. Very cool to see both E-Arena and Nongshim Red Force. None of it was small talk at the start of the day. They were certainly looking to make it very, very difficult for any other team immediately going into match 2. Putting the worry on, requiring teams to keep tabs on them, potentially even hunt them down to keep their tournament alive. Because as soon as they smash, the game's finished. There's no longer any more opportunity to rectify those mistakes from previous days. You will just be locked in where you currently stand, which is why it's such great news that 4-5s are having such a big pop-off here on game 1. They're bringing the heat, showing that they're handy with the steal. For Alula, try as they might to absorb points from this lobby. They're so far down that it's been uncomfortable. What happened there? I mean, it was danger close, mate. He got one knock onto OG, but it took down a member amongst the commotion for 4-5s. T24 netting out for Lack, like you say, a bit of an accidental play there, but not the one you want to see. You always praise Falak's gunplay. Basically a legend in close quarters, so to lose him in an urban finish, disastrous result here. Hyunbin, though, will find R3B to send a nade over the top immediately to confirm. Is that in the window? I was going to say, that is a long lob on that one. By this time, it's a bit more difficult to hit that one. But OG lose WizGod. He's getting picked up, though, off in the distance as OG moves in, but it's Joke from the sidelines actually finding Aru. They're consistently harassing from this outside edge. Played that compound down towards the south side, then just playing off this ridge side around the road, but ooh, it is time to leave now. Gonna have to force the issue, jump back behind the driving wheel and get into the zone. For OG, it's so uncomfortable because you are just being completely cut off from all angles. The back line's covered by E-Arena, nades from the front in from 4-5s. They cannot peek in any regard. He's going in crazy. Okay, into the building. 4-5s ready for it. Nice. Zypher strikes first. Sweep slaps under the rug. Goodbye, good night. T24 with a nade from the top. He sees Joker, but it's Lord that steals it from the Galaxy. Nade over onto WizGod in the meantime, as well as Yasha falls to Hyunbin. It's all turning into carnage. Poor man, last left alive here. I think it's one more placing they need on this one, Jackie, as well. One more elimination would also do the trick. They want to get themselves up towards 5th place, but it would be so awful to go into match 2 1 point away from Smash ruling. That's not a position to play, though. Everyone's completely looking his way. Might have been better to hedge his bets down towards Nigma Galaxy and just try and take a one-on-one trade. Just wonder if they actually know how many points they've currently garnered on this game and how close it gets them. You'd expect them to, right? Honestly, for 4-5s, this probably works out in a way with that charge. Okay, goodbye, you. They're on it. They're on it. So it was 6 points. We're good. They're safe for now. That's what they needed. And with Schweppes charging into that compound, he gave them some extra ammunition. They were having to make concessions, Blank. You can see about 80 rounds of 5.56 left for them. So they've been able to restock up. Nonshin, though, still making plays, and they got loads of ammo to spray with. Shots down on target from XCY. Hits onto another man. OG, you have just been trapped, taking damage after punch for so long. They're punch drunk in the back line. For Nongshim Red Force, this is where all the storylines converge.
chicken dinner would be ideal, but a few more eliminations and a second place would get them in towards that position. A pitched battle between Nongshim Red Force as well as E-Arena going straight into match 2. Good nade over the top from AKOP opens up the door here for them to move in. Hazaifa leaning onto this one. AKOP's down, leaving just Wizgod. Goodness me, Nick McGalaxy still going, and it's Lord of all people. Finally taken out, but top 3 now. Nongshim Red Force ever closer to a chicken dinner and set themselves up alongside with E-Arena at the top. The solo savagery was nice to watch, but now it all goes down to the 2 squads that were in a prime position on Rondo for so long. The duo of 4 Frieds versus the full force of Nongshim. They charge up onto the compound. T24 topside. Hazaifa rearming himself. Shotgun to play with if they come charging through the door. So easy. Dashes the nade onto the lower levels. Wants to ascend up. Nade in. Masking some of the sound. So easy to peek this. Looking for the third angle. Just through the window. Catches a glimpse, but they read it right. Nice, they try and keep nice. him pinned back. He's got to heal. XZY, got to be a good nade through the window. Good damage off the back of that one. The burst is lovely. The play zone will take down Hazaifa. And Nongshim Red Force start the day off with a chicken dinner. Can they grab another after this to close down the entire tournament? They've got Red Force, they've got Daka. This team looks good. Nongshim have seen red, and the aggression has come out when it's needed. Fighting harder, pulling out huge eliminations on Rondo, and still playing so consistent with their setups. I mean, a technical back-to-back as well from yesterday. Last Miramar into first Rondo. Nongshim is just a different beast coming into these last 2 days of finals. Especially coming off such a long 8-game day set. Dictator wake the Monday finals. It's getting nerve-wracking. You just open with a chicken dinner. These guys must be so confident. They don't look rattled. They don't look bothered whatsoever by the sheer pressure that's on their shoulders. We know there's going to be a new champion. फिर भी वो देख ओजी ने नॉक किया हाँ They ठीक want है it branded with their उसने organization, मोड़ी से their confirm legacy. वो तो एफएस नॉन से नॉक मारा वो अंदर घुस गया था There's a छोड़ा decent chance they damn well do it. Just fantastic stuff. Good to see Nick McGuinness as well. Lord stepping up right at the end there. 4 Thrives also making some more aggressive plays, which is great to see. Yeah, there's some familiar faces. I think E-Arena panicked a little bit, but they just about made it right at the end there. Losing for lack for 4 Thrives was a fairly big deal, but OG also getting in towards a late game. Aru making some good calls that match. I think Nick McGuinness also was very resilient that game to get where they did from where they were playing, so difficult, and then Lord able to sneak his way in. बड़ा पॉइंट से सीधे आ गए You were picking up Lord earlier. What I'm saying is the fact that you've got Coops and 89 थे that पॉइंट टेबल पे sort of 89 थे collective in unison that's doing so Angle much for ऐसा this team. And again, there in a situation where it felt like you were out, Lord goes off with the solo shenanigans. Oh yeah. Hey, do you know what that is? He's got the Brandon on the go, mate. That is Yeah. the stamp to get into अच्छा the ठीक है सही winners है club. Nongshim सोना लग रहा है चल fighting साइड way दो back soon. चल Hi आने वाले everyone, I'm Rick, producer of PUBG Mobile. For the past 8 years, PUBG Mobile has continued to grow together with players around the world. And even today, we are still fully committed to this battleground. We are continuing to invest more resources, improve the experience, and bring PUBG Mobile to more players in more ways. Today, I'm excited to share something important with you. New app, PUBG Mobile Lite. First, PUBG Mobile Lite is not about making a smaller game with a smaller experience. It's about maintaining the high-quality PUBG Mobile standard while giving players a lighter and more accessible way to play. We know that different players have different needs. Some players want the full PUBG Mobile experience with the richest content, all sorts of highest quality gameplays, and everything the game has to offer. For those players,
PUBG Mobile will continue to be the best choice, but some players want to jump into battle faster, save more storage, and reduce the burden on their devices. That is why we are creating PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite is a lighter version of PUBG Mobile, built for players who want a faster and more flexible way to enter the battleground. The initial download is only around 1 GB on Android and under 2 GB on iOS. There is no extra mandatory package before your first match. Once the download is complete, you can load in and get straight into the battleground. We also made PUBG Mobile Lite more flexible. You can choose which extra mode to download based on how you like to play. At the same time, PUBG Mobile Lite is still connected to the PUBG Mobile experience. Oh, hello, Mr. The Rango map, supplies, and core combat are designed to जिस तरह की रानी मेरे को लोन है discard थी so the battle is चाल सही है authentic चाल सही है ला ऐसे रूम ला ऐसे ही गल्ला सा काट देना you can log in सही पता है कहता है ला 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 रूम ला कैश पिया बोल फिर कैश पिया कसम कैश पिया जल्दी आ रूम ला जगह पुत्र मार के ओ with your friends on PUBG Mobile, so your squad can stay together with no social barrier. Going पकड़ इसका बच्चा PUBG Mobile Lite will stay updated alongside एंटी अंदर ना बात players can enjoy new content together. 15 We are targeting an official launch PUBG Mobile Lite later this year. यार Stay के भी tuned for more updates. यार कैसे नहीं बड़ा यार पकड़ इसका बच्चा From August 25th. Whether you are discovering PUBG Mobile for the first time or returning to the battleground, we are excited to welcome you to PUBG Mobile Lite. Winner, winner, chicken dinner. See you on the battleground. यार ये वाली नहीं है We will see you on the battleground. PUBG Mobile Lite pre-register August 25th. I'm excited for it, Max. I know you'll probably end up making a video about it on your Instagram, which is what? Remind me again? It's Max Man Cast right now on Instagram. But no, I get comments. I'm not joking today. क्या कर रहा है लाइव स्टार्ट इसको Every single day about PUBG Mobile Lite. When is it coming back? When is it going to get an update? It's getting an update later this year. Oh my goodness, करके लाइव कर the दोबारा world is going to be loving some more PUBG Mobile action. 100%. I'm excited for it. Hopefully you guys are. But I'm excited for the match that we just had here. Because E-Arena definitely able to cross that threshold for being in this match. I mean, they truly analysed the situation. They had every अब ये सब ना opportunity to E-Arena get के rid of चिकन या NGX दूसरी from that, टीम है ना I guess, चिकन southern रोकने की side of कोशिश zone. करनी But no, चाहिए they आज kind of टोटल already मैचेस knew कितने that होने they हैं did enough to hit the ओए ओए threshold. 22 पॉइंट I मिले mean, हैं it was फोर्थ kind रेस of all को to Mormon's sort of intel on OG and Forthright. ज़्यादा They मिले had हैं quite a bit of line of sight on 16 them. किल Their से 16 position in किल zone ओए was ओए incredibly calculated from them. 16 But of किल course, भाई 16 kill. Forthrights right now. We do gotta talk about Forthright because we were expecting aggressiveness out of this यार team. क्या नेट मारा यार ये Boy, did we get it. Forthrights coming in hot today. This is exactly what I wanted to see from them. Did they slow down just slightly when I would have liked them to be a little bit more aggressive onto OG, onto some of those other teams, you know, as the zone started closing up around them? Yes, a little bit more mobile, just a little bit more aware. However, they bided their time. They were patient with what they did. When it came time to actually make those fights, they were able to just flip the switch, turn on that aggression, get those eliminations, and so many points. They are just flying off that leaderboard. और This ये is वाला why I मैच said के लिए yesterday देना है they इन्हें still can do it. If they have a day like they just had in this rondo, if they continue doing that, they still can do it. Especially when you have a player like IQ, the IGL of this squad, putting up the numbers, performing for this squad and clutching up. But we also got to talk about Nonstop Red Force because they were the winners of this match, Max, and they played that out damage perfectly, देख and I भाई think they 3600 का might have been damage able to also pass that threshold. Yeah, like of course GG Forthright, but Nongshim Red Force doing so much parkour Fee. in the city, swiping every other team under the rug. That's And a actually, fee. they have to try and aim for 122. I believe they did make Is it. that We'll the- check yeah. out the leaderboards very soon. But Nongshim Red Force giving E-Arena an absolute run for their money. And it is so rare to see two teams that on the the- very first game enter the Smash Zone. It बड़ा might बड़ा just बड़ा happen today.
it might happen today, and something that might happen नहीं, today शरारी is से that सही we कह have रही some है। teams that might not be challenging for that first place, putting up great performances, and we saw यार that बंदा ऐसा होता है exactly out of godlike. This squad came to play. This squad has absolutely nothing to lose, Slays, because they were going after elimination. Actually, before we even talk about godlike, I want to see what the overall is looking like, where the teams are currently standing, how far away some of the other teams are from there. Nonstop Red Force first place with 123 points. Now we have two teams that are able to win in the next match. Oh my goodness, by the way, Arena should also be colored, I'm pretty sure, because they are also in the smash zone. You just need to get above or tie एक 122 नहीं, एक चिकन चाहिए बस, एक चिकन चाहिए। Arena now, Lace, get a chicken dinner. इसी तरह खेलें अगला मैच भी तो ये भी आ गया भाई। I know, and it's so incredibly exciting because both of these teams, especially when it comes to those sort of placement points, look at Nongshim at 40 placement points, भाई Arena 40 with फिर 34. उसके साथ ही जाती है They भाई, have every चिकन चाहिए नहीं opportunity and उसको। अब drive चाहिए, to अब be चाहिए। able to secure that chicken dinner. एक Now, चिकन Seven, चाहिए you asked सीधा me a little टॉप bit 2 में about वन Godlike, का। which I know is on the second page, and the reason we want to highlight that is because they were sort of sitting more under that middle threshold, but with 10 eliminations हाँ, early 8 game, मिनट थे और। another 4 as they sort of rotate in on that northeast side, and then S-Power recovering the team हमने to 2 bring हैं, them हमारे back in. 99 है। But I want to give like a kind of a little special shout out to Admino having an absolute banger of a game too. I think it was about 7 जी यार, नजर नहीं आ eliminations रही। just by themselves, and they were able to sort of scout and hold that, and just getting like that 15 elimination points on the board is insanity, टुल्ले मारे, especially टुल्ले। from where they were sitting earlier today. But I want to check real quick. the टुल्ले rankings. टुल्ले We'll मारे take a quick second there. 11 points away for 4 Thrives now. Yes, Jumping around yeah. from the middle pack. 11 points away from top 3. The comeback is happening. This is what I keep saying. This is Fourth what I keep Thrives saying. comeback. सफी तेरी सफी तेरी शादी फुल I got a एक्साइटेड है। chance to talk with Full Life. If you want to check that out, go to my Instagram at the 7WG. But we're now seeing the race to smash. There you go. You see 4 Thrives, 23 points away, which this is a perfect start for that team, getting more than 15 eliminations, getting in the top 2, and now they are just 23 points away. And if we know anything for this squad, with the way that they're playing, with what we have seen out of them in PMGO Season 1 this year, they could make it in the next match, as long as one of the 2 teams at the top don't end up winning it. Well, exactly, yeah. So this is the case. This is the scenario where, you know, neither of those teams, Nongshim or Arena, they don't win next match. We do go into game 3. If 4 Thrives are allowed another good win, I say allowed because we don't want any hot dropping going on. They might get targeted. You never know. However, if they're allowed one more game, if we do go into game 3, 4 Thrives need another top 5. They need another several points, 8, 9 eliminations. There we go. Yeah. Another few of those, and they are in Smash Ruling. They are a contender, and they could just do a back-to-back global win. And I think we did end up getting today Maxman. I think we might have gotten a Maxman grenade of the day. Oh, really? Did we now? It's time for your favorite segment of the day. It's Maxman's grenade of today. Let's check it out. Which play's going to be here? It's going to be in the city. This 4 Thrives. It's Falak over there looking for a KOP. He gets it done right away. The man is an absolute menace. But he's too much of a menace because T24 had to take him down. Oh! Give him a boom boom back to the lobby. It's Max grenade of the day. Sorry, some background music for you, Max. That was a great. We got the drums, we got the jingle too. But yeah, for that team, I mean, overall, it's a great start here for the final day of PMWC at EWC 26. A great performance out of those teams that we were expecting a good performance out of, right? We talked about already Arena having to do what they needed to do. Now Nonshim being able to show up when they needed to show up, starting off great here with the win as well. One thing that we do need to talk about is possibly this team's being targeted. When I say being targeted, I don't mean getting a hot drop right away, but we are going to be looking at those rotations, because if we look at Arena has 2 wins so far this PMWC in Erangel, and in the finals, Arena has already gotten 1 win in day 1, match 3 in Erangel. Actually, I do want to say, I was talking to Kalaris earlier. Nonstop Red Force, they got back-to-back wins, right, on the island finish. So that's going to be something that you got to keep into mind also, because they did win PMMI by Smash Ruling. Literally, all of the storylines are merging together in favor of the South Korean team of Nonstop Red Force. They could be looking fantastic. But of course, that's if the Arena get a win, or if Nonstop Red Force get a win. But if Tura, we got to keep in mind, it's not Rondo anymore. It's no Recall Tower anymore, meaning the teams that are not currently in the Smash Zone is going to be even more complicated for them to reach 122 points. Oh, absolutely. And then you've got, you know,
when we've seen this a lot of times in, you know, Smash Rolling last day, all of this sort of stuff, you do tend to see other teams actually go ahead and change their drop location to avoid getting targeted. But you're right, Seven, right? We are going to be looking at those rotations. We need Fourth Rise, we need Nongshim, we need E-Arena, we need Enigma Galaxy as well. All of those teams. Aurora did not have a good game at all, so they're still chasing that. They need to make sure their rotations are on point, that they might change them a little bit just to avoid any early eliminations, because right now, it is now or never. We've got two teams in Smash Rolling. You do not want to take any chances going out. You're gonna have to use those spidey senses if you're currently at the top. If you're Fourth Thrives, you want to continue your frag out. Here you go. You can actually have it back now. Thanks so much for letting me go. If you're some of the other teams, E-Arena, Nongshim, you gotta watch out for everything going on your way. And I know right now around the arena, we do have a special guest. Phải đi vào vậy nó có cả là अच्छा मैं रिफ्रेश मैं करूँ इसको दोबारा ऐड होऊंगा मैं फिर और स्टॉप वॉचिंग करना पड़ेगा ना नीचे से Spider-Man is officially back in PUBG Mobile. Some of you may remember the collaboration in 2022, and this time he's returning to Erangel. Suit up and explore the brand new Central Square. You can move across rooftops, run across ceilings, and hunt down enemy squads. But it wouldn't be Spider-Man without the powers. So, you can grab Peter Parker's gloves and you can web swing your way around the city, or you can even use your webs in combat to slow down or trap your opponents. And of course, there's so much to discover beyond the fights. You can visit Peter Parker's apartment and hunt for hidden Easter eggs inspired by the world of Spider-Man. From Peter's messages, to secret clues, to hidden surprises that you're going to have to find yourselves. And remember your favorite Spider-Man movies? Well, here's your chance to recreate those iconic moments. Maybe you pull off a perfect rescue, maybe you escape a fight by swinging away at the last second, or maybe you and your squad just stop everything to take the perfect Spider-Man shot. So, if you haven't jumped in yet, grab your squad and experience Spider-Man in PUBG Mobile. Also, Spider-Man isn't only swinging around Erangel today. We have got Spider-Man on stage right here with us right now, and he didn't come empty-handed. He's going to be handing out PUBG Mobile merch in and amongst the arena, so make some noise for Spider-Man! It's good to see the heroes back in action on every single front. From Spider-Man to Hyunbin and the rest of Nongshim. Heroes is the name of the game today. These teams have been heroes in their own right. For Nongshim Red Force, what a push to hold down Meiran and find their way to that smash zone. E-Arena held their nerve. They played that west side well, and they just got across that line. It was surgical precision on that 122. Surgical is the perfect word, because Rondo did not disappoint. Yeah, we got Spider-Man here to save the day, but we got two massive threats in the lobby now. We've got E-Arena and Nongshim Red Force that can end the tournament right here, right now, with one single chicken dinner. That's all it's going to take. We saw Nongshim just do it. Can they pull it out the bag again? But it's not just those two teams. As the desk, as Blank and Jackie were saying before as well, there are other teams waiting in the wings, now staged with the points that they earned from that previous game, from that Rondo, to jump into the smash zone. There are probably at least 6 teams that can do it this match and join them. So if we don't get one of those smash chicken dinners, it is going to get hotter and hotter as the day goes on, because I don't think we're only going to see 2 teams
breaking that barrier today. Yeah, I'm glad we were able to get on the cast here for it to at least cast one game, right? Absolutely. This is absolutely insane here. My hopes and dreams are coming true. Could we see 6-7 teams in the Smash Zone with one single squad that could win it? That would be insane. At the same time, though, right? You gotta stop these two squads, because if E-Arena or Dogship Red Force win here, that's it. This tournament is over, and one of them is walking away with $500,000. Hey man, I caught Coach Pecco for Nick Galaxy on the walk over to the caster booth just now, and he was saying, I asked him, hey, you gonna target? And he was like, if we know it's them, things might get a little bit nice. Hey, you know, I can't say. But yeah, I feel like that is the sort of situation where teams who are certainly below those top two will really hard commit if they find one of these teams in a fight. The third-party targeting will definitely be high on the menu for a lot of these teams. It has to be. It really does. I got a chance to talk to Knight, as a matter of fact, the coach from Furia, and because in Brazil, these guys have had so much practice when it comes to the Smash ruling. Furia themselves have smashed in multiple of their regional tournaments. So I was talking to them. I was like, hey, exactly the same question, right? If you see a couple teams in the Smash Zone, will you guys go out of your way to take them out? And they said, well, at a certain point, we have to. You know what I'm saying? We know what's at stake. If we have to risk a bad game to ensure that we can continue in this tournament to possibly come back, we're going to do it, right? So even if it's a crash and we lose the fight, we're taking a couple of those players with us. So the whole lobby, honestly, really needs to have that kind of same mentality, because if you want to be able to move up the leaderboards, there are massive jumps in prize pools as we go from 3rd, 4th, 5th place. So you want to be able to stay in this tournament as long as possible. And this one's going to be a fun one. We got a nice Eastern Circle. I don't know about nice. It's certainly an Eastern Circle. It's going to push all the way out towards Milta, east of it, and Milta Power. Lepovka's in there as well. A lot of water here, Jukes. So that is going to be tricky to navigate. Nick Galaxy will not be getting hot drop currently, but Ulf might try and step in. Ida clashing with Tianba over on the western side. A very, very close drop. And of course, we got our big threat of the lobby on a bike. Finally finding a vehicle here. And they're going to go ahead and be looting all this north side of Georgeville Hospital area. And since it is such an Eastern Circle, right, I wonder how much these teams are going to be kind of even thinking about possibly a rotation camp. Things like that are going to start coming into play here. And man, this is going to get intense. Yeah, a lot of teams looking to put pressure on as the fight near Gatka between Ida and Tianba is still popping off. Remember, this is an adjustment from Ida to move out this way with the plane path as south as it was. They are going to get stuck straight in with Tianba, and neither team is looking super happy about it. Aching on the inside of the building. Swain on the top floor now has Eagle to contend with as well. Drops a nade down to the ground floor. He tries to fend off the remaining two players. QZZ unlikely to get picked back up here. Does bleed out in the end. And a step forward. Swain rebuffs. One more barrel, but it's not enough to blast it back. Tianba survived, but with only two players. And Horror can just move in and maybe just sweep this one through. A very strange hot drop coming through over on Gatka. Terrible. I mean, honestly, Ida's disrupted this lobby so much, and Tianba are devastated. Now down to just two single players. Aching jumps out, just desperate, trying to do something for his squad. And Eagle is just standing still, just saying, like, not like this. Not like this. Horror have been a little bit quieter during the course of these finals. Not the fans, that is, the players. The fans have been plenty loud, and we've loved it, but they haven't quite had the performance that we were maybe expecting from them coming into the games in these finals. It's not quite good. It's not going to be enough. I don't see them catching up when we've already got two teams in that Smash Zone. It is a bit unfortunate. It is not great, but they can look pretty good in game. We know that. And one of the ways that you can look good in game at home is with the Naruto skins. Make sure you're heading into game to pick up the character sets, the Ninetales Fury Orb, and you can look as good as anyone taking on those ninja challenges. Yeah, get that ninjutsu going. And honestly, yeah, it seems like Aura, OG, they're going to need to bust some of that out if they want to be able to make a crazy run for it. Mathematically, it is still possible, right? If Aura, they start with 3, they're going to need a 20-point game here, a 20-point game in the next one, and maybe even another one after that. It's triple back-to-back. It's triple back-to-backs, you know what I'm saying? We still have enough games to do it. It's just going to be tough, especially considering that you got
there's going to be quite a few teams in that smash zone very, very quickly here. That's if this game even continues on after this one. So a lot of different factors to play out. The problem also is the fact that we get later and later into this tournament, the desperation is going to raise tremendously, right? So teams in the mid-pack are going to even start playing hyper-aggressive because they're going to know, right? Their coaches are going to tell them, hey, man, look, you made it all the way over here to Paris, all right? You either get 20 points or this was all for nothing at a certain point, right? Well, that's, I mean, there's still placements on the line and all of that sort of thing. I'm just looking at the map at the moment and I'm seeing that Nongshim Red Force might be in with their first fight in a moment, which is going to enlighten the rest of the lobby as to sort of where they're playing, what sort of conflicts they could be running into. A 2-2 split across Milta right now for Nongshim as they did not fully or firmly hold the bridge against Alula, so that crossing does come through. And that central glut of teams, and now they start to take shots. Alula in the hovercraft have plenty of armor to rebuff the first volley, but there's more still being flung down range, and that's going to have to divert them on the long road. They find the knock, and there's the flush. Nongshim Red Force extract the first point. Wow, okay, so they end up getting a point on that. Pretty wild. And Alula are in this next circle, down a player. The thing is, though, if any team nearby happen to hear those shots, they know where Nongshim Red Force is now. So that is going to be a factor, but they are in a really good spot for this circle for now. I mean, teams should be aware, right, of where they're playing based on the fact that it was Alula that they knocked, and Nongshim Red Force generally going to be in this sort of location. They'll know that Alula are coming up from Novo. So it should be a pretty certain bead on it for a lot of teams in the lobby, but nobody is likely to send out this way. Maybe Aurora could try and crash into it and cause some problems. Vitality are actually holding the west bridge, which is interesting, over on that very clear side of things. So if Aurora decide, you know what, we're not going to go over to that east side, we're going to try and break west, Vitality is still lying in wait for it, which I'm not too sure about. I'm not sure if I like that. Yeah, it's going to be tough here as you got some pretty wild rotations here. Speaking of wild rotations, we got Enigma Galaxy rocking their 2-2 split. The same again. Same again. You know, I actually talked to Ralph a little earlier this morning. Asked him, like, hey, you're going to continue to do it? They're like, yeah, you know, it's worked for us in the past. We're going to try it out. We've noticed that on the west side, had a little bit of unluck with some pretty crazy pushes. But we're going to give it a shot here, and we'll see if it pays off for them. I mean, they did win a chicken dinner from a circle similar to this, on a rotation similar to this. Obviously, it was a different lobby. It was a different time. We were different people, Jukes. We were so much younger. We've grown so much. Yeah, exactly. We've come so far. But they're going to look for that regroup at some point. Getting through for that regroup is really the difficult part that we've seen for Enigma Galaxy on this regroup rotation. Getting through the glut of teams right now, I'm not too sure how that's going to work. They may have to go on the boat, maybe head up all the way north of Lepovka and go all the way around. That would be, I mean, maybe not sensible, but possible, certainly. It's difficult, and they are going to get on the road right now to see what they can find. E-Arena are also starting their move in from South George. As we can see, we're on board of them, just passing the north side of school to head towards the center of this circle as it centers up on that Milta Hill near prison. And rotations are coming as we are zooming in to Erangel. What kind of circle are we going to get here? All right, just beautiful center up, very typical. A lot of these teams were expecting this, and they got it. Now you see Enigma Galaxy, right? They're going to be on both sides of this circle. It's going to be very difficult for them to get to their teammates here, so we'll see how this pays off. But we still got some teams still trying to get in this zone. E-Arena pushing in super late because they land over there in North George. Aura still in Severny. And you got Vitality going on the other bridge here. So they're going to be super late in the circle as well. Yeah, Vitality's still on the west bridge. I don't like it. I think this is way too long. You're overcommitting. No one's turned up. Not too sure what the game plan was there for Vitality. It's not the same team we saw from their stages. Sad. So unfortunate. It's the same thing we saw in PMGO too. Yeah, it's a big drop-off, which I'm sad to see. Enigma Galaxy, they get their back duo caught up in a regroup, and this is exactly what I was worried about. It's only going to be Lord, his vehicle's on fire, and he goes down because he hops out. As it's on fire, they lose their back two. I guess, yeah, Ralph, keep doing that. See how that works out for you. Yeah, I saw his player cam, and I could see he said, what the heck? You know, what happened? How is this? Why are there players here in the middle of the circle? How did I get knocked?
That's super unfortunate. The 2-2 split, man. I mean, losing players like that is so rough. We'll see how it all continues on, though. That's if we have another match after this, because Nongshim Red Force are on the south side of Melta, full squad, looking dangerous. On the other end, you got the other Titans of the lobby, E-Arena, holding down the north side. So both these teams able to secure position as a full four-man team. A vice grip on the circle right now. And our teams will look to try and slip that. This is a replay on Lord getting knocked. You can see he drove up. It was actually the hop out that got him. He'd already taken enough damage and hadn't slowed down enough. He hopped out of the vehicle, kept that momentum, and it was the fall. He hit that ground a little bit too fast. The ankles. Just rolled the ankle, man. Rolled the ankle. And now Coops and Satan have to do it all on their loans. And it's a bad time. It's a bad time. I feel like it may have worked before. Teams maybe weren't necessarily expecting something like that, and they weren't looking for a duo to be rotating in such an early fashion, especially because they know, oh, well, these players haven't lost, so it should be a full four come from there. But there's been enough games now when Nigma Galaxy have done this that teams should be like, oh, yeah, that's what they do. Let's just clamp down on that. You know, it's one of those strategies that I don't know whether to be. It's just one of those strats that's just like, okay, it's different. You know what I'm saying? We don't see one of those bad ones. Yeah, I've heard of those. It's bad when it doesn't work, right? That's the thing. Is like if it does, it's like, wow, maybe more teams should try this out. But after that, it's like, I think we just stay together. You know what I'm saying? It's just unfortunate, especially considering that they're in 5th place, man. If they would have got a 20-point game here, boom, they would have been in that smash zone. Let's see where this next circle goes, though. And things are going to start heating up because we get a nice center up. E-Arena are going to be over there in Lipovka, so they're going to have to fight their way into this next circle. But like you mentioned, it is a vice script right now. North and southern side is where the big threats lie. In the middle of the map, though, you got S2G, you got Nigma Galaxy as that duo. They had 4, right? It is what it is. But you got Team Flash on that ridgeline, too. That is a very, very strong spot. They can be able to hold a lot of real estate there. That's true over on the east side, but I feel like they do need to move into the west edge of it a little bit further, which is exactly what Bo's decided to do there. They have to transition forward. The 3-building compound that sits sort of in front of them is viable, but it can be very difficult to hold against teams up on the north, especially if you get crashed. Multiple angles can crash onto it as well, so a little bit tenuous when you have to leave that ridgeline for Team Flash. For Nongshim, they're going to play nice and isolated on the southeast side. Remember, it's not big point-scoring games that are necessary. That's not what's going to be weighing on the mind of Nongshim, of E-Arena. It is just that chicken dinner. Be the last player standing. That's the only thing that should be running through their mind right now to try and secure that tournament title, the global stage glory. That's interesting. That's an interesting thought. And I hope it doesn't change their play style, because I'm thinking back to PMMI where Tianba had such a massive lead, and they kind of employed that same strategy. Like, hey, let's just put up some basic points. They had so many points, as long as nobody smashed, they were going to win it for the most part. But they changed play styles, and they paid the price for it big time, going from what we thought was going to be an automatic first to like 3rd place. So yeah, we'll see how Nongshim, who definitely learned from that, if they're going to replicate it or play the game that got them here in the first place. 4 Thrives in that last match were able to ignite those afterburners, send them into the stratosphere on the point scoring. And now 4 Thrives want to keep that pace, but they're kind of cut out on this northwest edge. They are boxed in by that prison cliff area on the east side of them. They're going to have to pick a direction and commit. Towards Vitality may be a good idea to start, but you've got Godlike behind that, and maybe Ulf on the top, on the lip of those prison cliffs could be a target as well. But either way, it feels like a third-party target. I can't lie, I'm so hyped for Godlike right now. After seeing that Rondo match, they put up so many points. If they would have won that fight with E-Arena, they would have, who knows where they'd be on the leaderboards here. But they put themselves in a good position. They're still in 10th place, 72 points. They're going to go for the back-to-back chicken dinner. They realize, like, hey, we got to get it done here. If they do, it would be the comeback of a lifetime. You know that their fans are excited. They're hyped up. Oh, yeah. Waiting for this next zone.
And it's going to go on over to the northeast side. And which team gets blessed here, John? Team Flash, right? Irina on the north side, on that road down from Lipovka. It helps them out. I wouldn't say blessed, though. I feel like they are still in a little bit of a dangerous position, especially with Horror descending on them. Look at that eastern sweep. That could be dangerous. That could be trouble. As Coops takes a knock in the meantime as well on the south side, bleeding out another player. Not good news. But Horror, look at a crash maybe towards Irina. I do think it is Team Flash that has been the most blessed by this zone, though. On that northeast side, it's exactly what you highlighted, right? That ridge line, the buildings in front of it, really, really good. But only if it goes out their way. Well, guess what? Here we are. And now S2G try and push in. They're being denied access. As Horror clash with 4 drives who have, okay, they've lapped over the north side of prison, and they're third partying on the rotate here on the north. Fights happening all over the place. Now we're going to be looking at Enigma Galaxy. Satan all by himself, going to be challenging Al-Ula here as we switch over. 4 thrives get eliminated. That is a huge loss right before the 100-point mark. There goes Enigma Galaxy as well. That's 5th and 6th out. And now Aurora up, trying to sweep past Noxian Red Force. As Horror picking up those points is a great result for them. 7 eliminations now on the north side. Right next to Irina, who take a knock as well. 30k has gone down. S2G battling for the middle of it and taking damage from every single angle. Ulf will do a lot of damage to them, but S2G managed to weather that storm. A lot of damage across the board on these rotates, Jukes. And then here we go. We're going to catch this fight here as S2G are hurt. Vitality very, very close near to them. And it was OG that are putting up some points on the board. They end up getting 1. Kamikaze on the other end. Now finally the fight has calmed down, but this is a battle for the central position in this circle. I mean, this is another team, S2G, who is within reach of that smash point barrier up to 122, but they have just had the win taken out their sails. 113 right now. They need to get 9 more points on this match, and with 11 more teams alive as a solo Kamikaze, has he got something magic up his sleeve? I do not think so. Which is going to leave Aurora to really be the only challengers to that smash point duo. And Aurora are definitely a threat, that's for sure. 110 points. 12 is super easy for them to get in this kind of position. They're gonna have to fight their way through it though. CS Power getting a knock from Godlike. They're down to 2 players, and that is WizGod gonna get that confirmation on 2 Power. Only 1 player up left for Godlike. Oh, Irina did manage to just roll over to the ridgeline there on the shoreline. But Mormon's been spotted. Okay, Sky is still going. And the Arena not safe yet, not out of the woods. As Godlike and Orangutan still continue to clash. Up the stairs, Godlike. Look for it, but the drop down is caught. And there's the crash. You want to take 1 down and the Arena falls. Only 1 team can stop it all now. Longship with a big opportunity on the south side, but they're right on the edge. The whole lobby breathing a sigh of relief now that at least one of the Titans is gone. It's still up to Nongshim Red Force though. They're on the south side, playing carefully, waiting in the shadows to strike. It's only a matter of time here. They're thinking, yeah, you guys fight it out. But you better watch out. Ooh, a big south shift, and Al-Ula are looking tasty for Nongshim. Look, they're already in those vehicles. XZY wanting to keep Overwatch on the angle as well. Maybe take some shots out that way. How fast are Nongshim going to be able to mount up? Because Flash have already regrouped to the triple stack buildings on the north side of this next part of the circle. The west edge with Furia and Orangutan also needs to conclude and try and find a way down the hill. The Deadwood is so hard to navigate, though. There are these really tricky defilades, and there are players lying in wait. Speaking of lying in wait, yeah, you can see Nongshim Red Force. They don't want to give away their position. They don't want the lobby to know where they're at right now, so they're playing it very, very quietly. So take a look at this replay. Schweppes, popping them out the vehicle, but the crash from Aura, so strong here. And they shut down E-Arena. Huge fight for the whole lobby. Absolutely. Irina remain on 122 as well. Doesn't mean they can't win it all next match. They are still in the smash boundary. Yes, they are. So even if Nongshim get 30 points and don't win the chicken dinner, they could still take it all away with a 0 E-limit. Aurora want to put themselves in the smash zone here now, though. Oh, yeah. Here they go. They're going to start pushing, trying to find a position. They got the Wizard Tower. Are they going to take it? Nope, pass it up and decide to go for this hill line here. Good strategy. Got to be careful, though, with those shots from Flash.
Yeah, there's... Throwing down some smoke. I like how they put one vehicle in front of the other, so they at least sacrificed one. But they should be able to hold on to at least another one here in a second. They're going to have to pick a point to go, and I feel like sure Team Flash can be taking shots right now, but the west side is going to have to conclude, and fairly quickly. Someone is going to look to crash Team Flash. I can guarantee you that at some point in this match. Yeah. But it may be a little bit longer than we were anticipating. I mean, as I said, the Deadwoods have a lot of those defilades, the hills that slope down from the top of this ridgeline. This tree cover has a lot of rocks to play around. You can sort of stutter your way forwards a little bit, but later on you're going to have to find something. Oh, spot over onto Doc. They know who they're fighting now. Well, they will once that thirst happens. There it is. And there it is. So now they know 100% Nongshim Red Force is right here. Aurora are going to put every single amount of their resources to make sure they can stop them. It may well be worth it with all the teams around them going down fairly quickly. Just sitting here waiting for Nongshim to roll out, stepping through, sacrificing shots to Team Flash. They may look to try and just block the road, shut the door in the face of a Smash victory here in match number 2 today, match 14 on the series. To be fair, this is going to be a very tough win for Nongshim to get. They're in a really, really tough spot here. They are on the edge of the circle. That broken walls is covering them for now, but this next zone is going to make things interesting. But here we go with a huge battle. It's Furia versus OG. Furia in 8th place right here. They need the win. Oh, that nade looks good. That should get a confirmation. It doesn't, some way, somehow. Bad nade there, but all of a sudden, they are able to get some knocks. Silence is going to go into the building, eating some blue zone. Furia are getting peppered. Little by little, he gets away with just 1 HP. Oh, WizGod steps out. He's looking for more. He's got the shotgun shells under the car. The blue zone's ticking, but he's not going to matter. WizGod strikes back against Furia, but now Horror here, and he's got a sliver of HP to play around with. They'll know he's here, and Fear rolls over the top of the hill. WizGod, what? He didn't see him. He should hear that. No! With his back to it. Will take the shot, but not find the knock. And he will be put down. In the meantime, the roller from Nongshim. And they're off. Here they go. Nongshim Red Force on the rotation. Trying to find a spot. The tires get popped. Flash knocked down Tizzy. It's up to the 2 players from Nongshim to end this tournament. XZY trying to regroup now on the back. The reloads are coming through, and he may be able to sneak his way into the dip. And Aurora now have Nongshim set before them. A gauntlet to run through, and then one that they will charge in headlong. Nades first. Zul, Rufus. Wants this retribution. Draw this game to a close without a Smash Point victory. Aurora throwing an absolute bombardment onto Nongshim Red Force. They know they're the threat. They're going to use every single piece of utility they have to finish this team off once and for all. Unable to find those other vehicles are getting moved out the way, though. That's the coverage that Nongshim Red Force desperately need. Looks like they're playing a little game of ping pong with that car. Ooh, but Aurora starting to suffer as well. They have to move forwards, and now they're in the firing line of Team Flash. It may not be enough to stop Nongshim from winning the game, though, and that seems to be what they were trying to bid for. All the while, by the way, Kamikaze is still alive, so can't discount him just yet for getting the points. It would be a very long road, though. Hyunbin and So Easy now find the final blow, struck to the heart of Aurora, who draw their game out on 113. They will fall to no Smash. Not here, not now. We're gonna see a game 3, folks. Get excited, get hyped, because now's the chance for a lot of these teams to start pushing their way up the leaderboards. How far can you go here, though? I mean, for Team Flash, this is a golden opportunity to jump up placement points, to jump up, get a little bit more cash under the belt, be a higher ranking finisher. They have all 4 of their players alive. They're looking pretty chill. As I said before, S2G do have the slimmest of opportunities. For me, it's Kamikaze needing to grab some third-party points off a fight that Team Flash has. Yeah, he's just trying to sneak it enough points to sneak his team into that Smash zone. Any point matters, though. I really got to give some major love, though, to Aura. Look at them. 13 eliminations. This team is trying to make a comeback of a lifetime, and this is how you do it. Got to get this win, though. Anything less is not going to be enough for them to make that race to the top. I mean, even when you do get it, it's still
a long, long road for them to try and find. For Kamikaze, he needs to profit 6 Yeah, more points on this game match. joining Those can come lagda from either increasing placements or getting eliminations to join that smash point bubble. But this next circle comes in, it's not going to have him in it. It does push Flash into, into a few of their locations, but it looks like they've spotted him. Kamikaze is there, they roll up, he's put down, and no longer do we have that storyline. The battle at the bottom of the tables rings true for the final 4 here. This is huge. Everyone's trying to move up their placement here. Like again, this is a massive prize pool. Every single placement up is big money in the bank. Aura, though, this is the game of a lifetime for them. This is one of those opportunities that gets your squad excited, gets them pumped up to finally start putting everything on the line. You can see Team Flash, though, they're in the mix here. Aura trying to push from the edge of the circle. They're going to start throwing all their util onto Vitality. That's the threat. If they can hold that rock and secure that position, this could be a solid chicken dinner for them. Absolutely. Big chance. As the nades keep on going forwards. 13 eliminations on side, and they want to add 2 more to the tally. Sky and Jiggle into the fight. Razak goes down first, immediately putting him out of business, out of action. Sky looks for more as well, and they turn it on. It's just too hot. Aura are on fire. 15 eliminations, but that nade looks dangerous. Gotta watch out. That one hurt, and now it's up to Sky. All by himself. Aula looking to stop the insanity that Aura has put on display here. Here they come. Yasser moving up close and personal to be able to secure this high ground. Team Flash on the other end, putting some suppressive fire onto them as well. Aura just trying to lick their wounds, trying to find their way, but it ain't gonna be enough. That is Aura down to 1 single player. I like Team Flash's proactivity here. They didn't waste time. They didn't hide in the buildings. They stretched their legs and moved out towards this north side to get control of the zone. This is what we've wanted to see from a lot of our teams, and I'm glad to see it now, even if it is potentially a little bit too little too late. For them, they've got 10 eliminations here, so all right, they're on 15, but there is a real chance they can catch up. A Sky is still cooking an aid. I'm gonna have to worry. Okay, he puts it back. Back to the shotgun shell. He's not moving a muscle here, and I don't think Alula realizes that he's even still there. They have to know there could be a threat in this area. But Quick is just hopping in the vehicle to get a little bit of extra third-person perspective and get some sight lines. Plus, he's protected in there. He has no idea. They have no idea he's there. Hello! He missed the shots, though. Sky gets the knock, but gets shot in the back. As Team Flash shuts down Aura's run. Pretty mighty flub there on the shotgun. Hot over the bonnet there. Probably didn't realize, but Quick didn't know he was there and thought, oh, well, I'm going to have to go for the fight. He's going to stand up for it, right? Right? Not to be. A cheeky little pick onto Zeus. Bose is quite low. Over the top, though, Tops and Win look to put pressure onto Quick. And remember, Alula only really have 2 players to play around with here. Claws and Yasser looking to navigate. Closer to the middle for Yasser, but Flash can regroup on 3. Claws has a lot to face down on his lonesome here on this angle. Needs a big nade, needs to find a knock pretty immediately, and is already taken down. Win steps through with the AUG, puts that one to bed. And a second volley of fire over the top of the rock sees Team Flash to the chicken dinner. I'll take that one, that's for sure. Over 20 points in that game. A massive one for them. I guarantee you, their coaches, everybody was telling him, right, hey, this is what you need to do if you want to make a run of it. And this is a start, right? This is a start. It's still a long road ahead, but now the road is there. You know what I'm saying? It had to happen in this game, and they got it done. That's what you need to do. When that clock strikes, you've got to hear the call and step up to that plate. Unfortunate that Nongshim and E-Arena couldn't really get much further into that one. That Aurora hold on the eastern side, it stopped them really from being able to break out in the way that they wanted to. Flash were an incredible suppressive force over the course of a lot of that final set of circles. So really, really great stuff from them. But yeah, it could have been very, very different if Aurora had played that slightly in a different fashion. For sure. I mean, fortunate for them, super fortunate for the rest of this lobby as we're going to go into one more game for sure. Now, as far as teams that are still within that Smash Point threshold, I believe it's still going to be the duo, right? It's still going to be the 2 teams. But another opportunity in this next game, right? For more squads to be able to push their way on up.
as we're going to take a look at the replay here. Team Flash, great job of being able to finish this game strong. Win especially, just boom, putting the nail in the coffin. That's how you do it. I just didn't want to mess about, you know. He knew Let's this get to the game's next over. game. Come on. Let's go next. Keep the pace, because they do want to keep up that pressure. If you're on a run, now is the time to hold on to that momentum. There is no more runway that you need to cover to take off on this. It is just today. There is nothing that you want to leave out on Erangel and let it go to Miramar, because you may not reach it. No one might. Just look at these players' faces. Straight intensity. These guys are locked in right now. They know exactly what they need to do in order to make this happen. And it's going to be on the back of a ton of eliminations and securing those wins, all while stopping E-Arena and Nonstop Red Force, who had a great pincer on the end of that circle there. But, you know, I think teams now especially have understood just how threatening this smash rolling is. Yeah. And I think they're going to do extra and beyond to make sure that they can stop those two squads. Absolutely. I mean, there is so much pressure on so many teams. I think that, again, I'm gonna go back to my old favorite hobby, it seems, this game of giving a little bit of hate over to Ralph, because Nick McGalaxy, that 2-2 split did not work. It was really kind of catastrophic. And hey, you know what? The position that they went to, that they tried to go for on that east side, was where Team Flash won from. So could have been different. But we're gonna head down to the stage. Kalaris has a little interview for us for some inside information. Yes, I do. Thank you very much. Here with Nonstop Red Force, Hyunbin once again to get some insights on what's gone on so far. Let's talk about the Erangel that just actually happened. You guys find yourself in mini-mill to power, but then the circles shift away from you. You sent it north instead of any other direction. Talk to me about that choice. Do you think it was the right one, or do you think there was another path you could have taken? 일단 현빈 선수 첫 번째 질문은 일단 아까 에란겔 경기부터 일단 얘기를 해볼게요. 에란겔 경기 때 사실 밀타 파워 쪽의 공장을 이용하셨다가 이제 자기장이 튀자마자 이제 바로 북쪽으로 지르셨는데 사실 그쪽이 좀 다른 선택권이 없어서 좀 강제가 된 건지 아니면 좀 그게 좀 가능성이 있다고 보신 건지 좀 궁금하네요. 일단 저희 자리에서 치킨 갖고 오기는 좀 많이 힘들었던 것 같고, 저희가 오로라 한 명을 잘라나왔고 그 골에서 오로라 일단 한 팀 먹고부터 할 생각이긴 했습니다. Yeah, we already knew that that shift was actually really tough for us. So what we thought was Aurora was actually there, and we got a one knock of Aurora player. So I think we should have started with getting out, knocking out Aurora, and then we find our footing on the ground inside that circle. So the Rondo game, you just won another one here. You look always great in urban endings, does Nonstop Red Force. So talk to me about that urban ending. What were your biggest concerns? You had great roof control. So what was your guys' perspective on that finish? 또 론도판에서는 또 치킨을 드셨는데 사실 시가전에서 정말 좋은 모습을 보여주시는 것 같습니다. 그래서 그 시가전에서 특히나 이제 지붕을 통한 영역 컨트롤에 굉장히 또 일가견이 있으신 것 같은데 좀 그 점에 있어서 좀 어떤 점을 좀 중점으로 플레이를 했었는지 궁금합니다. 그 론도 플레이 때 시가전 플레이 때 어떤 플레이를 중점으로 두셨는지. 일단 저희 자리가 외곽이었고 저 시가 쪽 한쪽이 비었어 갖고 들어가서 서클 받다 보니까 그냥 좀 잘 먹은 것 같아요. Well, honestly, I think the inside of the city play was actually well forced because we were outside of the circle. But that being said, I think we were kind of lucky because we tried to gain the footing because of actually one of the places are actually empty. So we just find our footing there, and then we just took a control of the roof, and then we maintained good condition and intel. All right, well, thank you very much for joining me, Hyunbin, here once again. That's Nonstop Red Force currently in position on the smash rule as we continue the games here at PMWC.
फायदा नहीं है। Nonstop Red Force and E Arena not being able to close it out, so we're gonna keep going. One more match in this one. Team Flash being able to come off with the win there after not really being able to मरी do जा रहे हैं, much इस्लामाबाद जा रहे for हैं, the whole कॉम्पीट रहने tournament. दसिए से Great बैक performance out of स्क्रीन this पर squad, but don't forget, for यार everybody किए that's यार currently here at EWC, make sure you guys check out the fan experience. Go look at the awesome stuff between PUBG Mobile and Naruto. Try out Yeah, Battle same, yeah. Royale, why not? Because we've been able to try it and it's quite fun. And I played it way too much. I had to stop so I could actually come here and break down what's been going on in the finals, and also check out Spider-Man. Maybe you'll get a chance to meet him and greet him. About this performance from Team Flash Max, we finally got a chance to see them perform. It's been looking a bit dicey recently, unfortunately, but no, really good hold on the northern side, right? Able to get rid of a lot of threats over in that position. Definitely a team that has been very silent, but before this game, of 63 points. If my count is right, they've just got about a third of the points they've made so far up until now, out of all of their games in a single chicken dinner, 23 points. So that's going to get them way higher up in the middle rankings. And let's keep in mind, even if you're not number 1-7, the prize pool distribution is getting way higher on that first half of the leaderboards. It is. For some of these teams that might be too far away from that threshold of the Smash rule, they're going to be pushing up because there is that prize pool at stake. $3 million that we're going to be giving out. And Horror Esports, I think $1 million. the aggressiveness. This is what we've been expecting out of Horror Esports, the aggressiveness. I mean, it's a real shame we just didn't see this from the get-go, right? From day one throughout to today, because they could have been in a very different position on those leaderboards than we see them right now. But also, just to mention very quickly, as we look at the team stats here for Sleepy and Sky actually doing some mega work. They did have some really good nays. They were pushing very well. They are the team that got rid of E-Arena in the mid-phase of that game, taking shots onto Nungshin there. So, you know, very, very proactive, really looking around them and trying to get as many elims as possible. I think we can call that farming. They were farming a little bit. They definitely were. But actually, the key thing we have to keep in mind for Horror here is they are the team that eliminated E-Arena, which is a team, if you get that elimination, one of the plays, you're like, that's E-Arena. That's E-Arena right there. Push them. And then they did it. And they delay the tournament just a little bit more, which really is going to make this event so much more interesting because so many teams can enter the Smash. $2 million. Crazy it is that the top of the leaderboards seem to fall and these mid teams sort of have that glimpse of hope and opportunity. But that's why we love it here for PUBG Mobile with the Smash rule, especially. Now, I do want to sort of draw your attention to S2G, a team that is quite incredibly close to that Smash rule, but if we talk about the first game, we didn't really get to chat with them sort of in that first mid-section. They had a nice recovery, a little bit of a hot drop, couldn't capitalize on as many eliminations as they wanted to. The roughest shift for them, they had like that kind of open terrain, they couldn't really move in. And then they passed. And then this game, again, it kind of team so incredibly early after eliminations. You saw Kamikaze there on the north side. इसने उड़ाया उसको एनएस को Falling short. Look how incredibly close S2G are. 116. उसको तो उड़ाया था मैं Just 6 points away from being able to enter the Smash zone. Aurora Gaming as well, currently 9 points away. And teams that were going to be looking to be able to close that gap, especially when we saw E-Arena go. टोटल बात सुनना है, टोटल 2 मिलियन है. उस टीम को मिलेगा 5 लाख, सेकंड को 2.5 लाख, तीसरे को 1.5 लाख, फोर्थ को 1,05,000, उसको 85,000, सिक्स को 70, सेवंथ को 67,500. Yeah, the exam full, yes. In the zone, tires get popped. Team Flash knocked out Tizzy. It's up to the 2 players from Nongshim to end this tournament. XZY trying to regroup now on the back. The reloads are coming through and he may be able to sneak his way into the dip. And Aurora now have Nongshim set before them. बड़ा गंदा फंसी है यार ये तो. Charge in headlong, nades first. Joel Reefus. And Top wants this retribution. Draw this game to a close without a Smash point victory. Aurora throwing an absolute bombardment onto Nongshim Red Force. They know they're the threat. They're going to use every single piece of utility they have to finish this team off once and for all.
not able to find those other confirmations. Vehicles are getting moved out the way, though. That's the coverage that Nongshim Red Force desperately need. Looks like they're playing a little game of ping pong with that car. Ooh, but Aurora starting to suffer as well. They have to move forwards, and now they're in the firing line of Team Flash. It may well be enough to stop Nongshim from winning the game, though, and that seems to be what they were trying to bid for. All the while, by the way, Kamikaze is still alive, so can't discount him just yet for getting the points that he may need. It would be a very long road, though. Hyunbin and So Easy now find the final blow. To the heart of Aurora, who draw their game out on 113. They will fall to no smash. Not here, not now. We're gonna see a game 3, folks. Get excited, get hyped, because now's the chance for a lot of these teams to start pushing their way up the leaderboard. It's 2G, party point. Get enough points against some. Gotta get this win. Wonder was not going to give them the win. And you know what? It's showcased by Al-Ula taking second place from the exact position that we're like, Nongshim, go that way. Al-Ula end up going that way, get that second place, and I think if it had been Nongshim with the kind of momentum that they had off the win, they would have won there. It is genuinely not even game throwing, it's almost championship throwing in game 2, right? Because they could have won it, they could have ended it and dusted, and they just didn't. They went for a very different play. Yeah, especially because of that rotation. If you push Al-Ula, let's say, only Al-Ula is going to fight you, right? It's literally team versus team. Literally. That wide Eastern rotate, Aurora's looking your way, Team Flash is looking your way, Al-Ula's also looking your way. You're just making it harder for yourself. And Nongshim Red Force have some of the best rotation sometimes, and then they pull stuff like that. I'm very confused. They're a very confusing team, entertaining to watch, but confusing. I also want to sort of point out, this is just kind of across battle royales in general, sometimes you only have that one opportunity, and when you miss it, it is now 10 times harder to get back to that same position. You do not get these chances often. And like you said, Neptro, they didn't make that space, they didn't make that play well, so it will be a little bit more challenging now. And with Nongshim Red Force, especially in that performance, right? I fully agree with you guys. They decided to go completely wrong way, being within nade range of Aurora as well. They ended up out-surviving Aurora. One thing though for this team is that when we've seen it in the past, you were kind of telling me this too, Neptura, especially a PMMI. Once they hit the smash zone, this team is so scary because they know exactly what they're playing for, which is just to win, right? Yes, they can get some points. And we kind of saw this here being super passive, the team just waiting for the right time. And I think maybe that's what could have hurt them there. They was just looking for something passive. They weren't looking for an actual fight, and that's why they decided to go with that rotation. You know what? I 100% agree with you there, Seven, because, they are so scary. They are so patient. And we saw that them lining up on Milta Power there, lining up on that wall, going, okay, what's the next play? They didn't look scared. They weren't going too quickly. They were just being very patient. They were sitting and going, okay, what are we going to be doing next? And then they make the most harebrained, like, under pressure play, it felt like, right? Another team I would have expected that from. Not from Nongshim, not with the presence of mind they seem to have while in the smash point. They are not a team that falls under pressure, and it felt like they just did in that moment, so very, very odd. Next game, though, still that chance. No one's quite caught up to that smash zone, so really EA still the only competitor for them right now. Game 3, we can do this. I'm going to pivot the topic again. Sorry, I'm all over the place. There's so much to talk about right now, but I want to talk about actually the MVP race. Which is actually, we could have a dark situation on our hands, which is we saw Eren being top damage dealer, he had a ton of eliminations, and they're currently at the very bottom of the first page. We could have a situation where they're nowhere near winning the tournament, and a player on Ulf could actually become your PMWC 2026 MVP. Got to be careful there because he is in 4th position, but it's Hyunbin, it's Tizzy dominating here for Nongshim Red Force. It is, and Hora with that performance that we just saw there, Sleepy being able to put up the numbers. Eren, you were talking about it as well, but we have a lot of fans here in the arena. We got 4 tries, we got a bunch more over there from Godlike. Let's see what Barney's currently up to. Ladies and gentlemen, we've said it time and time again that we wouldn't be here if it wasn't for the fans. We've got so many around the arena, so before we dive into our 3rd map of the day, it is time to check in with them. And so, Furia, Godlike, make some noise! Kilaris, who have we got with you, buddy? Yeah, that's all well and good, but I've got Nigma Galaxy. Make some noise! Thunderous applause for Nigma Galaxy! What have you got going on, Barney? Lottie, what have you got? Chance, Barney, you're not ready because I'm
मेरी आवाज टीम पे आने रही हूँ तेरी आवाज टीम पे आने रही मेरी आवाज सही है उससे स्ट्रीम तू डिस्कॉर्ड की आवाज तेरा मेनू ज्यादा उतनी वहां पे रखना ना इधर डिस्कॉर्ड वाली जो इनपुट है ना उसको कम कर दे थोड़ा कर दिया मैंने काम छोड़ो चल सही है तो इधर और तब से पता लगे मेरी आवाज में जा रही है नहीं जा रही थी अभी काम करवाइए तेरी मैं अब ठीक है ना बस स्ट्रीम में जाके देख डिस्कॉर्ड को छोड़ दू स्ट्रीम पे बस सही आवाज आ रही वही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइव पे करना लाइव पे मतलब आनी चाहिए और बढ़ा ले हाँ सही है तेरी अब सही है ना दोनों एंगल लगने लगा आगे तो क्या ये बीच बीच में गायब हो जाता है मैं जरा ये जल्दी पास चला गया प्लेबैक स्पीड जरा बढ़ाओ लाइव पे करने में पीछे कर देना इसको इसका पैनल पीछे कर दो फिर लाइव चला जाएगा बस ठीक है हो गया खुद ही सही हो जाएगा खुद यार लोडिंग अच्छा हो गया सामने कैमरा लगा हुआ है from EWC. ये ओए बाबा चिट्टे कपड़े क्यों पाए Don't doubt this game will be anything different. We're back on Erangel, playing path established. Last match, a little bit difficult, honestly. I don't blame a lot of our teams for struggling slightly there. Logi. Very, very southern playing path to start things off. Awkward drop spots, awkward Japan rotates, hai, quick switch out multi-base towards the hai. eastern side. Not an easy game to confirm a chicken dinner on. This time around, really, really gentle playing path, straight across the center. No one's complaining. Everyone's had a lovely in-flight meal. And we are ready to get going again. Things spread across the entirety of the map. So a lot of room to rotate, Jackie, but where's the circle? Well, if history is anything to go by with some of the circles we've had here this event, it might be something a little bit spicy for this one. Military base. Might just be. Fair bit of Sosnovka pulled into play here down towards the south side. We got plenty of water in play. Teams have to start getting their feet wet into this one to make it happen. Those bridge crossings, absolutely diabolical. Aurora, also tough decisions. S2G, bit of a menace team to run into on that eastern side, but Four Thrives have been consistently oppressive over towards the west. So hard decisions need to be made for this squad. They're getting vehicles, likely will loop down towards the south side of the map. They've been praying for a southwest shift on this one. Over towards farm. Nonstop Red Force will get moving. Planting those seeds of destiny. Hopefully get themselves another chicken dinner today. E-Arena far out over towards the northwest side, South George. Long distance on this one. And of course, for those of you at home that don't want to forget the event, make sure you get stuck in with that Naruto in-game event that's been going on. Pick up that awesome Ninetales Fury org and try and make plays like some of the best we've seen over the tournament. One of the best right here on our screens in Mormon. For E-Arena, he has been the man. Seriously good stuff from him. So many clutch plays, so many moments where it felt dire and Mormon was able to pull it back for the squad. Looking to do the same here in the final day. They've already achieved the smash ruling. As we said earlier on the desk, the only two teams to currently do it, but do think that that will change after match 3 if we don't end it all here and now. Right now you have that serene sense for E-Arena as well as Nonstop Red Force, and there is only one other squad in the lobby that could beat you to the punch. I showed you the guy flash the kahan बैठ गई है. I do think, mate, with our S2G have looked, if you could come alive here, get a bit of a big boost off this game.
they've still got a chance to be a dark horse, to be able to upset in this lobby. And I think we saw some of that talent yesterday when they were fighting under so much pressure as well. In disadvantaged situations from distance, Hamzy G, he was popping off. There's a lot they can do, bro. You know, we touched on Kamikaze an awful lot over the event, but I think it's that duo that brings so much firepower. We'll see what they got this time. Hamzy as well as Kamikaze looking great. And for S2G, the routine has put up quite a lot of chicken dinners so far, actually. I think they're currently on 3. Looking to break that record, though I think it will be difficult today to do that, since get up towards 5, and by the time they get to 5, they should have also just won at that point. That's a smash. So possibilities of broken records ruined by the format for them. But I do think they would be happy with the win, regardless. Yeah, I don't think it'll bother them too much, right? Yeah, so for S2G, certainly a possibility here. Only 6 points on this game that's needed for them. For Aurora, we are looking towards 9. Enigma Galaxy is going to have to be a bigger match. 22 points on that one, which is almost certainly going to be a chicken dinner. Yeah, a lot of teams looking to breach that smash ruling as we come into match 3, which is where it always gets stressful. Hot Juice, a little documentary style, earlier on today was saying that he'd love to see 6 teams towards that final match, all vying out for the chicken dinner. Has felt like a lot of times internationals do go to that 6th match no matter what, and even EMMI. For Nongshim Red Force, oh my god, he's alive. For Nongshim Red Force, he did go to match 6 when they got that smash. Satan immediately peeling off there for Enigma Galaxy, but they are in close contention with 4 Thrives, who are exiting from Ferry Pier and Yellows. Four Thrives, they've been loving these fights versus Enigma the entire event. Always able to catch them on their egress. I was just as surprised as you were. He actually got out from that one. But Lord not lucky enough to bypass either. That back and forth conversation between those two teams continues even this far into the event. Emre running down Lord to get that confirmation off. Yeah, now that idea of getting the chicken dinner and getting into smash ruling feels a little further away. Prize will aggress over towards Ida. Should hit them towards the 100 now, so they've also hit the century on this game. Getting ever closer to that count. Nongshim Red Force was able to make a fairly good rotation towards the central position. They like to play around this area. They are put in with S2G though. Slightly scary spot to be working with. Very central. Still only here in zone 1. Anything can happen as long as they're set up. Position to move from should be okay. Ulf finds S-Power. There is a clapback from Admino, who immediately will flush out Scarface. So full-on engagement here between Ulf as well as Godlike. Already big shots being connected. And it's wiped up so quickly. Ulf withstand the pressure. They do lose one player, but they can get Eren back up, and that's a key piece of the puzzle for them. Keep him in play, reset with the meds, and grab the extra loot. For Eren, what a run it's been for him during this tournament. Max was highlighting him on the desk of how much he was able to really prove himself here at this event, despite having some awkward moments, honestly. Crash into gas station, which went terribly wrong, but even then he is putting up numbers. OG do take a knock there to Tiamba, who have been sadly very quiet after day 1. The majority of the points earned there, if they were able to replicate anything like that day 1, day 2, or day 3, they would have won this tournament by a mile. Sadly, that's just not the case. Trying to get back into the mix of it now, though, it's Milu. So let's look for these nades. Maru on about half HP there. AKOP in the back line. Ooh, nice arc from Milu. Milu the madman, when he's feeling himself, he can do so much damage on a battleground. He's got back up from the boys. If they can get out of this one cleanly,
Maybe they can at least try and ruin some of the runs for the other squads above them. Milu keeps it going to get that flush as well, so that will remove Aru. Hard cut him out. Blue coming in to make it a bit more suffocating between these two sides. Quite a few players already expended here from Tiamba as well as OG. We're right in zone 2 now. Blue starts to tickle a fair bit. QZZ gets a bit panicked there. Will drop a couple of shots through and then immediately ascend in Milu. He's just going to prime the nade. That's a nice one from him. Good patience. Lets it go through. Is he going to pick this onto AKOP? It's me. Does not care in the slightest. Wow, wow. Oh, yeah. And they're going to bounce around, make sure they clean up on that one. Trying to snatch away some of the earnings from it. Oh, yeah. Fire. Friendly fire. Denies the point. He's through Milu. I think he was for sure. Tiamba lucky to have him. Great to see him back on the team again. Some subs came through yesterday. Shallow in, Milu out, but looks like he is ready to play today. Gameplay looks clean. For Nongshim Red Force, hard rotate over towards that north side. We've got Dip in play, but not fully. At least we did confirm away from the south side. A lot of the water got cut out immediately. A hard shift over towards the northwest, and an easy rotate now for Tiamba to actually get in. There's Catch popping up in the Elim feed. Couple shots over towards the Furia squad. Furia that have been a little bit more shaky today in some of the battles we've seen. Hasn't been as cutthroat. See if that one results in a bit of a flush. Seems like they have grabbed Igor's back up for now, so he'll live on. Nongshim just ahead of the Aurora crew that have made their rotation over the bridge left of Novka. Oh, are they going in for this? Aurora might be looking just to swing on the coastal side, deny as much sidelines as possible. Top though, playing an anchor backstop here, taking some good shots. There is another play here alongside him. Hamzi G at distance, also watching, so this is a dangerous rotate here for Aurora, because even if they get down towards the beachhead, S2G might have a sideline with Hamzi, and we know just how good Hamzi is at distance. An eagle eye on him. Nades go through, but so easy, brushes them off. Dirt off the shoulder for so easy. Can't keep this man down right now. 3 of them invested in draining some of the early offensive utility, but it looks like they've still got a good supply, at least on dock, with 5 in the backpack. Meanwhile, Arena pushing back up over towards Ulf. Ketch trying to catch an escape plan. Dives behind the driving, but it's not quick enough as Joker will adjust his crosshair and find that one on the exit. Mormon takes a knock back over. Bit of a disjointed Irish exit there from Ulf. Alula under pressure though, as S2G just flies in over towards the garages. R3B in the corner, and S2G cleans it up. Not a single player lost. Should be able to get that res. Nongshim Red Force in the meantime, after seeing those players leaving, did get that leapfrog on, so they get a little bit further into the circle here. Milta, not the main feature. If we go down towards the southeast, we know just how good Nongshim can be in an urban finish. Thriving in the concrete jungles. So no overcommit. Like you touched on, Aurora just controlling some of the rotation paths with the coast firmly under their foot. Map geometry favoring them from this position. They opt to go for the 2-2 split. Rufus and Top further over near the area we see Vitality starting to approach upon. Whilst Joel and Doc, 2 players with very heavy hands, if you do want to challenge them in a raw duel, play off each other. It's actually a possibility right now with S2G leaving. I don't know if Aurora is able to spot that. They certainly don't see Hamzi G continuing to peak the angle, but now they have free capability to actually make an eastern ramp if they want.
Right now they're holding two fairly decent locations in terms of vision onto the map, but they are right on the edge, so eventually they'll have to move. I think likely what's going to happen is they'll wait for Zone 4, make a decision from there how they want to rotate in. But there's a lot of free space over towards the eastern side, and already Doc is going to scout it. Yeah, that's exactly what I thought was going to happen. Get a little bit further up, realize that actually this space is kind of open at the moment for us to get a little bit more of an eye in towards the circle. That's the kind of premium real estate that man like Doc's going to instantly sniff out and be confident enough to rep himself to take control of. Let's see how this pans out long term for Aurora. Circle though. We'll define a lot of how this works, and we are down towards Milta. Nongshim might be thinking about making a move right now, and they're instantaneous. This is way better than last game. Last game felt late on those rotates. It felt like they were still making decisions. This time they are much quicker with it. Out to the outside edge, not confirmed towards Milta yet. Still giving them capability to move out towards the field should this move towards the west. But now they're going to have a swivel on towards all the teams around them. Aurora recalling Reefus back towards the squad as teams start to surge towards Milta. Timing on this is going to be so dangerously tight though. They all caught vision on one another. Ida have already entered close. Three-man split, Solo's playing in a line there for Aurora with the wrap in late. Rufus seeing the back line of Vitality knows he's got to go down towards the coast and then assist the team. Tiamba getting shots off as well. That's off. Oh, you're going to be eating shrapnel on this one. Wide arc down towards the roadside. Solus and Aaron here by the toll gates. It's always an awkward spot, very nadeable. Couple of positions you could play around inside the toll booth itself to try and dodge those close quarters ordnance. Oh my god, there's mollies everywhere. Aaron can barely move. He has to find an opening with this nade, but for Ulf it's looking like it's more and more over. XZY goes down to a nade from Reefus. Doesn't push it though. Should be resible. That's two players knocked as well. We saw Vitality getting the first domino falling onto Nonshin, then the assist coming in from Aurora. The Nonshin Smash squad might have come on stock early. It's far. It's so hard. He kind of needs to get over the top and try and pick him up, but when the vehicle's currently slammed, it's really difficult to do. Just holds the rest. He was so low. Tizzy perched himself on the rubble of the wall. Oh, that was close, Jackie. I think we just saw Federales get a single tap onto Hyunbin as well. He was looking for the drop with the smoke, wanted to try and get down there and assist, took a single bullet, had to hit the deck again. Thankfully, Smoke's out, limited cover as well with the walls, so the geometry playing in their favor. You can go for another res. They might be able to recover it cleanly. I think they won't be recovering those. All this utility that they just spent getting those players back up again. How many smoke launchers do they still have left? Vexy finds Tizzy again. Nongshim under mad pressure at the moment between two separate squads, both looking towards them. Just have to hold on for the time being. Stop peeking, honestly, but I feel like they realize they need to keep these teams on the outside at bay. Irina, though, down in the blink of an eye versus Tiamba. Another team on Smash ruling out, and Tiamba survives as for Just. Eagle inside. As always, the lurker looking to play medic for the rest of the squad here. He might be the eagle, but there is vultures swarming the skies around him. Realizing there's been a lot of damage done here. It's a risky pickup with the position he's in. Luckily, he's got some cover from the vehicles to try and save his mates. That's Aura, though, with Jiggle getting one of them confirmed off the back of the damage that was done. So they do go down to at best a three-man squad post this pickup. A lot of teams need to move. A lot of teams that actually fully confirmed though towards Milta now feeling a little bad about this one, which is exactly why you see Aurora playing on this edge down towards the south side and Nongshim not fully moving in. So 4 Thrives, they've got to extricate themselves. Flash have also got to pull themselves out of this one. S2G a little bit safer where they play around the warehouses. They can move up over towards that top side. Over the whole booth later. But it's Aura right now who actually own the majority of the space on the northern edge. 4 Thrives opening up over towards Aurora as they move.
That backline in is good to at least take some of the heat off. Force attention turned back onto 4 Thrives from Aurora. Vitality have just been really running interference from this angle as well. If there's a peek up from Hyunbin, they're harassing with shots. Back over onto the coast of Aurora, it's punishing as well. The Nongshim Red Force, they know the shots came from Vitality earlier, so this is sort of the team they need to deal with first. The one thing I really worry about for Nongshim, though, is how exposed the vehicles have been this entire time. You got to imagine that wheels are blown out, if not vehicles fully exploded. They do have to move further in towards the circle, likely will be on foot, unless they can find some kind of vehicle in the near future. Vitality's going to go for a mad rotate over towards the northwest side. They hear the fighting, they notice that nigmagalaxy's down. This is a good opportunity to go for. Vexy helping with the backlines. Really like this push from Vitality. Ralph on an island, last man left alive and not breathing for much longer as Razak will find that adjustment back onto Nigma, so they go down. Vexy's been good as well, providing some overwatch for this squad. Showing up when they needed him. Fury are on the move close by, shots from either side, so a lot of information garnered towards them. They advance further. Silence and Co pushing up with the vehicles, going to peek over the top of the rocks. Tiamba in the distance, nades being thrown onto Vitality, a backline potential. Igor goes in, big sprays, assisted by Silence. 4 Thrives taking some damage as well, the pepper back onto them. Fury's going to move in on this, like you say. Igor's already on that front line. The rest of the team all stood alongside him now. And Vitality find themselves in a very horrendous position. Nades from Tiamba going a little bit wide here, trying to angle these through the smoke. That one should be on target. Easy cleanup. Tiamba grab themselves 10, 11 eliminations on this match so far. Much more reminiscent of the past. Already on Furia playing with that confidence and aggression. We know they've got as 4 Thrives buckle under the pressure. Furia shutting them down in the close range combat. And Nongshim, after turtling for so long, finally knowing Vitality had been taken out of the picture, they can make a move. They're just wrapping around to where Aurora were. This is interesting, trying to get rid of Aurora, actually. Only one player here in Reefer, potentially they've noticed that. There's actually a massive amount of space on this western side that they could clear. Tiamba's a 3-man, Furia's down to 2. Circle moves up that way, leaving Tiamba with one of the few remaining positions, and we are on toll booth. Oh my god, what a circle to end on. Ooh, deep nades. Reefer's casting that one out. Back nades as he advances to try and create a little bit of space between the teams. Distant shots coming in from Tiamba. He's got to hit the deck, but that's not the only squad you got to worry about. Lost from S2G, gets a sight line, and goodbye Reefus. The only thing is just like kind of flashbacks to last game where there is a massive capability of moving west on this one for Nongshim and clearing up towards that north side, having all that space. You'd imagine that they saw the amount of teams that moved into Milta. They are just charging headlong into danger here, where there is so much more room to play on the northwest side. Guys, you don't need elims. You need a chicken. And they might get barbecued if they take too much time on this one. Joel was cooking a molly. XCY so paranoid about the peak from the top side with Tiamba. And with Furia not needing to force the issue amongst them, they've got a crystal clear line of sight down onto the rotate path for Nongshim. It's so uncomfortable. Come back, lads. Just come back off this angle. We don't need to play this anymore. You can wrap back over towards. So easy. 2 down. What is this? It just... It makes little sense. I mean, they'd set themselves up wonderfully the entire time for this western exit. And as soon as the circle moves away from Milta, what do we do? Push into Milta? Yeah. The panic's there. Paralysis by analysis. The zone takes away one of the members, and we're down to just a duo. Aurora caught on their exit as Lost will be able to continue playing powerfully off this angle. XZY thankfully given a few moments of respite as he runs to try and find any cover at all. Kamikaze from S2G, we talked from the start of the game. They have just about hit that 122 now. So they have hit that smash ruling going towards that next match.
Another team steps up to the plate. They've done enough here, even if they go down. Looking to take down Ida regardless. Hams, ooh, what a shot! Reactions coming through clutch there, but Kamikaze, as always, the backbone in the team. Standing straight and keeping S2G in a position to recover from this. Quick reactions from Ida. With a shutdown play that will let S2G fight on for another day. Flash though getting eaten alive by Hora. Wrapping down the ridge, the nades bouncing in. Tops is down. Oh, bhai, maar do isko NS ko. Kamikaze scanning to see what more points they can steal. Hora on for a big game here, actually, Jackie. Looking to push themselves further in the rankings. Only 2 eliminations so far, but so much more to grab here as most teams are bruised and bleeding coming into these final zones. Tiamba also having a good time of it. Nade's going over the top here from Nonstop. Red Force rolling down, and we are directly on top of Toll Booth now. That's okay falling. XZY getting the tags off. They've been under constant pressure the entire time. It's not clean. It's awkward. Not even a helmet on so easy here anymore. Mate, you're playing with a bare minimum. Concessions had to be made, but a nade could be coming their way. Lost with 2 left in the back pocket. The first one thrown in looks good for the bounce. Double bouncer. XZY is down. Comes to the end of his line there. Nongshim is floundering at the moment. Confusing moves. Win though from the back lines will get the backstab, but immediately spotted out by Lost here. S2G absolutely have done enough, but they're looking to push further into this game, as is so easy. They're trying to send a message with this one. It's not just about what they needed to get into Smash, they want to prove that they can be the big dogs in the lobby. Response back over them. Hamza G eating the nade from Hora as Hora are lighting up the sky. Explosion after explosion on top of the Turkish team. They are stuck on the ridge and cannot advance. Backline attack from Tiamba from way over the other side. And Tiamba keeping the pressure on. Trying to get that pick up in. Lost with limited space to play off. In comes the nade. Oh! Sky makes it work and S2G go down. S2G blown sky high. Let me introduce you to the biggest dog in the lobby. Hora on the northeast side. So easy. Barely a hope in this match, but still hanging on. Furia dashed by the roadside, leaving just Hora, Tiamba, Nongshim Red Force in this endgame. For Nongshim, the best thing about this is that even if there isn't a smash win, this is keeping them in contention for the top spot, at least. It's going to be big for the placements. And is there a chance of some sheer shenanigans from So Easy? He's crossing his fingers, mate. This guy's got him. Has to have him here. Just the peeks over a little bit. So Easy's trying to hide his face behind the barest of pylons behind this railing. It is just not nice. Has to do something though. Oh, they've smoked him. Hang on a minute. Cheers, lads. I really needed that. He's tucked in behind it. There's no real angle from the backside as well from Tiamba, so it just depends. I mean, if Hora go for the hard force over... This is mad. Yeah, this could get cheeky quite quickly. Sleepy would have burned down as well. The vehicle. Oh, it's all going wrong. So Easy on the peacock, good for one. Tiamba assisting with a shot from the top. He's going to go first on these as well. Hora on the assist with an unreal smoke. Molly's go in, Nade's go wide, and he is out. Tiamba will clean up. Nonshin were looking to blot out the sun on that one with a surprise plays, but it's not going to happen now. And Hora solo remains with the advancement of Tian, but the nade goes over. Sky got a backpedal. Runs back to whatever cover he can find. Can he trust in his source on this one?
holding the peak, ready for the shots. Oh! Eagle gets knocked out of the Sky. QZZ with a reposition as Sky advances forward with a shotgun in his hand. Nade being cooked by Milu, and this man don't miss. Good damage. QCC follows up with a second, and Tiamba is back. What a fantastic game. The three-man inside just felt like these guys needed a little bit of confidence. And that star on the match reinvigorates whatever light died out with Milu on day 2. It is back on now and it is blaring. They started that game as they meant to proceed. The aggression was there. The despicable nade plays from Milu that always give you that gut-wrenching feeling of how does he do it. Continued from start to finish. The shots are on point. And a pathway begins to present itself. Aura's got to be mad at themselves, though. Imagine just smoking up so easy. The smoke into the tire pot on the career down the hill. Oh, but they really भाई वो कितना शॉट है, smoke अंदर चला गया. Looks so good up until that point. Covering their angles, clearing their Oh, कितना शॉट, ये smoke च बढ़ गई जाके. So easy. He was mega confused. I would have loved to seen his face in that moment. Pure shock. He's like, is that the nade moved away from him? उसको नहीं करना चाहिए, जाने देना चाहिए, smoke में बैठा है तेरे ऊपर. That's great. I didn't have one of those before, you know. No utility left, but they gave him what to be nice. Oh, and nade के संभाला उसने. Perfect timed nades. So good. There was a small part of me that thought that So Easy was going to clutch up. Small part of me. But I am glad it was Tiamba. Oh yeah, tiny percentage, but it started to get a little bit bigger with how things are going. अपनी जगह से हिल ही नहीं है, उधर ही रही है. A Tiamba win is a very exciting prospect. Such गर्मी a हो गई fun भाई. team to watch, Blank, bringing the heat in finals. OBS spot. They're just a fast-paced team, and I think what we've seen them from before is just a little bit of that sluggish gameplay, where they weren't quite able to make those plays, and they've been desperately banging on that door, but it's just been not going down. And I think Milu right there just put a foot through it, so it looks good. It looks way better now. They're pulling off those trophy yaar, check so yeah, great work to Tiamba. Really happy to see it, and it was, I think for me, it was fantastic to see these guys happy. Yeah, I think that was my favorite thing about that win. यार ये अब पता क्या सिस्टम है, मैं बताता हूँ. ओए अब पता क्या बेहतर ऑप्शन है, पता क्या है, अब ये चिकन चुकन की तरफ ना आ जाए, चुप करके ये स्किल निकाल के, हाँ जी, अब पॉइंट निकाले चुप करके, जो टॉप टीम उनको चिकन निकाल लेंगे, अपने सर्वाइवल पॉइंट्स बना के पॉइंट्स के जरिए ऊपर चले जाएंगे लास्ट मैच तक. ये इनके पास बेस्ट ऑप्शन. हाँ. We haven't rung the bell. They might have been up a good, but they have got back up again. The count did not finish. It's scary, no? Going into these final matches, we've got 3 teams at match point right now. It's S2G, E-Arena, as well as Nongshim. Nongshim's been making some crazy decisions. E-Arena, sadly, on the other hand, have just not been able to eke out those performances so far. It's felt a little bit timid from that team. S2G, though, I think this is a worrisome squad to have in that top 3, because they could just light it up at any moment now. Unless the pressure gets to them, which it seems to be the case for quite a few of our teams. Well, yeah, that's kind of the contrast we're painting there for E-Arena, right? Where it feels like you had some flash in the pan moments, but now it's come to, you just got to follow through. It's not happening, whereas S2G, we know they can strive for greatness. It feels like championship mentality is going hand in hand with their aggression, the way they're approaching these lobbies. All it takes, one big game. Could be a championship right there. But stay tuned for that. We'll find out. The narrative continues. Do not go anywhere. Human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
आ रही है भाई जब 2 मिलियन प्राइस पूल रखा हुआ उन्होंने वो तो 500 की आंदा उन्होंने कहते यार मैं जो लेके आया हूं बेस्ट है बहुत ज़बरदस्त है बहुत ज़बरदस्त चेहरा यार ये जो मैंने लगी है पैंस कोई जोड़ ही नहीं है मैं तुम्हें बताता हूँ सही बात है जो बैठा ही है ना बस चुप कर गया यार वो नुका नेस्ट वाली मेल है उसका होस्टिंग खत्म था कल शायद मुझे आधे घंटे तक मिल जाती है कल आधा घंटा इन्होंने पूरा होने दिया मैं कॉल भी की चुकी को नहीं है इन्होंने तो उन्होंने कहा मेल दे इंटरनेट मैच सपोर्ट ਵੇਖਣੇ ਨੇ यार ਉਹਦੇ ਹੌਲਮਾਰਟ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਰੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਬੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਈਬੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੌਗ ਆਊਟ ਮੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ OTP ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੇ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਐਕਸੈਸ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਸਤੇ यार की तुसी Mike band करके बोलना They definitely can't take a victory. This is a team that has already gotten 3 wins in Erangel in the finals when we're talking about S2G. If we're looking at some of the other teams looking to get to that smash zone, it's none other than Aurora. I actually thought Aurora was going to be able to make it already. They're struggling a bit today, Max. Yeah, a bit of a weird hold onto Nonstop Red Force in particular. Looking kind of weird. But by the way, I want to bring it back to S2G. They not only make it into the smash zone, they got a 9-point lead on top of E Arena, which if you do not get a smash, is going back to the OG rules, which is the most amount of points becomes the champion. So right now, S2G are loving it, but so are Tiama. Shattering dreams in this game, eliminating E Arena, eliminating the final player here at the very end for Nonstop Red Force, man. They are the reason why the tournament has not yet ended. Hora Esports back-to-back great games here out of them. And for 4th Tribes Neptura, this team, after that rondo that we saw, they're starting to struggle. They ended up the first Erangel with a big old donut, and in this one, at least they secure 4 points. I mean, at least they do. I did see that they had a really fantastic rotation around from just live stream the betting and then out of it. But yeah, 4 points is all they're gonna get for that fantastic. Grenade अच्छा था. Hello, आवाज आ रही है? You were talking about it, right, Max? Sky is fantastic with the nades today. Really, really on point. And Tiamba, I mean, यार पॉइंट छाड़ होना है ना टॉप पे आना चाहिए बस पॉइंट्स मुझे छाड़ दो ये टॉप You don't want to go up against them. Look at those sprays. Yeah. Through the smokes. There's no escaping this team. What are the sprays from QZZ? Oh my god. That was crazy stuff going out from him. I mean, he was just lasering everyone through the smokes. Incredible stuff. But at the end, Hora, another finish. Right? Sure, maybe not chicken dinner, but it's a strong back-to-back, but so easy. In that smoke, actually, that was a smoke right from Hora in the try. I thought maybe if he stays hidden, he could third-party it. But at the end, Tiamba got a nail in the coffin. That's something that I was actually hoping that So Easy was going to do. He was going to end up waiting a little bit longer, maybe use that smoke to his advantage. But Max, he didn't want to wait for that third-party option. He just wanted to take matters into their own hands. And it goes back to what we're saying with Numshim. It feels like they're being passive, but they're not quite sure when to be aggressive and when to flip that switch. They are a little bit hesitant, right? And that's the thing about the Smash ruling. Love it or hate it, teams, the mindset does change a little bit when you do have that chance of getting those chicken dinners. It is quite stressful for now. Just 2 teams, but 3 teams. S2G are going to be joining their ranks, but of course S2G got 3 chicken dinners so far in the finals, so they're looking like a team that could actually wrap it up. But looking at the rotations this game in particular, I know you in particular, Nipchira, were quite critical about their push on the western side of Milta. There were other options that maybe could have been more valuable. Absolutely. I think any... Oh, wait, hang on. Hold on. That's my clip right there. So looking at this split, so actually S2G, sorry, I have to jump into it. We're very split. Lost solo, literally in the 1v4. And even then, he's popping off, but he's also getting a bit of assistance from the teams on the other side of the road, right? His particular Kamikaze's got a fantastic angle. And there,
the backup. This is literally the play that gets them into the smash zone. Solke gonna be sending it forward. He's gonna be joined up then by Hamsiji, who can absolutely superhero style in the building, and they get 1, get 2, get 3, and the final player, and because of that they get the 4-man reset and actually get enough points to enter the smash zone. What a hero save play of the day. They don't do that, they would still not be over that 120. I think I missed that play. Thank you for that replay, because oh my goodness me. So Hamsiji is just like crashing the wall. We are not going out. They just send it. Absolutely send it. And that's what we want to see out of some teams. Being able to send it. E-Arena, one team that's currently also running into that struggle when we talk about teams struggling that are already in the smash zone lanes. नहीं वो निकल था वो बंद कर रहा था बटन था माइक बंद कर रहा I don't like I have to bring it to Tiambo लगता क्या because obviously E-Arena, you know, they had a nice little path in there, but Tiambo were actually positioned in such a great spot that they were so annoying to every team. This is Aurora. This was obviously even helping S2G in that fight. They were able to sort of gatekeep that area from E-Arena as well. And so it's unfortunate that we're seeing like E-Arena not being able to push into the position early enough because they are still sort of playing that edge. They are going to be playing that edge, but right now they need to get that win if they want to be able to win via Smash Rule. They are one of those teams curling the Smash Zone. Keep in mind, E-Arena started off the day with 112 points. They have only gotten 11 points so far after 3 matches. And 10 out of those 11 have been in Rondo. मैं तो उनके कीरो है अभी ये 2 मैच ही हैं That's where they were. In the last 2 games they've gotten 1 point. मैं तो ये करता हूँ What is happening to E-Arena? जो अभी सीन चल रहा है ना चिकन वाला काम औखा लग रहा है ये जो ऊपर टॉप पर 3 टीम्स बैठी हुई है ना इनको बंदा चिकन ना करने दे और अपनी टीम जो है ना पॉइंट्स निकाल करके टॉप पे आकर बैठ जाए ये ऑप्शन है बस हमारे पास फिलहाल तक They're still hesitant. They're still showing those things that we've been criticizing which is hesitance at times. I was hoping they were not going to doubt themselves because they're not in the smash zone, unlike what we saw in KMJ Season 1 where they were actually very stressed and almost were able to close a 50-point gap over the course of those 6 matches, but no 4 thrives. पता है फिर वैशी ने गेम खेलने ने उस तरह वैशियां खेलते हैं तो वैशियां 3 plays in the city, that was a bit of a head scratcher, right? Yeah, he was by himself. Huzaifa was by himself. I could see maybe what they're trying to do is hedge their bets, but he was in such a difficult position, and it's a shame that he actually, when they actually wrapped around outside of the town as well. Huzaifa ended up being taken out early, so that's a shame. As I'm looking at the teams here, all the way up to 11th. These teams are getting closer and closer. They're kind of giving in a bit of an advantage there since some of the teams towards the top are choking a little bit, are not being able to get that many points. For those teams on the second page, what that's going to be costing Neptura and Lays and Maxman, it's just going to be costing for all those teams to just get closer and closer. There's a lot of money at stake right now when we end up talking about some of these squads. Let's see what we have, some of the comments on social media. 40 have pure chances. One chicken for 40 and then you see the what's domination is. We want to see that domination. Khan. Yeah. Let's see if they'll be able to target NSR and EA everyone every game. But for some of the other teams, right, we're now talking about, let's go back to Hora, because Hora is stopping those teams towards the top did their job perfectly. Getting those points. The teams towards the top need to be able to find some kind of adjustment to that aggressiveness that we're seeing out of Hora. Hora need to log for the next match. Yeah. They have nothing to lose, right? They're like, okay, we have to go what happened to today. We have to initiate that comeback and leave the second page, which with the last 2 games on Erangel they've been doing. We have one more Erangel coming up, right? So maybe we can finally see a Hora chicken dinner. That will be very exciting here in the finals of PMWC. But Tiamba, I feel like they're a team that in this lobby, if they get a knock and a flush on a player this or E-Arena or Red Force and maybe now also S2G, they just fully capitalize on it. And I love it. They really are one of the few teams that are delaying this tournament until the very, very end. I mean, I sort of just want to bring your attention to Furia because they are still sort of in that 90 points there. And from that previous game, they were holding the western side. Obviously, Hora was sort of taking out the rest of S2G. They did nothing. They didn't even rotate and swing around where Hora was. Capitalize their elimination, so they're kind of not being as present as they usually are. It could be ending this next match. My prediction was in 4 matches. How many matches did you have, Neptura? 4. I was hoping for 2, so mine's it. Okay, yours is absolutely good. But let's see if it's going to be ending here in match number 4, or if we're just going to be getting a bunch more teams joining in this match zone. Will this we are about to find out. S2G joins the fray. Now 3 different squads could smash. 3 teams without
Irina. Hello. Opportunity in our final edition of Erangel at the PMWC. It is going to go a little bit further than maybe some were expecting, given how today started, getting two teams into that smash zone so early on. But that double Milter shift on both of our zones has kind of thrown a spanner in the works. I mean, for Nongshim, right? They're dropping around that area. They're getting pushed in around the bridge. It seemed like they didn't quite have the force to be able to push their way out. Right? They're still earning a lot of points in these games, though. So if it does go the full distance, they may just be able to win it out like that. That's what you got to do at the end of the day. Is you got to try to win this whole thing in as many different ways as possible. And that is going to be, you're going to smash, or you're going to end up with the most points on the leaderboards at the end of the day. And Nongshim Red Force with that double Milton circle, like you mentioned, is just putting in the work. Problem is, though, is that if we get another one, I mean, everyone's going to know by now exactly where they're at. So the focus is going to, I think, shift a little bit. But this could be the game where we get another crazy Erangel circle to finish out the PWC here at EWC live in Paris. You can see these players cracking their knuckles, getting ready to drop in one last time. On Erangel, that will be the final bill. 3 teams, as you say before. Out of those 3, I feel like for my money, given today's games, I'm favoring either S2G or Nongshim Red Force. I feel like for me, Arena today has been solid, consistent, but not a game-winning team. And I need to see a little bit more from them to be confident in their ability to fully confirm on that smash. But we've seen them do some crazy stuff, right? They have broken records on their road here, and now they're in with a chance to take that title. His 3rd performance at a global level to get a global stage title with those 2 PMWI trophies already behind him, looking for a 3rd time to take it home. Well, here comes the winner here in Paris, folks. Let's make some noise as this is the last Erangel of the tournament. Could this be the final match? That's the question we're about to find out as we're looking now at the plane. These players are locked, loaded, ready to go. And we got one going right down the middle here. In a nice diagonal coming from George all the way down to Novo. Yeah, going to give a lot of access to everywhere on the map here. Shouldn't be too many hot drops. I know we've seen a couple of those certainly earlier on. I mean, in our first Erangel, we had that hot drop over near the Gatka Fields that was a little bit questionable. Not super happy about that, but there have been performances across the board here. I think it was Ida and Tianbo actually who were on that hot drop earlier on, but still, yeah, a really tricky situation. Should be unfolding here this time around. Nobody dropping straight to North George, maybe just grabbing some vehicles and heading there later. Orangutan sending Wizgod very far up north, isolated from the rest of the roster. Potentially, again, just grabbing a vehicle, a breakout and rejoin in a moment. मैंने कहा 40 अपने पिछले टाइम के हिसाब से जिन्होंने पहले मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन I saw some people pop up in the stands after seeing that zone shift. Here we are in military. ओए बाबा ब्रिज कैंप, बाबा ब्रिज कैंप. Nongshim Red Force are going to be close to this circle as well. Man, oh man, Erangel doesn't disappoint here. We had to just touch military just one more time, huh? Hey, we got to do it. We got to do it to him. Already dropping there, obviously. Could potentially fast rotate. What we've seen as well from Nongshim Red Force is a lot of times where they've been able to transition very effectively over towards the military island. They've had 2 chicken dinners on 3 of their military island finishes, which is going to hopefully be something that they can repeat. That's what they're looking for here. So a big opportunity for Nongshim, who tends to go for the rotate of one player off the shark fin, rotate down south fairly early on circles like this, try and get a foothold on the north side of the island and work from there. That's what they're going to be looking for. But if we've seen it, the other teams have seen it too. So is anyone going to try and counter that? Yeah, you know that these teams are prepared to their gills here. They know exactly what these teams are going to do.
It's just, how are they going to execute it? That's going to be the question. Speaking of execution, if you look at the leaderboards right now, there are some teams that can still definitely win this whole tournament further down. All the way down to Team Flash, Aura, Furia, right? It's getting to the point to where if they're going to win this thing, it's going to be via Smash, right? And if they're going to Smash, they have this game, and they have one more game to get that threshold. So if you look at Flash with 92 points, that's still quite a few away to get to that 122, but they have to do it in these next 2 games because you have to hit that threshold and then win the next game. Absolutely. I mean, from 12th down, I feel like it is pretty much done and dusted for the title. Unfortunately, 74 points. Really far behind of that smash threshold. Unless everybody else in the entire lobby stops earning points and you just keep going on a points victory, maybe. But still, I'm not too sure about that one. So for 12th down, 48. Yeah, that's 48. I'm having a bad time thinking about their prospects moving on forwards, which is unfortunate. But there are opportunities for the rest of the lobby to keep that ball rolling. As you say, Flash really very much on an outside chance. I feel like anyone below 7th place is in that same boat, right? Having a really tough time, and even in 7th, 6th, and 5th to boot, it's going to be really rough. It will necessitate a chicken dinner in this match. To go across. This is that Nongshim Red Force rotate. To tune in with our teams in the Smash Zone. Nongshim Red Force now across the military island. S2G went very quickly, which makes me question how much loot they're going to have on board to try and hold this. Nongshim took a little bit longer to get across, which is going to give them some more power, some more backstop of utility of supplies, and Aurora, of course, dropping over in that military base. They're not in the Smash Zone just yet, but they are the team that is closest to it, only 7 points behind right now. E-Arena, they're still in South George. It's very likely that they're going to take a long time to go for this rotate. Yeah, super unlucky on the side of E-Arena. They've had to do the longest rotations in Erangel all day today, and I think that's why we've seen them not have as much success as normal. But this is a perfect zone for Nongshim, right? They're going to have the north side of military all to themselves. They know this side of the map like the back of their hand. Enigma Galaxy, in the meantime, starting to mix in a little bit with Ida, a team they're super familiar with as they battled with them in Pachinki at the start here of the finals. I mean, it felt like, Ida were across the bridge a lot earlier than this. They just did not have a setup. So, Enigma Galaxy getting across pretty much for free on that location is a great result for the squad. They are, of course, 22 points behind that Smash bubble. But she'll need to try and push past in the next, as you say, 2 matches. To break on in there. And now Ulf could potentially try and roll across the bridge, but they're going to roll into a much harder stopping block, I imagine, given that Ida have now kind of solidified out to the west side of that exit, and Enigma Galaxy hold the compound to the east side of the bridge. Interested to see the kind of plays we're going to see from these teams, especially in that mid lower part of the leaderboards, because they want to still win this. It's still possible. What kind of different play styles are we going to see? Like even Godlike with 74 points. To make it possible, they need a 25-point game here and in the next one. So they'd have to go and just eliminate everyone. Right? So I would want to see aggression no matter what from them. Team Flash with 92 points, right? They're going to be hunting down that 122. That's 30 points. For the next 2 games. So 15 and 15, much more manageable, right? At the same time, that's a chicken dinner with 5 eliminations, so it's not going to come easy. Hey, we're just going to see. We're just going to have to see what happens in this game, because right now 4 Thrives with their opportunity crashing into S2G with theirs as well. 1 step closer to the Smash Zone. 4 Thrives denied there as S2G put their first point on the board after gaining that Smash point in that last game and holding this south edge. I mean, they're feeling all right. They're feeling all right. We're still waiting for Zone 2 to really decide where it's going to go. I have this sort of bubbling feeling in my stomach, Jukes. And it is, what if we get a really hard north shift and we go back to the mainland? It's so unlikely, and it's not even really worth bringing up. But I just have that little feeling. I'm like, oh, back of my neck is prickling. My spidey senses. The John Allen tingle. That's right. Is in effect here, folks. If we see that northern shift, oh boy, will this be one heck of a party here. Fortunate for 4 Thrives, they're on that most southern part of military, just thinking they can kind of get some of that loot. S2G finding one of their players isolated, and that's IQ gone, just like that.
only player out of the lobby so far. Looking on over, there's still a lot of teams that are on in the blue zone still. I mean, we got E-Arena still in South George, so they're going to be pushing in super late. Tianba's up there, Godlike's up there, Aura is still just crossing, yes, Naya. So a lot of... Because अगर वो लेटे भी रहते तो शायद इन्हें स्पॉट ना किया जाता. There was no vehicle in front of him. बड़े आराम से वो लेटे हुए थे, उनकी पोजीशन का अंदाजा इस चीज को था नहीं, बट जैसे खड़े हुए फौरन से पकड़े जाते हैं और उनको लॉबी भेज दिया जाता है. चलें 4 थ्राइव्स ये चीज़ फायर बैक करेगी. चकंडर निकालने में सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि आपका एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाए. बैकग्राउंड शॉट बढ़ाता है यार. देन इसी साइड पर वाइटैलिटी के प्लेयर्स भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. सामने थोड़ा सा और आगे गए, 300 मीटर और 250-300 मीटर और आगे गए तो वहाँ पर 4 थ्राइव्स के साथ बैकग्राउंड शॉट लड़ाई हो सकती है, लेकिन शायद यहीं रुकना चाहेंगे ये प्लेयर्स. दूसरी तरफ देखा जाए मैंशन के आउटस्कर्ट्स में एरेंगल के मैप का एक बड़ा ही खूबसूरत शॉट, और जहाँ जोन है वो जगह दिखाई दे रही है हमें. सर्कल का शिफ्ट कहाँ आएगा? ये देख कहाँ पे के सदर्न साइड पर शिफ्ट ही आएगा, और शिफ्ट यहाँ पर सदर्न नहीं बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न आता है, जो कि वापस से टीमों को मजबूर करेगा कि वो थोड़ा सा जरा सी बिल्डिंग साइड पर आए. और ये सर्कल इंडिकेशन तो दे रहा है कि सी साइड पर ही जाता हुआ खत्म होता हुआ दिखाई देगा, बट कैन गो आइदर वेज. इससे पहले हमने कई सर्कल मिलिट्री बेस के जब देखे हैं तो वो अबैंडन जो प्लेन्स हैं उसी साइड पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. उस साइड पर फॉर्चुनेटली ना 4 थ्राइव्स मौजूद है. मेन आइलैंड की बात करें वहाँ पर ओजी भी है, फ्लैश भी उनके बिल्कुल सामने है. ओजी वर्सेस फ्लैश फाइट लिए बगैर दोनों टीमें ही आगे नहीं जा सकती. शायद फ्लैश चली जाए लेकिन ओजी नहीं जा सकती. जी हाँ बिल्कुल. यहीं पर ओरंगुटान्स फाइट तो लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड शायद ओरंगुटान्स वो सर्कल के अंदर जाने से ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट शायद आप उतने मिलिट्री सर्कल्स के अंदर ना कंफर्म कर पाए अपने लिए, लेकिन हाँ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, एंड वही करने के लिए ओरंगुटान्स फ्लैश को एलिमिनेट करना चाहते हैं. बट खैर अभी के लिए इस फाइट को क्या आगे बढ़ाएगी ओरंगुटान्स, या आगे सर्कल को तरजीह देकर रोटेट करते दिखाई देंगे. अभी के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट करते देखने को मिल रहे हैं अपने फॉर्मेशंस के ऊपर, लेकिन ओरंगुटान्स पीछे रहते कुछ शॉट्स भी दाग रहे हैं. मजीद जो टीमें रोटेट करना चाह रही है सर्कल की जानिब, लेकिन ओरंगुटान्स के साथ ही साथ अभी भी होराई स्पोर्ट्स भी उसी सारे साइड से मिल्टा के नज़दीक से गुजरते आपको देखने को मिलेंगे, एंड वो भी नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक के लिए सर्कल के एलिमिनेशन फीड में. टीम 4 थ्राइव्स के प्लेयर को गिराया जाता है. अभी फिलहाल के लिए नॉकआउट थे, लेकिन अब एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर लिया जाएगा. जी हाँ बिल्कुल. 4 थ्राइव्स के तीसरे प्लेयर भी एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे चंद सेकंड्स के अंदर. T24 वर्सेस टीम अरोरा सेओल, ये एक फाइट बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन T24 जहाँ ग्रेनेड फेंका गया वहाँ स्प्रेज आते हैं. T24 वो मोलोटॉव में चले जाएंगे, एंड 4 थ्राइव्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टीम जो कि लॉबी जाती हुई दिखाई दे, बिकॉज आखिरी प्लेयर हैं फलक जिनके ऊपर जिम्मेदारी है. इससे पहले हमने बाकी प्लेयर्स को इससे पहले हमने देखा कि फलक सबसे पहले लॉबी जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाकी 3 प्लेयर्स चले जाते हैं और सिर्फ फलक बचे हुए हैं. अगर आप देखें तो एक लिहाज से पूरी लॉबी जिंदा है, सिर्फ 4 थ्राइव्स ही ऐसी टीम है जो कि लॉबी जाती हुई दिखाई दे रही है. और चलें फलक कितनी देर तक वो सोलो सर्वाइवल देखने को मिलेगा. वो जो ख्वाब थे #2 बनाने के, वो थोड़ी देर के लिए चकनाचूर तो हुए हैं, बिकॉज एक अकेले प्लेयर का सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है इस लॉबी में, लेट अलोन के वो 15 पॉइंट्स निकाले. अकेला प्लेयर जो है वो चिकन डिनर दिलाए, मुश्किल तो है, बट क्या फलक वो अनएक्सपेक्टेड वो ऐसी चीज़, वो ऐसा ख्वाब जो कि किसी भी सोलो प्लेयर का होता है, वो पूरा कर पाएंगे या नहीं जाएंगे एक सवाल है. वहीं पर दूसरी साइड पर फ्लैश वर्सेस ओरंगुटान दोनों आमने सामने हैं. फ्लैश यहाँ गेट कीप करती हुई ब्रिज कैंप लगाती हुई नजर आती है, एंड ओरंगुटान उनको शायद अंदाजा है इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जितनी देर तक रुकेंगे उतना ही डैमेज पड़ेगा. पीछे से और तांबा भी आते हुए दिखाई देंगे. जी हाँ बिल्कुल. एंड सर्कल एक शिफ्ट कहा कर जाता है. क्या आ जाएगा यार, ट्रॉफी बहुत मैं ये चीज़ आई नो आई एम नॉट एट द पोजीशन ऑफ सेइंग दिस, बट मैंने जो एक चीज़ कल के दिन से फाइनल्स डे 1 में भी हाईलाइट देखना, नीचे वाले का 100 पॉइंट्स, उसके नीचे वाले का 100 पॉइंट, 94 93 93 किया है. 11 10 मिनट बचा है द सर्कल सेंटर. उनकी कोशिश होती है कि हम जैसे तैसे कर सर्कल के सेंटर के करीब चले जाए, और ये अभी जो प्लेन क्रैश साइड पर टीम 4 थ्राइव्स का एजिस से उठकर जाना, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है. कल के दिन भी फेरी पियर्स के अंदर जहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स एलिमिनेट हुई थी आकर प्राइमॉर्क से निकलकर, वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल है. टीम 4 थ्राइव्स नेचुरली एजिस पर रहकर एलिमिनेशंस उठाती आपको दिखाई देती है, और ये उनका गेम स्टाइल है. उनका नेचुरल गेम स्टाइल ही यही है कि एजेस पर रहो, एलिमिनेशंस उठाओ, और
अपनी जगह एजिस से करते 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 चलते एंड सर्कल्स के अंदर बनाओ, तब तक उनके पास अच्छे खासे एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। थर्ड पार्टीज़ की सूरत में, गेट कीप्स की सूरत में, सेंटर वाला जो एक गेम है वो टीम 4 थ्राइव्स का नेचुरल गेम स्टाइल नहीं है। और जैसे ही टीम 4 थ्राइव्स अपने नेचुरल गेम स्टाइल से, ये मुझे लगा, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो नेचुरल से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बात आप कर रहे हैं उसको साइड पे रखकर अगर एक टीम को सर्कल का सेंटर मिल रहा है तो वो क्यों ना ले, मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। लेकिन चलें गॉडल की बात करें, वो फाइट में आते हुए दिखाई देंगे। ये एरिना वर्सेस गॉडल चलता हुआ नजर आता है, जहां पर एक साइड पर वाइटैलिटी वर्सेस नॉन्गशिम रेड फोर्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स आई थिंक चांसेस है रिवाइवल देने के। अबैंडन टैंक एरिया है जहां पर ये टीम मौजूद है, इनके पास एक रिज है, बड़ी अच्छी रिज है, यहाँ पर पुश करना इतना आसान नहीं होता, यहाँ पर स्लैमिंग देना आसान नहीं होता। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके एक प्लेयर के पास वो हवरक्राफ्ट मौजूद है जिसका वो बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नॉन्गशिम रेड फोर्स एज सच ज़्यादा को प्रॉब्लम्स उनको आने नहीं वाली, बड़े आराम से खेलेंगे। पॉसिबिलिटी है कि इस मैच को खत्म करने के बाद, चिकन डिनर लेने के बाद स्मैश रूल पॉइंट से जीता जाए, लेकिन गॉड लाइक कैसे आएंगे सर्कल में, ऑल दो एजेस पे मौजूद तो हैं, लेकिन अगला सर्कल उनको अबैंडन करेगा। ये एरिना वर्सेस गॉडल, ये फाइट बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये एरिना के पास और कोई चारा नहीं है, उनको गॉडल से फाइट ही लेनी है आदि, वरना सर्कल में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन टीम एरिना यहाँ से फॉल बैक कर रही है, क्या प्लान रहेगा उनका? जिस साइड पर वो जा रहे हैं वहां से त्यांबा आ रही है, त्यांबा को लग रहा है कि ये ब्रिज नहीं दूसरा ठीक है, एरिना को लग रहा है कि वो ब्रिज नहीं है ठीक है। चले त्यांबा फिलहाल के लिए जिस साइड पर जा रही है वहां पर ओजी के प्लेयर्स हैं, त्यांबा वर्सेस ओजी भी दिखाई दे सकता होता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, एंड ओजी वो जानकर यहाँ पर रुके हुए हैं। इनफैक्ट ओजी को भी आगे गेट कीप किया जा रहा है फ्लैश की साइड से। मुझे ऐसे लगा कि शायद ओजी इंतज़ार करना चाहती है और मतलब बाकियों का गेम ख़राब करना चाहते हैं वो यहाँ पर रुककर, बट ऐसा नहीं है, उनको खुद को भी गेट कीप किया जा रहा है। और ये देखें ये सर्कल शिफ्ट सबसे बड़ी मिसाल है। फलक जहाँ से सर्कल के अंदर जा रहे हैं, एजेस पर रहकर खेलने का आपको ज़्यादा फायदा पहुँचता है। लेकिन खैर जो हो चुका सो हो चुका, अब देखते हैं ये मैच क्या लेकर के आता है, क्या कंपटीशन इख्तिताम को पहुंचने वाला है, क्या कोई चैंपियन 3 में से कोई एक टीम की सूरत में हमें बनता दिखाई देगा। थोड़े आंसर जरूर आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं है, वी आर इन द टॉप 5। पिछले साल हमने टॉप 7 के अंदर ख़त्म किया था, इस साल हम टॉप 5 के अंदर हैं और ये साल ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर भी गया है। मैं अपनी टीम को बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि दे आर द चैंप, दे हैव बीन द चैंपियंस। लेकिन खैर हम लोगों को सारों को सपोर्टिव ज़रूर रहना है। वहीं पर कुछ प्ले जोन से एलिमिनेशंस निकलते देखने को मिल रहे हैं। होरा स्पोर्ट्स के नो फेयर एक लीप ऑफ फेथ लिया उन्होंने, बट हाँ इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि 1500 मीटर दूर जाना था। ब्लू जोन काफ़ी अरसे का यहाँ पर मौजूद है एंड होरा स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर अभी भी जाते जाते जान मारना चाहते हैं कि शायद एक दो वो जो एलिमिनेशन पॉइंट्स है ब्रिज पर रहकर वो निकाले जाएं। लेकिन ये अरीना अभी तक अपनी जगह सर्कल के अंदर नहीं बना पाई है। फैंस शेयर अप कर रहे हैं अपनी फेवरेट टीम्स के लिए और फैंस को भी अंदाज़ा है कि S2G एरिना नॉन्गशिम तीनों में से कोई एक बन सकती है पॉसिबल चैंपियन सारे PUBG मोबाइल ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की। लेकिन वहीं पर ओजी के आतंकी अनफॉर्चुनेटली ही गेट्स एलिमिनेटेड एंड ओजी के विज़गॉड आखिरी प्लेयर रह जाएंगे। जाते जाते एक और एलिमिनेशन पॉइंट अगर कंफर्म कर लिया, पैन पर बुलेट्स लगती हैं। यही बुलेट्स अगर पैन ना होता जान बचाने के लिए तो शायद हमें ओजी के ये आखिरी प्लेयर भी बाहर जाते दिखाई दे सकते थे। लेकिन निग्मा गैलेक्सी उनकी एक फाइट शुरू होगी, एलिमिनेशन पॉइंट उठाते हैं निग्मा गैलेक्सी के रऊफ के ऊपर एंड निग्मा गैलेक्सी अभी के लिए उस तरह से आउटशाइन नहीं कर पाई है जिस तरह का आगाज फाइनल्स के अंदर ये टीम लेकर गई थी। टॉप स्पॉट से जब गिरे तो इतना नीचे चले गए कि अब 7वें नंबर पर ये टीम हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल ठीक आपने। इसी के साथ साथ देखा जाए टीम एरिना की बात करें, सर्कल में रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं। 3 प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, एक ही प्लेयर गवाया। गॉडल ऑन द अदर साइड उल्फ के हाथों अपने प्लेयर्स गवाती हुई नजर आती है। रंगडन अपने आखिरी प्लेयर मौजूद है, सर्कल में जाना चाहेंगे लेकिन क्या सर्कल में जा पाएंगे? 1000 मीटर 1100 मीटर का वो लंबा रोटेशन उनको तय करना है जहाँ डैमेज जोन का बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हाथ में किट्स रहना, बैंडेजेस रहना, ड्रिंक्स रहना, ये बहुत ज़रूरी है। एरिना शायद ये मैच निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज जहाँ से भी एंट्री लेंगे वहाँ कोई ना कोई टीम होगी। लेकिन फलक अकेले प्लेयर गॉडल के प्लेयर्स के सामने आते हैं।
पहला प्लेयर गिरा दिया जाएगा फलक की जानिब से, लेकिन ये आखिरी प्लेयर, इकलौता प्लेयर क्या करेगा? क्या सारे गॉडल के प्लेयर्स को एलिमिनेट करता हुआ दिखाई देगा? फलक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं साइड के ऊपर। यहाँ देखा जाए फ्लैश भी थर्ड पार्टी होती हुई दिखाई देगी। एक साइड पे उनके फरिया है, एक साइड पे नॉन्गचिम रेड फोर्स, लेकिन फ्लैश जाने से पहले 1 या 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स नॉन्गचिम रेड फोर्स के ऊपर कंफर्म किए तो उनकी उम्मीद इस मैच को जीत पाने की, ट्रॉफी को जीत पाने की खत्म हो सकती है। लेकिन वापस से फोर्थ रैश की जानिब देखा जाए, फलक उनकी एचपी लो होती हुई नजर आती है, यानी कि टीम गॉडल वो भी रिटालिएशन करती हुई साइड पर दिखाई दे रही है। ब्लू जोन से हुई है। अभी फिलहाल के लिए फलक ब्लू जोन से बाहर निकलते हैं। आई थिंक सो ब्लू के डैमेज की वजह से उनका कुछ एचपी डिप्लीट किया है, लेकिन ओजी के प्लेयर विस्गॉड वहां से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे कर सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कम फ्लाई विद मी चीट कोड लगाया जाएगा उनकी साइड से, बच ना पाएंगे। ई अरीना या अल उला के प्लेयर्स में से कोई ना किसी एक ने ही एलिमिनेशन पॉइंट लेकर जाना था, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस दी जरूर जाती है। लेकिन ओरंगुटान्स में फिर भी उनको दाद दूंगा इस चीज के लिए कि कोशिश उन्होंने की कि जैसे तैसे कर सर्वाइवल ही नहीं बनाया जाए। एंड ई अरीना उनको भी दाद देना बनती है कि वो यहाँ तक आए हैं, अपनी सर्कल में जगह बनाई है, लेकिन आते साथ ही उनके प्लेयर्स को पकड़ लिया जाएगा अरोरा की साइड से। अरोरा और विटालिटी मिल मिला करके ई अरीना का इस मैच में या चैंपियंस बनने का ख्वाब आप कह सकते हैं कि वो छीनते दिखाई देते हैं। लेकिन अरोरा जिनको चाहिए मजीद कुछ और पॉइंट्स मैच पॉइंट टारगेट तक जाने के लिए, लेकिन अरोरा अब कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो आपको गिरता दिखाई देगा, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि शायद इस मैच के बाद ही हमें चैंपियन बनता दिखाई दे पेरिस में साल के पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का। लेकिन वहीं पर एनएसआर बहुत ज्यादा पैसिव अब आपको खेलती दिखाई दे रही है। नॉन्गशिम रेड फोर्स सर्कल से बाहर है एंड सर्कल के अंदर जाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 मुख्तलिफ टीमों से गुजरकर उनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कि जो प्रेशर एनएसआर के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से बज़ाहिरी तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका सामना किस तरह से एनएसआर करती दिखाई देगी। अगर मिनी मैप देखें आप तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। फोर्थ रेस के चारों प्लेयर्स होते हैं, I'm 100% श्योर कि चिकन उनका ही था, लेकिन फिलहाल ये अरीना उनकी बात करें अपने 2 प्लेयर्स को लिए हुए आगे आते हुए दिखाई देते हैं। नॉन्गशिम रेड फोर्स एंड फ्लैश की फाइट बनेगी, जहां पर फ्लैश के प्लेयर्स अभी तक नॉकडाउन निकाल नहीं पाए। बाउस के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, गाड़ी लेकर आगे पुश किया जाता है। XCY वो स्प्रे डाउन करेंगे। बाउस इज द लास्ट वन स्टैंडिंग एंड बाउस विल बाउ डाउन टू The aggression of team नॉन्गशिम रेड फोर्स। लेकिन पीछे से निग्मा गैलेक्सी आ जाती है, 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। चल क्या रहा है, सेंटन आगे आएंगे, वर्ल्ड शेक डाउन अनदर। नॉन्गशिम रेड फोर्स गेट्स एलिमिनेटेड। एस2जी का चिकन लग रहा है, एस2जी का चिकन लग रहा है, एस2जी का चिकन लग रहा है। What just happened? निग्मा गैलेक्सी के 2 प्लेयर्स एस2जी का चिकन लग रहा है। टीम खा जाते हैं। इन सेंटन जिनके खाते में एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज होंगे। यार टिप होती सभी टिप होती निग्मा गैलेक्सी ने, लेकिन रिस्क के बदले उनको रिस्क मिल जाता है। 2 प्लेयर्स आए, पूरा स्क्वाड मार दिया यार, ये कैसे हो गया? एसओजी का चिकन लग रहा है, अब एसओजी का लग रहा है। ओह माय गॉड, देखिए कि डर कर खेलने का नतीजा क्या होता है। एनएसआर उनके प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज ही काफी ज्यादा अंडर प्रेशर था। होता है ऐसा ही पहला पायदान डब्ल्यूसी के ग्रैंड फाइनल्स का, ये संभालना ही बहुत बड़े बड़े नाम चूक जाते हैं इसको संभालने के लिए। लेकिन निग्मा गैलेक्सी वो डरौना ख्वाब जो ख्वाब निग्मा गैलेक्सी जो ख्वाब एनएसआर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन निग्मा गैलेक्सी ऐसे लगा कि शायद इस मैच में उनकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, जाएंगे सीधा और पहले नंबर को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद बाहर। लेकिन फलक अपनी जान की बाजी लड़ते आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से फॉल बैक करेंगे, घोड़े पर बैठकर छलांग भी लगाई लेकिन पीछे छलांग लगाई जाएगी और अभी फिलहाल के लिए फलक पीछे से गॉडल के प्लेयर्स उनको देखते जरूर हैं। फलक अपने प्रोसेस बनाएंगे, पकड़ा जाएगा, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं। फलक क्या यहाँ से सरवाइव कर पाएंगे? बैकयार्ड से थर्ड पार्टी हो जाएगा और यहाँ से विटालिटी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म अपने लिए कर लेकर जाते हैं। लेकिन असल सवाल अब अभी का ये है कि क्या ये कंपटीशन इस मैच के बाद इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। द टॉप 9 टीम सर्वाइविंग इन दिस गेम आपके सामने आ चुकी हैं ख़वातीनो हज़रात, जिसमें से नाम S2G का है जो वो काम कर जा सकते हैं, जो कोई भी नहीं होते देखना चाहता इस सारे लॉबी में। लेकिन खैर S2G को कौन आएगा एलिमिनेट करने के लिए? निग्मा गैलेक्सी, वो सुसाइड मूव, वो गट्स जो निग्मा गैलेक्सी ने दिखाए थे, क्या S2G के खिलाफ कोई दिखा पाएगा? आइए जानते हैं। अभी के लिए S2G अपने चारों के चारों प्लेयर्स पर इंटैक्ट है।
जी हाँ बिल्कुल, S2G अपने चारों प्लेयर्स पे इंटैक्ट है। अरोरा के प्लेयर्स भी यहाँ मौजूद थे। ये अरीना गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन S2G क्या खत्म कर पाएगी इस मैच को स्मैश रूल के साथ? सबसे बड़ा सवाल ये है आज के दिन का, ताज़ा तरीन सवाल, क्या S2G डोमिनेट कर पाएगी, फर्स्ट स्पॉट हासिल कर पाएगी, चैंपियनशिप लेकर जाएगी, ट्रॉफी उठाएगी? क्या वापस S2G का वो एरा जो हमने इससे पहले ग्लोबल चैंपियनशिप में एक टाइम में देखा था, क्या वो वापस से आता हुआ दिखाई देता है? लेकिन अरोरा, उनका S2G के करीब आना, अरोरा को जरा सी भनक पड़ गई कि S2G है तो वो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाले। वो यहाँ एग्रेसिव होंगे यकीनी तौर पे। उनकी तरफ से एक भी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया। दे विल जस्ट स्लैम इन। विटालिटी है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अलादीन S2G टॉप 9 में से टॉप 6 के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। एंड S2G का एक एक पायदान ऊपर आना इस मैच के मैच रैंकिंग्स में ये चीज़ दिक्कतें बनाएगा। टॉप 5 के अंदर टीम S2G ख़वातीनो हज़रात अपना नाम दर्ज कर चुकी है, लेकिन S2G इज़ नॉट दी ओनली टीम जिनके चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। अरोरा के 4 प्लेयर्स हैं। अरोरा बेशक आपको मैच पॉइंट पर जाती दिखाई देगी। स्मैश रूल पॉइंट्स के जो टारगेट हैं 122 पॉइंट्स अबूर करती इस मैच के अख्ताम पर दिखाई देगी बड़ी आसानी से। लेकिन वहीं पर फुरिया वो अपने 2 प्लेयर्स पर है। विटालिटी वो अपने चारों के चारों प्लेयर्स और 5 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर हैं। लेकिन अरोरा गेमिंग के प्लेयर्स बिल्कुल रिज के अतराफ स्काउट करते दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबली शायद आने वाली फाइट S2G के खिलाफ अरोरा की ही बनती आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन S2G अगर उन्होंने अरोरा को इस मैच से बाहर कर दिया तो उनके चिकन डिनर करने के चांसेस मजीद आपको बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन अरोरा के प्लेयर के एस पावर को स्पॉट डाउन करते हैं। एस पावर गेट्स एलिमिनेटेड एंड वहीं पर विटालिटी के प्लेयर पीछे से कहीं से डॉग को स्पॉट डाउन करने में कामयाबी हासिल करेंगे, बच जाएंगे जैसे तैसे कर अरोरा के प्लेयर। लेकिन वहीं पर क्या होगा इख्तिताम इस मैच का? सबसे बड़ा ये सवाल जो सभी के दिल में गूंज रहा है, जो सभी सोच रहे हैं, क्या वो होने वाला है? क्या S2G इस साल की हमें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती दिखाई देगी? ये मैच सभी कुछ है टीम S2G के लिए, क्योंकि बड़ी जान लगती है। NSR को हमने देखा कि वो प्रेशर संभाल ही ना पाए इस मैच में सर्वाइव करने का। लेकिन S2G यहाँ पर आए हैं अपने चारों के चारों खिलाड़ियों को लेकर के। वहीं पर विटालिटी के प्लेयर्स अभी के लिए अपने आप को रीसेट करते दिखाई देते हैं। अरोरा और विटालिटी की अगर फाइट हुई फिर तो पक्का बहुत चांसेस हैं टीम S2G इस मैच का शायद चिकन डिनर निकाल कर लेकर चली जाए। लेकिन S2G की अगर पहले फाइट बन गई जैसे तैसे कर तो शायद S2G के खिलाड़ी आपको कुछ एलिमिनेट होते दिखाई दे सकते हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल बन चुकी है अब आकर। S2G का चिकन है ब्रो, वो देख उनकी प्लेसमेंट देख यार। बिल्कुल नाजुक सूरत हाल तो बन ही जाएगी। अरोरा गेमिंग यहाँ मौजूद है, S2G मौजूद है। S2G को एलिमिनेट कर दिया अरोरा गेमिंग ने तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन वाइटालिटी का अरोरा के पास आना, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों टीमें आपस में लचती हुई दिखाई देंगी। S2G इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कितना करीब आ चुके हैं, कितना करीब आ चुके हैं वो ट्रॉफी उठाने के। उनको सिर्फ सामने मौजूद 3 टीमों को एलिमिनेट करना है, उनको सिर्फ 2 टीमों को आपस में इंटैक्ट रखने हैं। इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा करीब कोई अब तक ट्रॉफी के आया नहीं है जितना करीब इस मैच में S2G आ चुकी है। लास्ट मैच में नॉन्स्टॉप रेड फोर्स को देखा लेकिन उनके पास जगह अच्छी मौजूद नहीं थी। यहाँ पर टीम S2G की बात करें, उनके पास जगह अच्छी मौजूद तो है, लेकिन इस बार हो जाएगी फाइट अरोरा वर्सेस वाइटालिटी। दोनों टीमों के माबैन ये फाइट होती हुई दिखाई देती है जहां S2G थर्ड पार्टी करना चाहेगी। S2G को रियलाइज करना है कि एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना मकसद नहीं होना चाहिए। Your focus should be getting a chicken dinner. और अगर आपने ऐसा कर दिया, you will be crowned as the champion of esports world cup. और ये पहला एस्टर इवेंट होगा जो कि हमें स्मैश रूल की बदौलत खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वाइटालिटी वो स्पॉट करते हुए दिखाई देते हैं। फुरिया के प्लेयर को काफी लो एचपी किया जाता है। फुरिया भी इसी साइड पर आएगी। 3 टीमें आपस में लड़ रही हैं, चौथी टीम उन तीनों से दूर है और उसी टीम को सर्वाइव करना है, उसी टीम को निकालना है वो चिकन डिनर। लेकिन वाइटालिटी फंसते हुए दिखाई देंगे। एक साइड से फुरिया, एक साइड से अरोरा, सामने से टीम S2G वो चैलेंज करना चाहेंगे वाइटालिटी का। एक और चैलेंजर आउट ऑफ द पिक्चर होता हुआ दिखाई देगा। वाइटालिटी की जानिब से नॉकआउट दर्ज करने की कोशिश, लेकिन उनके प्लेयर भी गिरते हुए दिखाई देंगे। S2G सारी फाइट में थर्ड पार्टी करेगी। वाइटालिटी फुरिया को पार करना चाहती है। अयाला इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर, लेकिन जोन के बाहर जाते हुए शायद अयाला दिखाई देंगे। एक साइड पर कामिकाज़े हैं, दूसरी साइड पर दिखाई देंगे टीम फुरिया के प्लेयर्स के, वाइटालिटी के प्लेयर। लेकिन अरोरा आगे आती है, अरोरा के प्लेयर्स गिर जाएंगे। आदि मुझे क्यों लग रहा है कि दिस इज इट। कम ऑन अरोरा, मुझे क्यों लग रहा है कि दिस इज इट।
मुझे लगता है थर्ड पार्टी करेगी टीम विटालिटी S2G के खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन हाई ग्राउंड एडवांटेज का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए S2G आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अरोरा अब वो बहुत ज़्यादा पिंच्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन कुछ फायर्स दागे जाते हैं विटालिटी के प्लेयर्स की साइड से। S2G के लॉस को पकड़ लिया जाएगा। अगर ये रिवाइवल मुकम्मल ना हुआ तो शायद इम्कान गिरता आपको दिखाई दे सकता है। S2G के इस मैच के चिकन लेके जाने के लिए एक ही तीर से दो अदद शिकार डॉक आएंगे निकलकर सामने, चट्टान बन जाते हैं। ट्रॉफी और S2G के बीच में वो दीवार बन जाते हैं। टीम अरोरा के डॉक एंड S2G का वो ख्वाब सिर्फ एक ही स्प्रे की मानंद आपको टूटता इस मैच के अंदर दिखाई देता है, लेकिन आखिरी प्लेयर के ऊपर S2G अब आपको आते दिखाई दे रहे हैं। कामेकाजी अब आप देखें वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा जो S2G के प्लेयर्स के अंदर बरकरार था वो टूट चुका है और अरोरा के डॉग को इसका क्रेडिट जाता जरूर है, लेकिन अरोरा ई स्पोर्ट्स अब वो भी अपना नाम उस सारी फहरिस्त के अंदर दर्ज कर दिया जा चुका है। उनकी साइड से आने वाले मैचेस के अंदर चिकन डिनर अगर निकाल लिया अरोरा ने तो वो चैंपियंस आपको बनते दिखाई देंगे, लेकिन S2G के कामेकाजी क्या जाते जाते कुछ कर पाएंगे? अभी आइए जानते हैं। अरोरा के प्लेयर रीफस अपना व्हीकल लेकर के आगे बढ़ेंगे। कामेकाजी स्प्रे डाउन करने की कोशिश करते, लेकिन S2G हज़रात इस मैच से आखिर बाहर कर दी जाती है एंड चिकन डिनर हासिल कर लिया जाता है अरोरा की साइड से, जो आ चुके हैं स्मैश पॉइंट्स टारगेट से भी कहीं ज्यादा ऊपर, लेकिन चैंपियंस बनते बनते रह गए एक कदम दूर। वो एक कदम, वो एक सीढ़ी, वो एक आखिरी कोशिश थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, बस सोचें इस बारे में कि लॉस्ट अगर नॉक ना होते S2G ट्रॉफी जीत जाती। इतना ज्यादा पैनिक करेंगे वो इस मोमेंट के बाद, कितना ज्यादा प्रेशर आएगा। दे आर नॉट गोना, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे सबसे। S2G सबसे रिकवर करने वाली नहीं है, वो अब नहीं वो चैंपियंस नहीं बन पाएंगे। अब वेरी डिफिकल्ट नाउ। आप सोचें कि दे वर सो क्लोज टू द ट्रॉफी कि उनके अपने ही प्लेयर लॉस्ट आगे जाकर नॉक हो जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए दो प्लेयर्स आते हैं, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। S2G उनके साथ डे लाइट के अंदर रॉबरी होने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी अरोरा जो कि ऐसा कर सकती है। ऑल्दो बाकी टीमें भी हैं, लेकिन अरोरा अब वो इतना करीब आ चुके हैं, खुशबू आ रही है उनको दूर से ट्रॉफी की। S2G वो नहीं रिकवर कर पाएंगे। सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रेशर आया है इस मैच के, ओह माय गॉड, इतना करीब कोई आया है कभी क्या ट्रॉफी के? इतना करीब आकर छोड़ दे। आपको सिर्फ फरिया की साइड से आगे बढ़ना था। आपके सामने अरोरा है, आपको पता है वो लड़ रही है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। इतना लेफ्ट साइड देखें, अगर आप वेस्टर्न साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें, जहां से आई है ये टीम S2G, वो पूरी खाली है, वहां से जा सकते हैं फरिया के पास। सबसे ज्यादा प्ले एरिया S2G के पास मौजूद था। गाड़ी के नीचे वाला एरिया देखें, वो गाड़ी के नीचे वाला एरिया देखें, दोनों टीम खाली है। एग्जैक्टली, दोनों टीमें डिसएडवांटेज पर थी, विटालिटी और अरोरा। जी हाँ, अभी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर ख़वातीन हज़रात। तो 4 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। लगा नहीं था कि शायद ये मैच अपने पार तकमील को पहुंचेगा, लेकिन S2G विल इट बी वंस अगेन फॉर देम? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Qadיר City, powered by Play. भूल गया था माइक बंद किया है। वेरी बैड यार, वेरी बैड।
स्पाइडरमैन Yangon Galacticos! Chasing the sunrise, boots hit the ground, hear the battle call. Loot up, lock in, we're ready for it all. Every street, every door, searching for a little more. One squad, one dream, nothing's ever what it seems. The circle's closing in, can you feel it on your skin? Heartbeat like the drum, the final fight has come. Fight till you make it, never gonna break it. Stand firm and take it, right into the fire. Fight till you make it, every move can change it. Higher and higher, we're reaching for the winner, winner, chicken dinner. Fight till you make it. Fight till you make it. लास्ट मैच रह तो गया वैसे लो बात भी बात आ रही PW05820 भाई स्ट्रीमर हेलो आवाज आ रही है
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश आमदीद करेंगे फिर से सभी लोगों को। और अभी मैं हूं अकेला, मेरे साथ पोर्टल भी आ जाएंगे कुछ सेकंड्स के अंदर। वैसे यही इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसी तरह से सबको बुलाना चाहिए। और पोर्टल आ चुके हैं। पोर्टल वेलकम बैक, कैसे हैं आप? लास्ट मैच आपने देखा S2G उनकी तरफ तो फेंका गया यहाँ पर क्वालिफिकेशन कह रहा हूँ, जो ट्रॉफी है उसे हासिल करने का मौका फेंका गया उनकी जानिब से। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि टीम S2G इतना करीब जब वो आ चुके थे तो हमें लगा कि शायद वो जो पिछला मैच है निकाल ही लेगी टीम S2G, लेकिन S2G करीब आकर भी बड़ा दूर चले गई। और अब जो है वो खैर आपको ऐसा दिखाई देता है कि हमारे सामने जो आखिरी 2 मैचेस हैं यही फैसला करेंगे कि कौन विन करेगा इस पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप को। लेकिन ये फैन जोन गाइड है पबजी मोबाइल एक्स नरूटो, आपको गिव अवेज दिखाई देते हैं। स्टील ब्रेन रॉट चैलेंज है, ब्रेन रॉट चैलेंज है वर्ल्ड ऑफ वंडर के अंडर, और पबजी मोबाइल एक्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो कोलैबोरेशन है उसके साथ आप लोग भी आई थिंक महसूस हुए होंगे। सिनेमाज में रही है मूवी और आप में से काफ़ी सारी आई थिंक अक्सरियत जो है वो जाके देख चुकी होगी, नहीं देखी तो शायद वो अवाम है जो वर्ल्ड कप में बिजी थी। और राइटली सो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो हैं ही इतने इंटेंस कि आप नहीं मिस आउट करना चाहते इन मैचेस को। और हमारा अभी भी फिर से फोकस है उन मैचेस की तरफ ही जाएगा। जिस तरह से पिछले मैच की भी बात हो रही है तो आई फील लाइक पिछले मैच में ठीक है S2G ने तो मौका मिस किया, बट उसका जो क्रेडिट है मोस्ट लाइकली आई थिंक आपको देना पड़ेगा टीम अरोरा गेमिंग को, जिन्होंने उतना ही ज़्यादा अच्छा खेला। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हम मैच रैंकिंग्स की, जहां पर हमें अरोरा गेमिंग 25 पॉइंट्स निकालती हुई नजर आती है। फरियाद 10 आता उनके पास भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमने S2G को देखा 10 ही पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन S2G इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। हेडफुट्स फेंके जाते हैं, हैंड फ्री फेंकी जाती है, बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे प्लेयर्स। इतना करीब है ट्रॉफी के, उनको लगा कि बस यहाँ जीत ही जाएंगे, बट लॉस्ट का वो पहला नॉक खाना और उसके बाद बाकी टीम का फॉलो अप में गिर जाना अनफॉर्चुनेटली ये अच्छा नहीं था। बट कामिका से बचे ज़रूर थे, ज़्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाते उस मोमेंट के ऊपर। उनको लगा ज़रूर कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ, कोशिश भी की, गिली सूट भी था, लेकिन अरोरा वो कुछ ज़्यादा ही लीथल होती हुई दिखाई दी इस पॉइंट पे पोर्टल। यकीनन आई थिंक अरोरा गेमिंग इनका इनफैक्ट मैं देख रहा था कि टॉप डॉक वो वाइटैलिटी को टेक डाउन कर रहे थे और बैक एंड साइड पर रीफस और ज़ियोल, ये जो 2 प्लेयर हैं वो लाइक टीम S2G के साथ फाइट कर रहे थे। तो ये जो टॉप और डॉक ने किया है ओवरऑल टीम अरोरा गेमिंग ने किया है, प्रॉबेबली दे आर द ओनली वन इन दिस लॉबी जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इस तरह के क्रूशल मैच के अंदर भी ये टीम जो आपको रिस्क लेते हुए दिखाई दे और अपने जोरे बाजू अपनी गन पार पर रिलाई करते हुए वो दोनों ही को इस मैच से एलिमिनेट करे। तो अरोरा गेमिंग उन्होंने पिछला मैच जो बहुत बेहतरीन खेला उस मैच के बाद नंबर 2 पर आ चुके हैं। एक टाई है जो कि टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स के साथ इनका बन चुका है। कोई भी चिकन डिनर करेगा चैंपियन बन जाएगा, चाहे वो टीम नॉन्गशिम है, चाहे वो अरोरा है, चाहे वो S2G है और चाहे फिर वो टीम E अरीना है। जब दिन का आगाज था E अरीना वॉज #1 और जब दिन का हमने पहला मैच देखा नॉन्गशिम आई नंबर 1 पे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं E अरीना जो है वो नीचे जाती जा रही है और नीचे वाली जो टीम्स हैं वो ऊपर आती चली जा रही हैं। रोज़ ये मुंडन आधा घंटा के आंसर एंट्री करने के टाइम चाहिए लाभ दे कॉल देना मुंडन आधा घंटा के शायद कभी ने कर देना ना मुंडन सही तरह कह देंगे यार नहीं मुंडन बड़े आराम से टीम जीत सकती है। बट देन फोर थ्राइव्स की बात कर लें फिर से वही टीम वही बात कि एक ही टीम ऐसी है जिसने चिकन डिनर नहीं निकाला, एक ही टीम ऐसी है जो कि सबसे कम प्लेसेंट पॉइंट्स के साथ यहाँ मौजूद है। ऑल्दो उनके मुकाबले में त्यांबा भी वैसा ही खेल रहे हैं, लेकिन चले फोर थ्राइव्स वक्त हुआ चाहता है चिकन डिनर निकालने का। 2 बैक टू बैक चिकन्स निकाल कर तारीख रकम की जा सकती है, लेकिन चले ये तो अच्छी बात है। स्मैश रूल का यही फायदा है कि वो टीम जो #5 पर है #6 पर है आखिरी 2 मैचों में 2 चिकन्स निकाले हैं आप जीत गए, द होल लॉबी विल बी सरप्राइज कि हुआ क्या है। आई थिंक ये बड़ा वैसे डिजास्टर होगा बाकी टीम्स के लिए अगर ये ऐसा हो जाता है, एंड वी रियली होप कि ऐसा हो, क्योंकि स्मैश पॉइंट आपके पास एक समझ लें कि चोर दरवाजे की चाबी है और आप वो ट्रॉफी है उस तक पहुंच सकते हैं अगर आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। लेकिन जो हमारा पेज 2 की बात की जाए तो टीम फ्लैश अभी भी थोड़ा नीचे 97 पॉइंट्स पर है, लेकिन बहुत पीछे नहीं है 97 पॉइंट्स। अब सही है। पेज 1 पे आपने देखा है 104 या 107 तक जो है आपको टीम 4 के प्लेस भी दिखाई दे रहे हैं। देन टीम उल्फी स्पोर्ट्स यार 2 मैचेस रह गए हैं, वो आता ठीक है। अगर बंदा सोचे ना अगर यहाँ से भी हम चिकन करके जाएं ये वो करें फिर भी नहीं काम बनता, इन्होंने चाहिए अन्य खेडी जो होएगा देखी जाएगी, मजाक तो हट रहे हैं। एक चीज जरूर आप देख सकते हैं कि हमारा 4 जन हर बंद का जो कंपटीशन है वो ना 4 जन हर बंदे 4 जन 2 तो रह गए मैच, ये अगर होना है अगर ठीक है प्लेसमेंट पॉइंट किल के मिल जाएंगे। एक्चुअली द मोस्ट कंपेटिटिव ग्रैंड फाइनल जो कि शायद आपने विटनेस किया है पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप के अंदर। और लास्ट टाइम इनफैक्ट हमारे पास जो आखिरी टीम थी
जो टेबल के बिल्कुल बॉटम पर थी, उनके पास 54 समथिंग पॉइंट्स थे। और जब आप इस दफ़ा की लॉबी को देखते हैं तो ऑलरेडी आपको 58 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं एक टीम के, और 2 मैचेस बाकी हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड कॉम्पिटिशन नहीं है। और लास्ट टाइम इवन जब पॉइंट्स हमारा जो स्मैश रूल है वो इन प्ले था, तो उसको अचीव करने वाली सिर्फ 3 टीमें थी, सिर्फ 3 टीमें थी। आखिरी मैच तक बात गई थी, आखिरी मैच में भी एक टीम ने स्मैश पॉइंट एक्टिवेट किया था, लेकिन आप हिसाब लगाएं कि यहाँ पर हमारे आज के 4 मैचेस के बाद ऑलरेडी 4 टीमें हैं जो स्मैश रूल के साथ बैठी हुई हैं। वेल अरोरा अपने आप को बहुत करीब देख रही है स्टेट इवेंट के ट्रॉफी के, बिकॉज अगर देखा जाए हम टूर्नामेंट के स्टार्ट में ये बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस स्टेट ट्रॉफी की वो अरोरा को है। S2G इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो ग्लोबल चैम्पियनशिप का टाइटल। इनके मुकाबले में भी कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको हमने देखा इससे पहले स्टेट इवेंट्स के अंदर डोमिनेट करते हुए। थ्राइव्स उनके पास ग्लोबल ओपन का टाइटल है, लेकिन अरोरा जितनी उतना ही दूर हमें नजर आती है हमेशा टाइटल से। #3 #2 नाम को आते हुए देखा, लेकिन क्या इस बार अरोरा वो ख्वाब जो उन्होंने देख रखा है पिछले 3-4 सालों से उसको यकीन में तब्दील कर पाएंगे? क्या हकीकत बनाया जाएगा? जानने के लिए जाएंगे सीधा हमारे अगले मैच की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, दिल की धड़कनें थाम लीजिए, मिरामर का मैच अपना आगाज लेकर जाने वाला है। लीग स्टेज की बात करें, 4 थ्राइव्स के मिरामर के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉइंट से सबसे ज़्यादा अच्छी एवरेज रही उनकी, लेकिन अभी लेट्स सी क्या होता है। 4 थ्राइव्स उनके मिरामार्स अच्छे नहीं जा रहे। आज के दिन इन 2 मिरामार के मैचेस के ऊपर अच्छा खेलना पड़ेगा अगर आना है टॉप 3 के अंदर, अगर फिनिश करना है सेकंड स्पॉट पर, थर्ड स्पॉट पर। इन दोनों मैचेस में डोमिनेशन ज़रूरी है। बहुत मौके मिले, बहुत मौके गवाए, बहुत गलतियां की, जोन शिफ्ट्स आए तब भी जोन नहीं साथ दे रहा, तब भी हर सिचुएशन में आपको टेस्ट किया गया है। लेकिन अब ये आखिरी 2 मैचेस जिनमें आपने अपने इम्तिहान को सही तरीके से निभाना है, जस्टिफाई करना है कि आप यहाँ आए तो आए क्यों। एक चिकन डिनर तो मैं देखना चाहता हूँ 4 थ्राइव्स का, उसके बगैर तो मैं कहूँगा कि मेरा दिल नहीं मुतमईन हुआ कंपटीशन से। इनफैक्ट सभी देखना चाह रहे हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं चिकन डिनर का, और आना चाहिए, बनता भी है। जिस तरह से एफर्ट किया गया है टीम के एंड से एट टाइम्स, बस आज का जो दिन है वो आप उस तरह से एक अच्छा स्टार्ट के तौर पर हमें नहीं नजर आया। और फर्स्ट मैच अगर देखा जाए ना वाज द मैच जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट से उसके बाद हमने तवक्को रखी कि शायद ये दूसरा ही मैच है जिसमें आपको स्मैश पॉइंट्स है वो अचीव होते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन अगर ज़्यादा भी इतने दूर जाना पड़ता है तो थर्ड मैच तक बात बन जाएगी, लेकिन दूसरा भी, तीसरा भी, और उसके बाद पिछला मैच हमने देखा हालांकि जिस तरह का सर्कल था, डिसआर्ट हुए हम लोग, ज़ाहिर टीम हमसे ज़्यादा डिसआर्ट हुई कि उन्होंने वो जो एक पॉइंट्स थे, वो जो नंबर था हासिल नहीं कर पाए वो लोग, जो इस कंपटीशन में अलाइव रहने के लिए, इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं। मैच हमारा लाइव होगा, किसी भी लम्हे आपको प्लेन पाता आता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट कि हमारा मिरामार का मैच हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। आज के दिन का हमारा पहला और ओवरऑल पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप ग्रैंड फाइनल्स का ये 5वां मिरामार का मैच है। जिस तरह से हमने हिस्ट्री की बात भी की, तो 4 मिरामार के मैच जो टीम्स खेल चुकी हैं, इस मिरामार के मैच में 4 टीमों के पास मौका कि वो इस एक ही मैच को विन करें, अपने लिए ट्रॉफी अपने नाम कर लें, या फिर वो जो बाकी टीम्स हैं, वो जो 12 नाम है उनमें से कोई एक नाम से कैंडिडेट करे और फिर से हमें एक और मैच तक जो है वो इंतजार करना पड़े कि कौन चैंपियन बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने पोर्टल। लेकिन बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे टीमों के डिस्पोजिशन की। अर्ली ऑन ड्रॉप फाइट होती हुई दिखाई दे सकती है। शायद कोई टीम किसी दूसरी टीम को चैलेंज करने के लिए आ गया है। नॉन्गशिम रेड फोर्स, उनको देखा जाए वो हमेशा से इसी साइड पर उतरना पसंद करते हैं और आई स्पोर्ट्स उनके आउटस्कर्ट में उतरना चाहती है। लेकिन क्या हो रहा, लाको ब्रेडिया को छोड़ के, बटरफ्लाइज को छोड़कर नॉन्गशिम रेड फोर्स के साथ उतरना चाह रही है। क्या वो उनसे फाइट लेना चाहेंगे? क्या S2G को चैलेंज किया जाएगा, टॉप फाइट ली जाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा जानना जरूरी तो है, लेकिन चंद सेकंड्स में सर्कल भी बन जाएगा। एंड पोर्टल मुझे लग रहा है कि सर्कल मोनते नहीं वो लाडफिलिया इस साइड पर जाने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आज तक मिरामार नहीं खेला। लेट्स सी, सर्कल अभी के लिए हमारे पास एक सवाल जरूर है, इसका जवाब भी हमें चाहिए। और नजर है सर्कल पर, लेकिन सर्कल बनेगा और क्रूजल वैली वो जो आपको टॉप साइड है वहां पर सर्कल जाता हुआ दिखाई देता है। स्टैंडर्ड डेल पेट्रॉन है सर्कल के अंदर, बेंडेटा है और रॉस्टियंस बिल्कुल जो है वो कॉर्नर्ड है। लेकिन
सर्कल के अतबार से अगर हम टीम्स की बात करें, 4 थ्राइव्स हो जाएंगे पेकाडो, वहाँ पर प्लेयर्स की व्हीकल्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं अर्ली ऑन। लेकिन जहाँ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, टॉप प्लेयर्स आपके सामने ऑन द स्क्रीन है, स्कारफेस हैं, QWZ हैं, TZ हैं, 27 एलिमिनेशंस इन टोटल इन प्लेयर्स की तरफ से कंफर्म किए गए। और ये एक चीज़ भी है कि जहाँ हम बात करें हमारे ओवरऑल कंपटीशन की कि एक चैंपियन बनकर निकलेगा, वी ऑल नो कि एक MVP प्लेयर भी है जो आपको इस टूर्नामेंट का एस टीयर के टूर्नामेंट का इनफैक्ट जो MVP टाइटल है अपने नाम के साथ अपनी अचीवमेंट्स में जो है ऐड ऑन करता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले आई थिंक हम टॉप को देखते आए हैं, हमने और भी प्लेयर्स को अरोड़ा देखा यार, है अरोड़ा बहुत नीचे थी, बड़ा जो नाम है तारीख में रकम करते रहे। अगर पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप की आप बात करते हैं तो खैर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड कप इससे पहले हमारे पास कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं वो हमें दिखाई दिए, बिकॉज शायद मैंने लिख रखा था ये, जी हाँ, FMVP 2024 रिजेक्ट के रिजी बने थे 2024 में, और 2025 में अल्फा गेमिंग के डॉक ने टाइटल नाम किया था अपने। बिल्कुल ठीक है आपने, उस टाइटल की भी जंग है, उस पहले पायदान की भी जंग है, लेकिन चलें S2G के प्लेयर्स हमारे सामने हैं, फिर से दोहराया चाहे लास्ट मैच में जो उन्होंने किया उससे अनफॉर्चुनेटली रिकवर करना पड़ेगा, हो नहीं पाएंगे लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि S2G इतना करीब आ चुके थे, पोर्टल इतना करीब आ चुके थे, एक गलत डिसीजन मेकिंग, एक गलत फैसला इनको पूरी तरह से पिछाड़ देता है। बट हाँ, थोड़े बहुत एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले तो सही, लेकिन इस सब के बावजूद अरोरा एंड नॉनस्टॉप फोर्स का उनके करीब रहना खटकेगा तो सही। 139 पॉइंट्स पर आपको दिखाई देती है S2G, 140 पॉइंट्स पर आपको अरोरा एंड नॉनस्टॉप फोर्स दिखाई दे रही है। नीचे देखा जाए ये अरीना थोड़ा दूर तो है, लेकिन इस मैच में कवर अप किया जा सकता है उस लीड को। 4 थ्राइव्स एक बड़ा मौका है, चिकन डिनर निकालें, हैश 4 पर आएँ, फिर चिकन निकालें और उनकी तरफ से जंप किया जा सकता है, लेकिन गॉडल वर्सेस ओजी फिर से होता है। गॉडल पहला एलिमिनेशन पॉइंट निकालती हुई दिखाई देती है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि दोनों एक ही रीजन से आई हुई टीम इस तरह से लड़ेंगी, लेकिन हमने कई बार इनको देखा है आमने सामने आते हुए, और कई बार ऐसा हुआ कि गॉडल ने ही ओजी को एलिमिनेट किया। बिल्कुल, और इस मौके पर भी गॉडल उन्होंने आगाज़ किया इस मैच में। शायद इससे जो सेकंड लास्ट आई थिंक हमारा जो एरेंगल का मैच था उसमें प्रोबेबली ये फाइट हुई थी यार, अगर इनका जो आगाज़ है एरेंगल का जो पहला मैच था उसमें भी हमने ये फाइट देखी है, तो वाकई वक्तन फवक्तन ये फाइट होती रही है, चाहे वो अर्ली ऑन आप बात करने चाहे या टाइम्स कुछ अच्छा वक्त के बाद की बात की जहाँ पे छोटी मोटी रोटेशन टीम कर रही होती हैं और तब आपको जो फाइट से बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन ऑल आइज ऑन टीम अरोरा गेमिंग, ऑब्वियसली अरोरा गेमिंग उन्होंने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला है, 25 पॉइंट्स निकाले हैं और आज के दिन का सबसे बड़ा ये मैच था। इस तरह से हम इनको जानते हैं कि ये वो टीम है जो किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। इनफैक्ट इनका ना परफॉर्म करना सरप्राइज होता है, इनका परफॉर्म करना बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, और यही चीज़ है पिछले मैच में आपको दिखाई दी। लेकिन जैसे ये आए इस दौड़ में अब टीम नॉनस्टॉप रेड फोर्स को फिक्र पड़ चुकी है, अब टीम S2G जैसे उन्होंने ज्वाइन किया इस कंपटीशन को, अरोरा गेमिंग जो उनको भी पता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, इनफैक्ट हम लोग वो 2 या 3 नाम नहीं है, तो ये जो नंबर है बढ़ता चला जा रहा है और इस पूल में से हर किसी को सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए। बट एक नाम आई थिंक जो ऑन द स्क्रीन है हमारे सामने, बहुत डिसहार्ट होंगे टीम निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स, जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी आई है ग्रैंड फाइनल्स के अंदर लेटली, क्योंकि जब दिन का आगाज़ हुआ था ग्रैंड फाइनल्स के डे 1 का खास तौर पे आगाज़ हुआ था, तो निग्मा गैलेक्सी ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। पहले मैच का विनर चिकन डिनर वो अरोरा गेमिंग के साथ फाइट, और उस फाइट में बहुत अच्छे तरीके से 4v4 प्रॉपर फाइट में डोमिनेट करके जाना, उस फाइट को अच्छे तरीके से एंड करना, और इवन 4 मैचेस खेलकर जब हमारा ओवरऑल स्टैंडिंग भी बनी थी फोर्स जी की, तो आई बिलीव टॉप 3 में थी, बासानी टीम टॉप 3 में थी, त्यांबा के बाद इन्हीं का नाम था ई अरीना के साथ। लेकिन जब हम डे 2 पर गए तो निग्मा गैलेक्सी बहुत ख़राब खेली, उनके जो आखिरी 6 मैचेस थे कल के दिन के, उसमें 28 पॉइंट्स निकाले टीम ने, इवन 7 भी कर लें तब भी 30 पॉइंट्स बनते हैं, तो वो जो सिर्फ दिन का पहला मैच था कल के दिन का सिर्फ उसमें 15 है, बाकी सब में उनके ख़राब पॉइंट्स हैं। तो ये तो निग्मा गैलेक्सी ने किया है, और आई थिंक निग्मा गैलेक्सी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपसेट होगी अपनी इस खराब परफॉर्मेंस से। आपने गैलेक्सी अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस है वो हमें नीचे से नीचे ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो पॉइंट्स की इतनी अच्छी होगी नहीं, लेकिन उल्फ को देखा जाए इनके सामने आएंगे 4th राइज के प्लेयर्स। ज़ैफा गाड़ी रोक दी जाती है, फाइटिंग इंटेंट शो किया जाएगा उस ज़ैफा की जानिब से, लग रहा है कि अपने पीछे हिल पे कोई प्लेयर आया तो आपको एक्सपोज कर सकता है। 4th राइज उनके प्लेयर्स रिग्रुप करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ फलक को पड़ेंगे वो बुलेट्स, लेकिन काफी लो एचपी किया जाएगा स्कारफेस को, एक और गोली लगती तो शायद स्कारफेस यकीनी तौर पर स्कारफेस नॉकआउट हो सकते थे, लेकिन फॉल बैक किया जाएगा। ऑल्दो फलक उन्हें हेडशॉट कनेक्ट होता तो शायद वो भी नॉक हो सकते थे। दोनों साइड्स के ऊपर फॉर्चुनेटली इनफ कैजुअलिटी डील नहीं होती, लेकिन ज़ैफा को इसीलिए भेजा गया था इस साइड पर
कि आप यहाँ बैठे, मैंने गाड़ी चेंज करनी है, बट थोड़ा सा रिस्की ज़रूर था, जो कि दोनों ही साइड्स पर रिस्की था। दोनों ही टीम्स बच जाएंगी, दोनों ही टीम्स का कोई भी प्लेयर यहाँ नहीं गिरेगा। खैर निग्मा गैलेक्सी की बात हम कह रहे थे, स्टार्टिंग हमने देखा पहले दिन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खेला गया। ग्रैंड फाइनल्स में ऐसी डोमिनेशन दिखाई कि हमें लगा कि मे बी इट इज़ निग्मा गैलेक्सीज टाइम, लेकिन डे 3 के ऊपर तो जो किया सो किया, डे 2 इनका बहुत शानदार नहीं रहा था। ठीक है, अच्छा खेला था इन्होंने, बट डे 3 खेलना बेहतर है। अभी तक के जो मैचेस हैं बहुत बुरे खेल रही है निग्मा गैलेक्सी। अगर टॉप यकीनन। लेकिन टीम 4 थ्राइव्स वर्सेस टीम वुल्फ स्पोर्ट्स फाइट होगी और दोनों टीम एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी, लेकिन एरन थोड़ा दूर रहकर टीम 40 के हुज़ैफा उनको नॉकआउट करने में कामयाब हो जाते हैं। टीम वुल्फ के स्कारफेस इज लोन एचपी, उनको नॉक डाउन करना है, सिर्फ एक बुलेट है यहाँ से जो कनेक्ट होते साथ ही प्लेयर नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन वुल्फ के प्लेयर्स उनको देख पा रहे हैं कि वो आएंगे यहाँ पर फाइट को ज्वाइन किया जाएगा, लेकिन 40 फलक एज सून एज पॉसिबल इस खिलाड़ी को नॉकआउट कर देते हैं और अब ये कंफर्मेशन जो है वो दी जाएगी एज सून, जी हाँ दी जाती है। और टीम वुल्फ स्पोर्ट्स जैसे ही वो यहाँ पर आना चाह रहे थे, उनको एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि प्लेयर जो हमारे नॉकड आउट हैं उनको हम बचा पाएंगे। कैसे नॉक किया फलक ने, वो तो नजर भी नहीं आए। बिल्कुल, आई थिंक अचानक से प्लेयर्स है वो, खैर आई थिंक जो कह लें कि शायद T40 के साथ किया है टीम वुल्फ के प्लेयर ने, कि उन्होंने दूर से नॉक किया है, वही कुछ ऐसा हुआ कि फलक ने भी जो है वो आप समझ लें आउट ऑफ नोवेयर ये नॉक निकाला। बट अच्छा स्टार्ट है, डिसेंट है कि टीम वुल्फ स्पोर्ट्स के साथ इस फाइट में टीम 40 ने अपना कोई प्लेयर गवाया नहीं। अपने जितने हो सकते हैं 6 पॉइंट्स से। जी हाँ बिल्कुल, आप प्लेयर गवाया नहीं है कोई भी, ये सबसे अच्छी चीज है। लास्ट फाइनल याद है जो के लिए खेली थी, वो प्रेशर जो है उनके सर से थोड़ा बहुत उतरेगा जरूर। इस तरह की 3-4 फाइट छोड़ ली गई, 2-3 पॉइंट्स निकाल लिए गए, डेफिनेटली प्रेशर उतरेगा। लेकिन सर्कल का शिफ्ट देखिए आप, कितना बुरा शिफ्ट जाता है एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड पर, जहां निग्मा गैलेक्सी गाड़ी में घुस के हर एक काफी ज्यादा खुश होंगे। ईडा स्पोर्ट्स, ओला स्पोर्ट्स, ये सारी वो टीमें जो कि बॉटम पे मौजूद है, वो भी काफी खुश होंगी। सर्कल उनको मिल चुका है, लेकिन एस2जी शायद उन्हें चैलेंज देखने को मिल सकता है। सामने उनके ओला स्पोर्ट्स दिखाई दे रही है, लेकिन ओला से फाइट ली जाएगी या फिर उल्फ से फाइट ली जाएगी। उल्फ भी वहीं पर है। इस सर्कल के चलते रोटेशन करने से पहले थोड़ा सा सोचना तो है, लेकिन ओजी वर्सेस टीम 4 थ्राइव्स ये हो सकता है। 4 थ्राइव्स के प्लेयर्स के सामने से ओजी के प्लेयर्स आ रहे हैं। ओजी के पास कौन के लिए कुछ है नहीं, और ऐसे में वो किसी भी फाइट में आना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे। लेट्स सी अगर यहाँ फाइट होती है तो क्या 4 थ्राइव सफर करती हुई दिखाई देगी, या उनकी जानिब से पॉइंट्स निकाले जाएंगे, या फिर दोनों ही साइड से टीमें अबैंडन करेंगी इस एरिया को। ऑल्दो मिनी मैप पे तो देखा हमने काफी करीब एक दूसरे के थे। और ओरा लास्ट मैच में जो ओरा बिखेरा है, एक और मैच अगर बिखेर दिया तो ट्रॉफी आपकी। बहुत करीब आ चुकी है ये टीम 20 मैच पॉइंट, बल्कि बहुत करीब आ चुकी है ये टीम भी ट्रॉफी जीतने के। यस, टीम अरोरा दे आर द वंस मोस्ट एक्सपीरियंस टीम फॉर अ रीजन। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स इनके साथ साथ आई थिंक एक और नाम जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है, और नॉन्गशिम रेड फोर्स ने शायद जो कमी थी टीम DRX की इन द ग्रैंड फाइनल्स, उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। और ना सिर्फ कि आपको टीम जो ग्रैंड फाइनल्स के अंदर चैंपियन की बैटल होती है उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई दे, बल्कि #1 को होल्ड करके रखा हुआ है टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स ने। तो बल्कि आप देखें कि टीम DRX से भी अच्छी परफॉर्मेंस है। DRX जो है वो तो हमने बैक टू बैक देखा कि वो 2 PMWC उन्होंने खेले, ग्रैंड फाइनल्स तक वो गए, लेकिन #4 आपको दिखाई दिया। लेकिन जब नॉन्गशिम रेड फोर्स पे जिम्मेदारी आई तो उन्होंने कहा कि बस अब जो है वो हमने ट्रॉफी पर ही अपना हाथ साफ करना है। लेकिन ओजी के प्लेयर तो यहाँ पर मौजूद हैं, टीम ओजी के आतंकी, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। ओजी के आरू है जिन्होंने शायद दूर से फायर किया, और टीम वुल्फ स्पोर्ट्स पहले टीम 4 थ्राइव्स, अभी के लिए टीम ओजी। हर जगह फाइट चल रही है टीम वुल्फ के प्लेयर्स की, और ये फाइट में जो नुकसान है वो टीम को जरूर पहुंचेगा, क्योंकि 2 खिलाड़ी एलिमिनेटेड हैं, सिर्फ एक और खिलाड़ी है जो कि यहाँ से कंफर्म करना है। लेकिन थर्ड पार्टी करने के लिए टीम अलूला के प्लेयर्स वो भी आसपास आना चाहेंगे, लेकिन ओजी के आरू ये क्या कर दिया आपने। आरू का अपना ही मोलोटोव अपनी ही आग में अपने खिलाड़ी को जला डालेंगे, लेकिन उल्फ के सोललेस उनको भी यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा, और टीम वुल्फ स्पोर्ट्स डाउन टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग। लेकिन ओजी का अब सिर्फ एक खिलाड़ी, और अलूला यकीनन थर्ड पार्टी करना इन दोनों ही टीमों को एलिमिनेट कर सकता था यहाँ पर। बट अलूला के प्लेयर आई थिंक इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर नहीं मिली है कि वो प्लेयर आखिर वाकई नीचे वाली साइड पर है या फिर नहीं। जी हाँ, स्पाइडरमैन भी आ चुका है लाइव फ्रॉम पेरिस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये टॉम हॉलैंड खुद ही हो, लेकिन जितना इनकी खोपड़ी का साइज है और उसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। थोड़े से हमारे जो स्पाइडरमैन है, मुझे लगता है उन्होंने डाइट छोड़ दी है, बिकॉज यू कैन सी दोज क्यूट लिटिल थिंग्स। बट खैर फिलहाल के लिए बात करेंगे नॉन्गशिम रेड फोर्स की। NS चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं,
#1 पर ये टीम मौजूद है। निगमा गैलेक्सी, उनको भी देखा जाए, वो भी आना चाहते हैं, स्मैश रूल पॉइंट्स अचीव करना चाहते हैं। उनके करीब ही एक टीम मौजूद, उला के क्विक आगे आएंगे, उनकी तरफ से गाड़ी घुमाई जाएगी, बिल्कुल प्लेयर के मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन उला कोई भी रिटेलिएशन आती नहीं है उनके ऊपर निगमा गैलेक्सी की साइड से। लगता है राउफ यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते, लेकिन राउफ ये किया क्या आपने? आपको लगा आपको कोई देख नहीं रहा, पर दूसरी साइड पर S2G वर्सेस फुल थ्राइव्स एंड फलक नॉक हो जाएंगे। फलक को फिनिश करने की कोशिश करते हुए टीम S2G दिखाई देती है, लेकिन S2G की इस फाइट में क्या थर्ड पार्टी होगी? क्या फुल थ्राइव्स रिवाइव देगी अपने प्लेयर्स को? ढेरों सवाल तो हैं, बट अला यहाँ जो निगमा गैलेक्सी के साथ किया, कमर तोड़ दी जाएगी उनकी। बेशक, और अभी के लिए टीम अल-उला, ये जो फाइट है वो आपको होते हुए दिखाई दी उस टीम की तरफ से। अल-उला को भी इनफैक्ट अगर हम बोले तो पहले 2 मैच में टीम अल-उला ऐसा जैसे एब्सेंट रही हो, लाइक बिल्कुल जो अटेंडेंस है उन्होंने अपनी मार्क करवाई ही नहीं ग्रैंड फाइनल्स की। लेकिन जब तीसरा दिन आया तो अब मुझे लगता है कि अल-उला जो है वो कुछ अलहदा ही से वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है इस लॉबी में। पहला मैच 17 पॉइंट्स, उसके बाद 9 पॉइंट्स, और लाइक फिर जाके अगेन उनको पहले 2 दिन के जो मैचेस हैं वो याद आ गए। लेकिन अल-उला जो है मतलब ठीक है कि आप नीचे थे, आप दूसरों को तो एटलीस्ट ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, लेकिन जाते जाते अभी भी इस मैच के अंदर आपको लग रहा है कि कुछ और पॉइंट्स अभी आने वाले हैं। सो तीसरा पॉइंट है जो टीम ने कंफर्म कर लिया है, लेकिन टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस टीम फुरिया के साइलेंस हैं, और फुरिया के बाकी जो 2 प्लेयर्स रोटेशन कर रहे हैं उनको भी इस फाइट में हम जो है वो शायद आता हुआ देख पाएँ। लेकिन टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स सो फार बहुत आई थिंक स्मार्ट प्ले किया है इस टीम ने, और टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स के खास तौर पे अगर आप इरेंगल के मैचेस की बात करें तो इरेंगल के मैचेस में इनफैक्ट ये टीम भी बड़ा करीब जा रही थी। और वो जो इरेंगल का सेकंड लास्ट मैच आपने देखा था जिसमें सोलो प्लेयर इनका सर्वाइव कर रहा था, तब तो लग रहा था कि टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स ने कुछ अलहदा ही इनविजिबिलिटी क्रिएट कर ली है कि वो जो प्लेयर है एक गिली सूट पहन के रोड पर लेट गए थे, एक प्लेयर वैसे ही रोड पर लेट चुके थे कि मुझे कोई देखेगा ही नहीं, लेकिन तब भी उनको स्पॉट किया गया था। लेकिन बैक टू द फाइट्स, नॉन्गशिम वर्सेस टीम फुरिया। हाँ बिल्कुल, मजबूरी तो टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स की नहीं है सारी फाइट में आना, वो बड़े आराम से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन साइलेंस के पास एक अच्छी पोजीशन है। साइलेंस को शायद इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, उनके करीब भी आते हुए प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल तो बैक साइड पर देखा जाए नॉन्गशिम रेड फोर्स के प्लेयर्स भी स्प्लिट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से होरा आ जाएगी। इट इज गोइंग टू बी अनदर फाइट, होरा वर्सेस नॉन्गशिम रेड फोर्स। ये फाइट बनती हुई दिखाई दे सकती है। एंड लुक एट होरा, किस तरह से जब किसी टीम के पास खोने के लिए कुछ बचे ना तो वो किस तरह से खेलती है। हो रहा है यहाँ पर चेस गेम खेलना चाहती थी, लेकिन डिजी उन्होंने सारे बूस्टर्स लगाए अपनी गाड़ी के, निकलेंगे सारी सिचुएशन से बाहर। जान जाते हैं कि इस साइड पर हो रहा मौजूद है, या जो भी टीम है इस साइड पर वो पुश कर रही है, बट अब मुश्किल बन जाएगी नॉन्गशिम रेड फोर्स के लिए। एक साइड पर क्रॉस फुरिया बनाएगी, एक साइड पे हो रहा, दिक्कतें बढ़ेंगी तो सही, लेकिन जोन का शिफ्ट आता है। फोर्थ राइट स्टिल इनसाइड द जोन, उनके साथ साथ त्यांबा के पास सर्कल है, ईडा के पास सर्कल है, वाइटैलिटी सर्कल में है, निगमा गैलेक्सी के प्लेयर्स भी सर्कल में दिखाई देते हैं। ई अरीना जिस साइड पर है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा उनको किसी भी टीम की जानिब से, लेकिन यहाँ वाइटैलिटी वर्सेस टीम त्यांबा होता हुआ दिखाई देता है। त्यांबा के एक प्लेयर को नॉक किया गया, वाइटैलिटी 2-3 एंड्स पर बिजी दिखाई दे रही है। जी हाँ, और टीम वाइटैलिटी वंस अगेन वो जो फाइट्स में अपनी इंक्लूजन है वो करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले मैच की आई थिंक जो यादें हैं वो टीम रिमूव करना चाहेगी, उनको बिल्कुल मिटाकर इस मैच में अपने जो अच्छे एलिमिनेशन उनकी तवक्को करेगी, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा नहीं हुआ था और आखिरी उस मैच में टॉप 3 टॉप 4 तक टीम आई ज़रूर, बट फिर टीम अरोरा गेमिंग जो है उन्होंने उनको इस मैच से एलिमिनेट किया था, और यही एक वजह रही कि टीम वाइटैलिटी आपको नंबर 13 नंबर 14 इससे जो है वो मजीद ऊपर आते हुए नहीं दिखाई दे पाई। सो ये जो स्ट्रगलिंग फेज है टीम वाइटैलिटी का बड़ा ही अलग है, बड़ा ही हटके है। लेकिन 40 ओके, टीम 4 थ्राइव्स वर्सेस टीम गॉडल, क्या होगा? टीम गॉडल के प्लेयर्स वाकई करीब आए हैं, थोड़ा सा आपको जो नीचे की जानिब एस पावर दिखाई दे रहे हैं। दाएं जानिब टीम गॉडल के बाकी 3 खिलाड़ी हैं, फिर टीम S2G भी है, हो सकता है टीम S2G वर्सेस टीम गॉडल आपको होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से गॉडल के प्लेयर मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर टीम S2G के प्लेयर्स हैं और ये फाइट होने के इम्कानात बरकरार रहेंगे। लेकिन फिर पीछे की जानिब से टीम S2G के टीम अरोरा गेमिंग भी आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। सो ई अरीना, टीम S2G, टीम अरोरा गेमिंग, 3 वो कंटेंडर्स जिनको चिकन डिनर चाहिए वही एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन अरोरा के एक प्लेयर बहुत करीब से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बाल बचते हुए अपने आप को लेकर आ जाएंगे सर्कल की जानिब। लेकिन अभी भी इनके लिए जो जगह का इन्होंने इंतखाब कर रखा है वहाँ तक पहुँचना शायद ज़्यादा आसान नहीं, क्योंकि ई अरीना के खिलाड़ी जो हैं वो मेरी मैप में आपको बिल्कुल आसपास दिखाई दे रहे हैं।
वेल अरोरा गेमिंग शायद उन्हें जगह मिल जाएगी सर्कल के अंदर, लेकिन वेट अ सेकंड, S2G के प्लेयर्स की जानिब से नॉकआउट कर दिया जाता है। लॉस्ट यहाँ फिनिश करते हुए दिखाई देंगे। गॉडल वर्सेस टांबा भी हो जाएगा, जहां पर फोर्थ राइव शायद थर्ड पार्टी करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इस साइड पर देखा जाए ई अरीना, उनको अंदाजा है कि चंद प्लेयर्स उनके आसपास गाड़ियां घुमा रहे हैं। जोकर के पास काफी अच्छी जगह है, वहां से कुछ डैमेजेस दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए कामिकाज़े एलिवेशन बड़ी अच्छी मिलती है, इन्फॉर्मेशन काफी लेंगे यहाँ से। लेकिन अरोरा वो पहला प्लेयर गवाया गया, अब थोड़ी सी जगह मिलती है, थोड़ा सा हार्ड कवर मिलता है आसपास कहीं ना कहीं चंद कॉम्पाउंड्स में जिनको होल्ड किया जा सकता है। अरोरा कर क्या रही है, जहां भी जा रहे हैं ये फैसला गलत साबित हो सकता है। हर तरफ उन्हें प्लेयर्स दिखाई देंगे, वो कॉम्पाउंड्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रुख बनाएंगे तो सही, लेकिन वहां पर एक और टीम आ सकती है। शायद त्यांबा वहां आना चाहती है। ये अरीना इन द मीन टाइम वो जो क्रेट्स पड़े हुए हैं उन पर फीस्ट करते हुए दिखाई तो देंगे, लेकिन अरोरा उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, कहाँ जाना है। S2G क्लोज इन कर सकती है, ई अरीना क्रॉसर्स बना सकती है, ईडा सामने मौजूद है, उला के प्लेयर्स एक साइड पर हैं। अरोरा गाड़ी घुमाने से जगह नहीं मिलेगी, जगह ढूंढनी पड़ेगी। पैनिक मोड एक्टिवेट बतावा, या शायद वो सरवाइव करना चाह रहे हैं कि इतनी देर तक बचे रहें जब तक सर्कल का शिफ्ट नहीं आ जाता। 13 सेकंड्स और उनको बचे रहना इन व्हीकल्स के अंदर, और फिर जहां शिफ्ट जाएगा वहां वो स्लैमिन देंगे। रीफर्स को देखा जाए टीम से काफी हटके खेल रहे हैं पोर्टल। इन जोन के शिफ्ट के बाद रीफर्स इन अरोरा के बाकी दो प्लेयर्स, शायद उनमें से किसी पर जोन आ जाए। लीजिए सर्कल आता है इसी साइड पर एंड अब अरोरा रीग्रुप करेगी, लेकिन इस सारे रीग्रुप के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि अरोरा फोर्थ राइज के सामने आ जाए। ऑल्दो S2G को भी अब आगे आना है और फाइट किए बगैर उनको भी जगह मिलने नहीं वाली। वो आगे बंदे आ रहे हैं। और टीम S2G वर्सेस टीम अरोरा गेमिंग वर्सेस लेट्स सी कौन होने वाला है, क्योंकि सर्कल्स है वो तो शिप लेके जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। लेकिन टीम फ्लैश वर्सेस टीम गॉडल, और गॉडल के आखिरी खिलाड़ी एडमिनो जो कि इस मैच में मौजूद थे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पूरा स्क्वाड अब आपको मैच से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हमारे सामने भी टीम फुरिया वर्सेस टीम नॉन्गशिप रेड फोर्स, एक प्रॉपर फाइट है। लेकिन फुरिया के प्लेयर्स के खिलाफ टीम नॉन्गशिप रेड फोर्स फाइट नहीं करना चाहते, वो निकलेंगे, गाड़ियां तेजी से भगाई जाएंगी और नॉन्गशिप रेड फोर्स अपना इस मैच का जो सर्वाइवल है उसको आपको प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दी जाएगी। सो आई थिंक ये जो टैक्टिक है बड़ा ही फेमिलियर, हम लोग जैसे से फेमिलियर हो चुके हैं, आज के दिन पे फेमिलियर हो चुके हैं। बिकॉज आपको पिछला जो मैच है वो याद होगा, पिछले मैच में बात कर भी रहा था हमने से पिछले मैच के अंदर भी देखा नॉन्गशिप रेड फोर्स थोड़ा पैसिव आपको खेलते हुए दिखाई दी है। स्पेशली वो अपने जो पॉइंट्स हैं अचीव करने के बाद बिल्कुल एक एक करके जो टीम्स हैं वो आ रही हैं इस जाने भी। सर्कल का ये एज है जहां पर पहले ही से त्यांबा है, टीम नॉन्गशिप रेड फोर्स है, बैक साइड पे टीम फुरिया है, फिर थोड़ा सा दूरी पर टीम वाइटैलिटी है। तो ये जो ईस्टर्न साइड है बड़ी क्लस्टर्ड है। लेकिन होरा स्पोर्ट्स वर्सेस टीम वाइटैलिटी शायद वो थोड़ा पहले हो जाए, क्योंकि वाइटैलिटी के खिलाड़ी बड़ा करीब जा चुके हैं टीम होरा के। जी हाँ बिल्कुल, वाइटैलिटी के प्लेयर काफ़ी करीब तो जाते हैं। होरा अभी तक उनके पास कोई एलिमिनेशन पॉइंट है नहीं है। पिछले 3 मैचेस हमने देखा कि होरा की तरफ से काफ़ी अच्छे खेले गए, लेकिन नॉन्गशिप रेड फोर्स उनको ये जगह मिली है जहाँ पर फरिया आना चाहती है। ऑल्दो नॉन्गशिप रेड फोर्स एजेस पर मौजूद हैं, अगले सर्कल में हर हाल में उनको यहाँ से आगे आना पड़ेगा। फरिया उनके ऊपर थोड़ी सी बुलेट्स दागी जाती हैं। अरोरा वर्सेस ईरा भी हो जाता है, अरोरा के डॉग को गिरा दिया जाएगा। अरोरा उनके ऊपर दूसरा प्लेयर भी नॉकडाउन हो जाता है। फ्लैश इस बार अरोरा को बाहर करने वाली है इस मैच से, और वो जो उम्मीद जो कि बनाई थी अरोरा ने अपने लिए ट्रॉफी की, अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी प्लेयर पर आ जाती है एंड फ्लैश के ज़ियूस उनका ग्रेनेड जाता है। अरोरा इस मैच से बाहर हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो टॉप कंटेंडर जिंदा है। 3 टीमें तीनों स्मैश पॉइंट्स अबूर कर चुकी हैं, तीनों टीमें यहाँ पर सरवाइव करती हुई दिखाई देती हैं। S2G, नॉन्गशिप रेड फोर्स, ई अरीना, तीनों का सर्वाइवल यकीनी बनता हुआ दिखाई तो देगा। लेकिन नॉन्गशिप रेड फोर्स के ऊपर फरिया आना चाहती है, पीछे से ब्लू जोन पुश करेगा फरिया। उनके पास कोई और प्लान नहीं है, वो जहां भी जाएंगे किसी और को पाएंगे, स्लैम इन दिया जाएगा। सामने से नॉन्गशिप रेड फोर्स वेलकम करना चाहेगी यूटिलिटीज के साथ, चीफ गिरा दिया जाएगा। फरिया के आई गोर्स उनको भी फिनिश किया जाता है, फरिया गेट्स एलिमिनेटेड। नॉन्गशिप रेड फोर्स पर ये स्लैम इन उनको एलिमिनेशन पॉइंट्स डिलीवर करने के मुतरादिफ बन जाएगा, लेकिन पीछे एक और टीम तैयार हो जाएगी फॉर द स्लैम इन। दिस टाइम अराउंड इट्स वाइटैलिटी जो कि यहाँ आना चाहती है, लेकिन वाइटैलिटी नॉकआउट दर्ज किए बगैर आना नहीं चाहती। फर्टुलेस के पास वो ग्रेनेड मौजूद है, टिजी नॉक होने वाले हैं, काफी करीब गिरेगा। टिजी इस सारे टाइम में हील्स लगा पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली इनफ बचते हुए दिखाई तो देंगे, लेकिन नॉन्गशिप रेड फोर्स उनको गेट कीप किया जा सकता है। इससे अगले सर्कल में उन्हें जाना पड़ेगा। जोन का शिफ्ट सदर्न साइड पे आया तो मजेदार होगा,
लेकिन सर्कल का शिफ्ट कहाँ जाता है जानने के लिए मैप फीड देखना जरूरी है। मैप हमारे सामने आ जाता है। इट्स सेंट्रलाइज शिफ्ट जो कि पूरी तरह से ओला स्पोर्ट्स का फायदा तो करता है। फ्लैश भी सर्कल में जगह बना पाएगी, लेकिन S2G वर्सेस 4 थ्राइव्स ये शायद होता हुआ दिखाई दे। लेट्स सी एंड 4 थ्राइव्स इस ये जो फाइट है आई थिंक वो करना ही पड़नी है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज काफी देर से हम देख रहे हैं कि टीम S2G वर्सेस टीम 4 थ्राइव्स की जो एक फाइट है वो बन रही है। फिर दरमियान में एक दो और नाम भी हमने देखे कि S2G के बिल्कुल पास है टीम अरोरा गेमिंग भी आपको रोटेट करते हुए दिखाई दी, लेकिन टीम 4 थ्राइव्स आई थिंक गिलफिट के अंदर जो नाम है वो आया है, प्लेयर्स है कुछ नॉक आपको करते हुए दिखाई दी। अभी तक के लिए एक पॉइंट है जो टीम ने इस मैच में कंफर्म कर रखा है, लेकिन टीम त्यांबा वर्सेस टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स मॉलोटोव एक्सचेंज होते हुए ग्रेनेड्स निकलेंगे और टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स वो टीम जो कि अगर चिकन डिनर कर गई, अगर ये टीम ने इस मैच को डोमिनेट कर दिया तो वो इस मैच के बाद चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन त्यांबा नॉकआउट निकालेगी। चिंगी गेट्स नॉकड आउट, लेकिन उनबिन वो नॉकड है, उसके साथ सो इजी उनको भी रिवाइवल लेना है। इट्स अ 2v2 फाइट, लेकिन 2v3 में जाएगी बिकॉज़ माइलून को रिवाइवल दे दिया जा चुका है। वाइटैलिटी वो थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुकी है, लेकिन नॉन्गशिम वो डाउन हो रहे हैं। दे आर प्रोबेबली गोइंग टू बी आउट ऑफ द मैच एज वेल, क्योंकि त्यांबा ने सेटबैक दे दिया है, लेकिन टीम त्यांबा को जाते जाते भी टिजी और XZY ये दो खिलाड़ी यहां पर भारी पड़ेंगे, लेकिन टीम त्यांबा उनको एलिमिनेट करने की जो खुशी है वो रास नहीं आएगी टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स को, क्योंकि वही हुआ जिसका डर था और टीम वाइटैलिटी बड़े वाइटल टाइम पर यहां पे आई और नॉन्गशिम का खेल तमाम किया उन्होंने। 21,000 गए ब्रो। जी हाँ बिल्कुल, दोनों टीमें लॉबी चली जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 4 थ्राइव्स वर्सेस फ्लैश की फाइट बनती हुई दिखाई देगी। बाउंस गिरा दिया जाता है, T2-4 ट्रेड हो जाएंगे। S2G के प्लेयर्स दो प्लेयर्स गिराते हुए नजर आएंगे। MCG की मिनी 14 चलती है, दोनों प्लेयर्स गिरेंगे। फ्लैश के प्लेयर्स गिरने के साथ साथ 4 थ्राइव्स इज ऑन द लास्ट मैन स्टैंडिंग। वाइटैलिटी उनके प्लेयर्स भी ईडा के हाथों गिरते हैं, chaos बर्पा हो जाएगा हर साइड पर, लेकिन 4 थ्राइव्स उन पर स्लैम इन दिया जाएगा। ज़ैफ़ा अकेले बच जाते हैं। S2G के एक प्लेयर को अगर फिनिश कर दिया गया तो कहानी बदल सकती है, लेकिन S2G विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर टीम 4 थ्राइव्स को इस मैच से बाहर तो करेगी, बल्कि साथ ही साथ वो टीम फ्लैश के ऊपर भी एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालेगी। 4 थ्राइव्स ने जो नॉक निकाले थे उनको भी कंफर्म किया। S2G एक बार फिर से बहुत करीब आ जाती है, बहुत करीब आ जाती है ट्रॉफी जीतने के। 4 थ्राइव्स इस मैच से सिर्फ 2 ही पॉइंट्स निकाल पाएगी, लेकिन ईडा के प्लेयर उनको भी बाहर किया जाता है और अब हमारे सामने 7 टीमें बच जाएंगी, जिनमें से ईडा के 3 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं, वाइटैलिटी 2 प्लेयर्स के साथ है, निग्मा गैलेक्सी एंड ओरा 2-3 प्लेयर्स के साथ मौजूद है, लेकिन ये अरीना S2G अभी भी ट्रॉफी की जंग लड़ना चाहते हैं। निग्मा गैलेक्सी की बात करें, उनके प्लेयर्स भी लॉबी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ प्लेयर्स वो भी एलिमिनेट करेंगे। हुरा स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स वो भी निकालेंगे, बट निग्मा गैलेक्सी अनफॉर्चुनेटली 2 प्लेयर्स पर आ चुकी है। एक बड़ा मैच निकालने के लिए जरूरी था, जो कि अभी तक के लिए निग्मा गैलेक्सी के पास नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जाए S2G ऐसा लग रहा है कि अब शायद एक कॉर्नर में फंस जाएगी, अब शायद आगे नहीं आ पाएगी। मिनी मैप की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो S2G एजेस पे मौजूद है, सर्कल में उनको आगे आना पड़ेगा, जहां वाइटैलिटी से उनका सामना होता है और मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स S2G नाम करेगी। ये टीम तो रुकने का नाम इन लेडी पोर्टल। ये जो है टीम S2G आई थिंक कंसिस्टेंट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, कह लें कि इत्मीनान है उनको कि हम लोग इस मैच के अंदर अपना जो फिनिशिंग टच है वो देंगे एंड वी आर गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज S2G आई थिंक मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जो है ये आपको दिखाई दी है डे 2 के ऊपर, और डे 2 से लेके अभी तक भी अगर बात करें तो S2G ने पिछले जो सारे मैचेस आज के दिन पर खेले हैं उन मैचेस में आपको ऐसी ही झलक दिखाई दी है। बहुत करीब आकर भी मिस आउट किया विनर सेकंड इनिंग्स को। लास्ट मैच के अंदर भी आपने देखा कि क्या सूरत हाल बनी, और इस मैच के अंदर भी फिर से टीम S2G तो S2G जो है बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाल रही है, लेकिन S2G को कौन रोकेगा, हम तो ये देखना चाहते हैं, बट कोई टीम रोक नहीं पा रही है। ईडा इनको भी नॉकआउट दिया जाएगा, ताकि द लास्ट मैन स्टैंडिंग प्रोबेबली इनफैक्ट सेकंड द थर्ड लास्ट प्लेयर, और अकेले थे, लगा ऐसा कि कि यहाँ पर इकलौते ही प्लेयर हैं, लेकिन टीम ईडा के जो बाकी 2 खिलाड़ी हैं वो अभी भी इस मैच के अंदर मौजूद हैं। बट टीम S2G सर्कल आ रहा है, सर्कल शिफ्ट लेकर जाएगा, आपको मजीद अपने आप को यहाँ से आगे बढ़ाना है, लेकिन इनका साथ निभाने के लिए हम एक को बाहर करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं दूसरा भी एक नाम आ जाता है। तो S2G भी है, टीम ई अरीना भी है, और जब आप नंबर की बात कर रहे हैं दोनों के पास 4 खिलाड़ी हैं, तो आई थिंक दिस प्रोबेबली इज द लास्ट मैच जो कि हमारे सामने इस वक्त सिचुएशन बनी है।
वेल अगर तो हो रहा वाइटैलिटी, इनफैक्ट अगर उला एलिमिनेट हो जाती है देन दिस इज द लास्ट मैच, दिस इज द लास्ट मैच। इट्स आइदर एरेना और S2G, लेकिन जितने प्रेशर से S2G निकली है लास्ट मैच के बाद, S2G अगर चिकन ले जाती है तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम यही थी। आपके पास मौका था, एक फाइट जीत कर आप ट्रॉफी जीत सकते थे, आप वो फाइट हार जाते हो एंड देन अगले ही मैच में आप उस सब के बावजूद फिर से टॉप 5 में आ जाते हो। S2G they clearly have some nerves जो EWC चैंपियन के होने चाहिए। एंड एरेना अब उनसे फाइट लेना तो है। S2G वाइटैलिटी के ऊपर भी यहाँ पर यूटिलिटीज डंप करती हुई दिखाई देती है। 4 टीमें पीछे रह जाती हैं, वाइटैलिटी के आखिरी प्लेयर हैं, उसके बाद 3 टीमें, तीनों टीमों के चारों प्लेयर्स। इट्स डाउन टू एरेना, S2G एंड अल उला। क्या अल उला इस मैच का चिकन डिनर निकालने के बाद इस मैच को, इस टूर्नामेंट को आखिरी मैच पर भेजेगी, या यहीं से स्मैश पॉइंट्स के थ्रू विल हैव आवर चैंपियन? कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। सर्कल का शिफ्ट अल उला के पास जाता है, एरेना को भी आगे आना है, S2G को भी आगे जाना है, वाइटैलिटी को भी आगे जाना पड़ेगा। पोर्टल अब यहाँ पर क्योस बने